Please leave two front rows earmarked with the maroon ribbon, and we please start sitting just behind those two rows. Thank you very much. Somehow I missed you. Anyway, welcome, sir. सर चेक करो सर चेक कर लीजिए. Bulk supply is coming from NTPC. For Chandigarh. बंद कर देना. कैसा लिंक? नहीं हो पाएगा. थोड़ा से भी. चल देता जाएगी मेरे को. Once again, I would like to inform that 7th row has been earmarked especially for our media group. So they may please take their seats accordingly.
आपका भी ऑपरेशन कोई अगर आपके कोई आइडिया है Well, there's just an announcement. All the invited guests will please proceed to have a cup of tea just outside the hall. Tea is ready. Thank you. बात लेके जाना कैमरा दिखा के आप लोग पूरा कर सकते आप इन्वेस्टमेंट तब करोगे जब सामने मैचिंग टेक्नोलॉजी या तो हमें प्रोडक्ट की गारंटी होगी range will be 250 kg to 350 kg, depending on the moisture and depending on the tractor horse. Tractor horse weight ज़्यादा होगी तो ज़्यादा weight एक का फिर सर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स अगर हमने नॉर्मली जब आप एक नॉर्मल इतनी दो अप्रॉक्सीमेटली जब पकड़ के इन टर्म्स ऑफ टनेज जब पकड़ करते हैं क्योंकि एकरेज जो जब मेजरमेंट्स नहीं करते हैं पकड़ते रहो इतना जब तक टनेज आएगी 6 इन टर्म्स पर दो एकड़ आइए देखिए सर मैडम मतलब वेरियस प्लेसेस यमुना नगर चले जाओ एग्जैक्ट सारी प्लेसेस में सारे हरियाणा की सारी पे हिसार ये सारा कुछ ये सारे जो मस्टर्ड ही मिलती है कुछ तो मिलता नहीं मैं मस्टर्ड को देखा बनता बट एक्चुअली मैं देखना चाहूँगा कि मैं पराली तो देखना चाहती क्योंकि पराली ने मेरा लेकर मेरा सिद्धा काम है पराली में सिर्फ इतनी लैकिंग फैक्टर है जो आफ्टर बॉइलिंग आते हैं थोड़े से कम करके बॉयलर से बाल करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट पराली का कोई फैक्टर नहीं है यूज़ कर सकते सिलिकॉन करके हाँ सिलिकॉन करके थोड़ा रहता है वैसे कुछ यूज़ कर सकते पेमेंट हो जाएगी उसके लिए तो यही तो है बट इट ओनली सोर्स ऑफ वाइबल नहीं है कि मैं इसकी स्पेलिंग
आपका हो गया ओपन We are not a project for applying this biomass. It's a quick one to do whatever we have done for our technical experience. For that we have to consult the स्टडी करने भेजा गया है सबको नहीं होगा तो अपने we just do the study for the plant 13 में NTPC
से डाल करके क्या क्लाइंट का पूरा अदर इक्विपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता स्टडी प्लान में स्टडी कराना चाहता है आप एंट्री कर दीजिए मोबाइल नंबर लिख लेना कि वी आर इंटरेस्टेड ऐसा करना मतलब साइन बस लीजिए एलएनजी डीजल में जाओ डेट तो डाल लेकर मैंने मोबाइल नंबर आप मेल आईडी लीजिए और ये पानी उस पर आप मेल 15 दिन में लेकिन आया नहीं है लेकिन आया क्या है कि पहले क्या आपने राइस को काटा ये बनाने के 2 महीने अब भी बोलते हैं कि 2 महीने में राइस लगाओ जो 2 महीने का टाइम अब तो बोले थे क्या राइस के बाद में केवल उसके चक्कर अंदर देख रहे हैं अंदर ही मैं जलाऊंगा दवा
चली है और नई मिशन ठीक अंदर यार लाइट नहीं पैंदी भाजी कितने कितने भाजी अंदर मैं कैमरा ठीक है ठीक कोट पैंट का हाँ जी हाँ जी म्यूट है ना हाँ जी As our esteemed guests have started joining us in the उनको भी कवर अच्छा देगा ठीक है program hall, I'd like just to mention that we are live on पिंक वाला हाँ जी, two हाँ जी। YouTube channels. First, NTPC official YouTube channel and second, Summer Mission YouTube channel. So the entire event would be live streamed on those two social media platforms. My sincere request to all the guests who are having their cup of tea in the outside hall, may please hurry up to please join us because we are very shortly going to start the inaugural of today's event. स्टैंड लेके इधर ला बच्चे ड्राइवर ने उसको बोला मैं कोई पेमेंट कैसे देता है ये तो आपने मेरे साथ किया ना आपने क्लीनर नहीं बोला मैं कोई पेमेंट कैसे दे रहा हेलो हाँ जी सर बोलिए हाँ जी ठीक है मैं भिजवा देता हूँ पेपर तो ठीक है रिकॉर्डिंग मारी है ਇਹਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲੇ ਦੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਈ बॉक्स नहीं करता ਨਾ कहा तो ਆਦੇ नहीं यार मेरे फेस से लगे यार
है ना की नहीं करना मैंने क्यों नहीं लगे कंप्लेंट आ रही है अखबार मैसेज आ जाए वॉलंटियर्स सर वो ना किसी में से स्टॉल पे लेकर आ बादशाह का इशू है बादशाह का ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਊਟ ਕਰਤੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ As our guests have started assembling back, just to share that we have 2 front rows reserved for our senior delegates, as well as 7th row is reserved for media people. So I request all the esteemed guests to please take their seats and settle down accordingly. We are just about to start in a very short while, maybe a couple of minutes altogether. Once again, I'll share with all of you that we are live for this event on 2 of the social media platforms of NTPC and Summer Mission on their official YouTube channel. यार लाइट नहीं पैंदी पई यार लाइट ही नहीं पैंदी हाँ ठीक है सुविधा 1600 लाइट ही नहीं पै रही लाइटा चलानी लाइट ही नहीं पै रही यार थले ही देखा कोई आने लग गया साढ़े वाला भी कैमरा है ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਟਾਈਮ घर में 2 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
दो लोग रहना है। इंतजार की घड़ियां बस कुछ ही पलों में समाप्त होने वाली हैं और फिर हम आज के इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन सेशन स्टार्ट करेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स ओनली। नहीं रहा था नेचुरल चला के जाके 8 बजे तक 2 गाड़ी क्या हो नहीं तुम्हें पड़ेगा कैमरा तुम्हें करेंगे लोग तो कैमरा बनता है ना बड़ा अपना नहीं तो कर तो फोटो बाहर की हो गया बस Good morning, everyone. May I request all our esteemed guests to please take their seats so that we may formally enter into the inaugural program of today's event. We are just waiting for our chief guest to settle down, and then we'll be starting very shortly.
Well, ladies and gentlemen, the way we see the world shapes the way we treat it. If a mountain is a deity, not a pile of ore. If river is one of the veins of the land, not potential irrigation water. If other species are our biological kin, not resources, and if this planet is our mother, not an opportunity, then we will treat it with greater respect. Thus, is the challenge to look at the world from a different perspective. And this is the change of perspective that has made us realize the potential of biomass as an alternative, carbon neutral source of electricity and not to regard it just as a farm waste to be scrapped by reckless stubble burning. A very good morning to one and all present. Most respected Dr. M. Putti, Chairman, Commission for Air Quality Management, our Chief Guest of the day, our distinguished guest, Shri Ramesh Babu V, Director Operations, NTPC Limited, Shri Arvind Nautiyal, Member Secretary, Commission for Air Quality Management, Shri S. Narayanan, Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board, Shri Kunesh Dutt, Member Secretary, Punjab Pollution Control Board, key authorities from Ministries of Government of India and States, including Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Commission for Air Quality Management, statutory bodies of Pollution Control Board, business unit heads and officials from generating stations, financial institutions, manufacturers, entrepreneurs, representatives from industry associations, farmer organizations, and of course, our media people. Ladies and gentlemen, I, Manav Bandhu, take an immense pleasure and privilege to welcome you all to this workshop, which has been themed as Ex-Cycle Utilization of Agricultural Residue for Co-Firing in Thermal Power Plant, which is organized by SAMAR, National Mission on the Use of Biomass, in collaboration with NTPC Limited, India's largest integrated power major and a Maharatna company. Today, stubble burning is one of the major causes of poor air quality. If we go by the estimates, then every year during just 2 months of October and November, around 30 to 40 million tons of crop residue is burned, which otherwise has a potential of producing about 6,000 to 8,000 of megawatt power, generating cumulatively approximate 50,000 million units of electricity annually by co-firing biomass in coal-fired power plants. In that context, SAMAR mission is a meaningful and well-intended initiative of Government of India to create a win-win proposition by promoting reduction in stubble burning, reducing carbon footprint of electricity generation, and at the same time increasing the income of farmers. Thus, the theme of Pallet to Power to Prosperity precisely captures the essence of SAMAR mission. Mission keeps organizing awareness campaigns and capability building programs of different stakeholders in bioenergy value chain. Today's workshop has an explicit objective to promote and facilitate ex-site utilization of paddy straw in various applications with a focus on developing an ecosystem for aggregation, transportation, manufacturing, supply, and uses of biomass pallets, briquettes, and torrefied pallets for co-firing in the thermal power plant. It's such a great pleasure to have with us the galaxy of experts from biomass energy ecosystem. We have received an overwhelming response of more than 250 delegates for today's workshop. On behalf of SAMAR Mission and NTPC Limited, we acknowledge your presence with a sense of appreciation and gratitude and call for partnering towards clean air and sustainable energy. Before we get the ball rolling, I now invite our distinguished guest to join us on the dais. May I request our chief guest of the day, Dr. M. Putti sir, Chairman, Commission of Air Quality Management, to please join us on dais. I request Mission Director Shri Sudeep Nag sir to please escort our dignitaries on dais. Further, I invite Shri Ramesh Babu V, Director Operations, NTPC Limited, Shri Arvind Nautiyal sir, Member Secretary, Commission for Air Quality Management, Shri S. Narayanan sir, Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board,
and Shri Kundesh Garg, Member Secretary, Punjab Pollution Control Board, to please join us on the dais. Thank you so much, sir. Your gracious presence on dais has added the vibrance and gravity to the inaugural function of today's event. Now, living the age-old belief of our culture, that is Atithi Satkar, Parmo Dharma, and to express our gratitude for the gracious presence, we'll start today's inaugural program with the welcome of our delegates on the dais. Today, we are honored to have with us Dr. M.M. Kuti sir, Chairman, Commission of Air Quality Management, and our chief guest. I request Sri Sudeep Nath, Director Summer, to please welcome our chief guest by presenting a flower bouquet. So, ladies and gentlemen, please put your hand together to welcome our chief guest. I once again request Sudeep sir to please welcome Sri Ramesh Babuji, Director Operations, NTPC Limited. Once again request Sri Sudeep sir to welcome Sri Arvind Nautiyal sir, Member Secretary, Commission for Air Quality Management. Moving forward, I invite Sri S.P. Singh Burke sir, GM NTPC, to please welcome Sri S. Narayanan sir, Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board. Once again, I request Burke sir to please welcome Sri Kundesh Garg, Member Secretary, Punjab Pollution Control Board. Thank you so much, sir. Well, ladies and gentlemen, light symbolizes victory over darkness and dispels the cover of ignorance. It marks the beginning of any auspicious movement. So may I now request our dignitaries on dais to please do the honor of lighting the auspicious lamp, and request all the guests present to please join us in invoking divine blessings with the firm faith that today's program may meet its intended objectives. I'll request Sudeep Nath sir and Sri S.P. Singh Burke sir to please facilitate for lighting of your auspicious lamp. Sudeep sir and Burke sir may also please do the honor for lighting the lamp.
Thank you so much, sir, for doing this honor for lighting the auspicious lamp. You are able to please take your seats on the dais. ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮੂਰੇ ਸਟੈਂਡ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਲਾਈਟ ਵੀ Now, with the lighting of the auspicious lamp and invoking the blessings of divine, now we are all set to formally start this workshop. For this, may I now invite Mr. Sudeep Nath, Mission Director of Summer and Executive Director of NTPC Limited, to please put up his welcome note. Shri Sudeep Nath. Good morning to all. Most esteemed guests on the dais, respected Sri M.M. Kurti, Chairman CAQM, Sri Ramesh Babu, Director Operation NTPC, Sri Arvind Natyal, Member Secretary CAQM, Mr. S. Narayanan, Member Secretary Haryana State Pollution Control Board, Sri Purnesh Garg, Member Secretary Punjab Pollution Control Board, all the dignitaries, senior officials and participants from MOEFCC, Government of India, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India, MNRE, Department of Power Punjab, Department of Agriculture Punjab, Department of Agriculture Haryana, Department of Science Technology Punjab, Department of Environment and Climate Change Punjab, Department of Environment and Climate Change Haryana, Department of Energy Haryana, JNCOs, all JNCOs especially from the NCR region, entrepreneurs, industry associations, agricultural universities, KVKs, FPOs, CBBOs, CAQM, NTPC Limited, members from Summer Mission, ladies and gentlemen. I would like to express my sincere appreciation to all of you for your gracious presence here and making this program a lively event. I also welcome each one of you to be a part of India's story of green energy transition, where Summer Mission and NTPC are going to work together with the direction of CAQM also for this NCR region, hand in hand with you all. And this program will provide us a platform to share and resolve our ideas and concerns. Government of India aims to attain the vision of promoting energy transition and climate change during the Amrit Kal, finally leading to sustainable energy solutions for Atmanirbhar Bharat. India's fuel energy security can be well supported by biomass as it provides opportunities for concepts such as waste to wealth, waste to energy, and ultimately leading to benefit to all. The biomass-based electricity energy capacity is one of the cleanest source of electricity production because it not only reduces the open field burning of agro residue by farmers, therefore curbing pollution, but also it replaces the coal in the conventional thermal energy plants to reduce the carbon footprint from our existing power plants. As you are all aware, that pollution is a major problem in northern India, and this problem is increased to many folds during the or after the harvesting period due to burning of agro residue, especially parali. Ministry of Power, Government of India has taken serious steps to reduce this pollution. National Mission for Use of Biomass in Thermal Power Plants, where the name has been reclassified as Summer Mission, has been formed in the month of July 2021, so it's just 1 year. Revised biomass policy has been issued and mandated for the use of 5% biomass co-firing in all thermal power plants. This 5% blending is mandated to be increased to 7% after 1 year from the date of issue of the revised policy. Issue of model contract for long-term biomass procurement between GENCOs and pellet vendors have been done. SOPs for co-firing of biomass in power plants have been issued. And we are conducting various awareness programs for GENCOs, capacity building program for pellet manufacturers, and awareness program for farmers to sensitize them all towards the ill effects of stubble burning and how to convert it to a source of income
are some of the key steps which are being taken. As has already been told, cumulatively approximately 80,000 metric ton of biomass fuel have been fired in the thermal power plants in co-firing, and around 24 million metric ton of biomass are in different stages of procurement. NTPC being the pioneer in this field and also having a major share of biomass co-firing today, but today the other GENCOs or IPPs are coming up, and I expect that all of them will come up very fast. The mission is functioning like a bridge between the farmers, suppliers and manufacturers for interaction and sharing of knowledge to make the best use of biomass and to keep functioning supply chains to carry forward the energy security as well as livelihood of the farmers. 18 such awareness programs have already been conducted. This particular workshop by mission in collaboration with NTPC with the support of CAQ1 is an important step in that direction. The workshop is a great opportunity for the millet manufacturers, GENCOs as well as farmers, FPOs and all other representatives to understand the requirement of biofuel in the present scenario of environment. The agenda of today's workshop have been framed such that it takes care of the requirement for all the stakeholders of this biomass industry. We can take this opportunity to reaffirm, to work together to carry forward the use of biomass in thermal power plants and to build a sustainable agriculture value chains that will build the energy security and clean energy transitions. We are honored to host this event. We hope that your stay during the event today will be a pleasant one and this will be an interactive and successful event. Thank you one and all. Thank you, Sudeep sir, for emphasizing on Government of India vision on energy transition, detailing out the objectives, efforts of Samad mission and situation on ground, and detailing out the objectives of this one-day workshop. Thank you so much for this. Now, ladies and gentlemen, today we have on dais Shri Ramesh Babu V, Director Operations, NTPC. NTPC being the co-organizer of this workshop and one of the key players in mission has emerged as a leader in biomass user, having co-fired approximately 58,000 metric ton of biomass while tendering a total of around 11 million metric ton over short-term and long-term basis has all been lined up. Giving you some glimpses about the rich and varied experience of Director Operation NTPC Limited. Sir is a mechanical engineering graduate from NIT Srinagar and Masters in Thermal Engineering from IT Delhi. Sir joined NTPC as 12th batch executive trainee in the year 1987. He has over 35 years of vast experience with outstanding contribution in management of large size plant in the area of power plant operation, maintenance, renovation and modernization of old units and in the area of efficiency and system improvement of thermal plants. Now I take this opportunity to invite Shri Ramesh Babu V sir to please come on the dais and share his perspective by putting up the keynote address. Good morning to all of you. I hope I am audible. Dr. M. Kuti, Chairman, Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas, and the guiding force behind this workshop, not only behind this workshop, and the guiding force behind the whole exercise of improving the access to utilization of paddy, agricultural residue within this NCR region. Shri Arvind Narjalji, Member Secretary, Commission on Air Quality Management. Shri S. Narayanji, Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board. Shri Kunesh Gargi, Member Secretary, Punjab Pollution Control Board. And Shri Sudeep Nag, Mission Director, National Biomass Mission, which is renamed as Summer. And all the officials from Government of India,
Government of Haryana, Government of Punjab, officials from various GENCOs who have come to attend this workshop, and most important, all the delegates representing pellet manufacturers, aggregators, entrepreneurs who have come to pick up this something in this workshop and actually start these pellet manufacturing activities, and a few representatives. A warm welcome to all of you. By the size of the attendance, I see that it has been our endeavor, I think, will be a fruitful endeavor, and we hope this will be a fruitful discussion that we have throughout the day. As all of you are aware, the renewable energy sector is witnessing an exponential growth because of the RE penetration, RE integration into the grid. So during this RE integration, some new ideas, some research and some learnings, and to see how this map the trajectory of future growth in the renewable sector. This is the need of the hour. India's transition जो हम लोग बदल रहे हैं जो conventional coal energy to renewable energy, this transition is guided by the approach of access, efficiency, evaluation, and our unwavering commitment to the fight for the menace of this climate change. In this changing scenario, Indian power sector is expected to deliver beyond energy security and also to deliver sustainable energy. Countries' climate commitments to the world is a reflection of this changing expectation. So this is where today's topic of discussion becomes very relevant, and it's also important. Utilizing the surplus residue biomass will be an important lever in ensuring sustainability in the energy sector, and also it's a clean energy. That's what we are looking for. Our agro residue is an untapped potential, it's an untapped resource, and it's available in huge quantity. The estimates vary, but around 250 million metric tons is annual availability of this untapped resource. Just to put things in perspective, as a company, NTPC burns around 222 million tons of coal annually. So ideally, if this can be made available to us, it's a good alternative to us. Now, this is a precious resource that is being wasted and adds to air pollution, as all of you are aware, when burned in the fields. So harnessing this resource would not only strengthen the energy security, it also improves the sustainability, but it also creates additional income for the farmers and the persons involved in the whole value chain of this pellet manufacturing. In the recent past, government has provided various policy frameworks to promote the use of biomass firing. The revised guidelines issued by the Government of India mandate around 5%, progressively increasing to up to 10% for biomass co-firing into thermal power plants. Again, just to put perspective on this discussion, as a company, NTPC burns around 7 lakh tons of coal per day. So even if I get 5%, that's around 35,000 tons of biomass is required only for NTPC in order to meet the Government of India obligations that has been put on us. So this is the purpose of telling this is the scale of the requirement only for NTPC. If you think of the whole country, it will be at least 3 times because we generate 1/3 of the thermal generation. So there is a lot of market for this, potential for this biomass residue. In line with the focus of the Government of India,
NTPC has taken a pioneering stride and quantum leap in recent years in green energy transition. Biomass firing in our thermal plants has been one of such initiatives. Till now, we have been firing biomass in 14 plants of our NTPC. We have around 30 plants situated across the country. And let me tell you, we have been firing biomass not only in our NCR region, that is Jajjar, Dadri. We have been firing biomass in down south in Kudvi, in west Moda, in Andhra Pradesh Simhadri plant. So in all these plants, we have been firing biomass wherever it was made available to us. In fact, the only bottleneck that we are facing in actually firing biomass is the inadequate supply. As my colleague has told, although we have a lot of orders for biomass, we are hardly getting around 3,000 tons per month. That is less than 100 tons we are receiving per day. So my friends, there is a lot of potential if people can put up the pellet manufacturing units. Your product is assured to be picked up by the thermal plants. There is no dearth of market for this commodity. While the ultimate objective should be focusing on tapping the full potential of this resource, be it any industry, co-firing coal-fired boilers does give some advantages. It's a little technical. The foremost being we can use a lot of this biomass in our plants. If the full quantum of available surplus agro residue is to be used, thermal power sector has to play an important role. Co-firing in coal-fired boilers offers certain advantages compared to the purely biomass co-firing. Co-firing has a higher efficiency and more reliability because we have another fuel available with you. It has a better fuel security because you are not only dependent on one fuel. It has a better pollution control measures, SPM will be less. The increase use of domestic renewable energy resources and the reduction of emissions, that's very important, we will reducing the CO2 footprint. No additional capital expenditure is required for any modification, and practically no retrofits are required in the existing boilers except as minor changes, only software changes. So straight we can actually fire around 10% in the existing thermal boilers. In fact, NTPC started this exercise way back in 2016, doing all the experiments. दादरी में काफी काम कराया हम लोग. ये पूरा देखने के बाद हमको पूरा यकीन हो गया, this can be done without any endangering the safety of the equipment and the manpower. So 2019 से हम लोग कमर्शियल में उसको फायर करना शुरू कर दिया दादरी में. And right now we have already placed orders for 1.1 million metric tons. Another 9.2 million metric ton will be placing order by 18th. So this is the quantum of requirement that we will be needing. इसमें एक चीज है जो हम लोग 9.2 मिलियन मेट्रिक टन जो ऑर्डर देने वाला है 18th को, वो 7 साल का टाइम फ्रेम में रखा. 7 साल टाइम फ्रेम इसलिए रखा कि लोगों को ऑर्डर मिलने के बाद they can actually set up the unit and 7 साल तक assured सप्लाई आपको दे रहे हैं. मेरे ख्याल से इससे अच्छा बिजनेस मॉडल कुछ होगा where we are actually assuring you to take your produce for the next 7 years. उसमें भी प्राइस एक्सक्लेशन का मैकेनिज्म है. अगर इनपुट प्राइस बढ़ेगा there is a mechanism for actually compensating this. So as जो मैं पहले बताया, जो vendors का availability and manufacturing capacity availability is the single largest obstacle that we are facing right now. And मैं समझता हूँ जो आज का ये वर्कशॉप में ये सब चीज हम लोग डिलीवरेट करेंगे. क्या दिक्कतें आ रहा है, ये इसको स्केल अप करने के लिए
के हेल्प चाहिए होगा, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शीट्स भी है. We have called bankers also, Bank of Baroda and SBI are also there. वो भी अपना हिसाब से बताएगा कि क्या क्या इंसेंटिव्स वो दे रहा है. गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आर ऑल्सो देयर. सो ये सब लोग मिलकर हम इसको आगे कैसे लेके जाना है, सो दैट वी हैव सफिशिएंट pellets available within the country for the thermal plants to start co-firing. And इससे ज़्यादा अच्छा होगा that we will be actually helping the farmers in earning some money on out of this residue, and also we will be helping the environment by completely eliminating stubble burning. So in this direction, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन बनाया, उसका नाम दिया गया समर मिशन. ये 1 साल हुआ. समर मिशन भी इसमें बहुत सारा एक्टिविटीज किया, वो जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा था. एंड आज का फोकस वुड बी हाउ डू यू स्केल अप दिस एक्टिविटीज सो दैट enough produce is available to all the thermal plants. This workshop by National Biomass Mission in association with NTPC is an effort to explain the process by bringing all the stakeholders, जैसे मैंने बताया, on a common platform for exchange of ideas and to have a better understanding of the steps required to achieve this objective of increasing the manufacturing base, especially in NCR region. And I extend my best wishes for engaging and fruitful discussion leading to a workable recommendations of this workshop, that is to improve the manufacturing base in the NCR region. Dhanyawad. Thank you. Thank you so much, sir, for very rightly putting up the future perspective of integration of more renewables in the landscape of Indian power sector. You have detailed out the NTPC efforts towards transitioning to the greener power by taking initiative for co-firing in different fleets of stations of NTPC which are fed by coal. Another important point which you have touched upon was the challenge as of now what as a power station NTPC is facing for resourcing the required quantum of the pallets, and probably as this is one of the agenda for today's workshop, that will be getting a lot of workable solutions. So thank you so much, sir, for your keynote address. Today we are privileged to have with us Shri Kunesh Garg, sir, who joined Punjab Pollution Control Board in the year 1989. After his 25 years of dedicated services, he was elevated to Chief Environmental Engineer in the year 2014, and presently he is working as Member Secretary Punjab Pollution Control Board. May I request Shri Kunesh Garg to please put up his keynote address. Shri Kunesh Garg, sir. Good morning, everyone. Respected Dr. M. Koti, Chairman CAQM, Mr. Arvind Nautiyal, Member Secretary CAQM, Mr. Ramesh Babu, Director of Operations NTPC, Narayan Saab, my colleague from Haryana Pollution Control Board, my friend from other departments, Ministry of Environment and Forest, Power, Agriculture, and all the people who have joined here in a mission to change the energy scenario of India, to make it a more cleaner and renewable. Let us take it to a renewable path. If you talk about the perspective of Punjab Pollution Control Board in this regard, we just, when I was SC, we just came to know that there are burning incidents, and lot of hue and cry was there in the public that paddy straw is being burned,
wheat straw was being burned very lesser, but the burning of these paddy straw fields, it became came into focus for the last 10 to 15 years. I have one incident also that one time the Home Secretary of Government of India was flying over Punjab, and at that point of time the paddy straw fields are being burned, and that was a terrorism time. And he saw it from the top, and he said that there is something going on in Punjab, but from above he saw those fire incidents at that point of time. So, but that was very nominal, but the attitude of the farmer or their practices being followed by the farmers have changed a lot. Earlier they used to do it by manually, the harvesting was manual. They used to cut the crop just from the root level and then used to mix it up with the earth and soil, but afterwards with the mechanization, the more mechanization, and we are using combines. We are only taking the barley out over it and converted it into our paddy, and the rest of the straw is being left, and that is being burned because it is very easy to get away with this paddy straw. But over the period of time, it has also been seen that with the quest to save water, we are also pushing the sowing period to save water, and there is a very limited window left with the farmers where they are unable to take care of their paddy straw and they prefer to burn it. Over a period of time, you have seen that whenever this September comes, the life becomes very difficult for all these pollution control board people, and number of queries from all society, from different government organizations, international organizations that come over that there are a number of fire incidents, and these are reported in the press. And of course, with the CAQM giving a proper SOPs, now those things are being managed, and the fire incidents, there is a SOP from which period to which period these fire incidents are to be reported and how it is to be done. But the number of, I must tell you that the number of fire incidents never tell you the exact picture. It is just a, you can say, story in the newspaper. But the actual is, what is the area burned? And over the period of time, whatever awareness has been made by different agencies, whether it is agriculture department or the crop residue management machinery being provided, there is definite change in the area being burned in Punjab. It is decreasing every year, which is being done by a satellite survey. Satellite data is there, that is decreasing. The total, if you see at the, because this workshop is regarding biomass, but I am concentrating on the paddy straw. Paddy straw availability is 1.8 crore tons every year, and we are burning it, and the energy which we can get back from the system, that is just going into the environment without any use. And we need to have some kind of synergy, and everyone is working in his perspective. For example, there are only two ways, in situ or ex situ. In situ, agriculture department has provided the crop residue machinery, but there is some limitation, and they are trying to make the utilization more so that this paddy straw can be incorporated into the soil, but still there is a ex situ option, and I am of personal view that in case in situ and ex situ are not balanced, then it will not be a success story. We will have to go for a balanced approach for in situ and ex situ. Because a farmer, if he goes for in situ management for 2 years,
the third year he will have to go for a ex-situ option. So the availability of biomass is immense and the opportunities are immense. Now today we are talking about the thermal power plants, but there are so many other ex-situ options which can be explored. So we as Punjab Pollution Control Board are working with the thermal power plants is one thing. They are asking for you to 5% to 10% usage of replacement of coal with this biomass, briquettes and pellets. But I think there may be many more options coming. In Punjab, there are 6 to 7 industries which are now earlier using 3.5 lakh tons of paddy straw as fuel in their boilers. Now I expect this 2023 post-harvesting, it will be, the collection shall be at least 1 million tons. You will find more and more industry is becoming confident about the boilers which they are installing, and they are collecting biomass. So biomass usage for energy, for gas. Of course, compressed biogas is a late starter, but once it starts, then the requirement will be 1.5 million tons. So these all options will contribute to the prosperity of the farmers. I think around 5,000 crore of rupees will be available to the farmers of Punjab, which they burn every year from the biomass only. And the entrepreneurs or the aggregators, whosoever will be coming into this field, they will be part of that economic prosperity. So I urge you all to take this initiative further so that we may be able to provide a clean energy, renewable energy, and usage of this paddy straw. Not only paddy straw, there are other biomasses also. When I talk about paddy straw, my perspective is with respect to the stubble burning. But there are other biomass also. So when we will mix it up, we will make it a happening thing, then this biomass is a gold energy which we will be harnessing from the nature, and we will be also reducing our requirement from the imports. Or even in Punjab, for example, if the thermal power plant is there, they are transporting coal from West Bengal or Assam. So we will be improving our availability of energy, and energy security will improve. And I hope the discussion which will be coming up before you in this session or the afternoon session, that will help you to make up your mind to understand that this is a new field and new era is emerging, and we should work together to make this happen. Thank you very much. Thank you so much, sir. You have really shared such an insightful point in your addresses. You have very rightly mentioned about the perspective, how practices of gradual decrease in the area of burning which is taking place every year in that state. And you have really very added the new dimension to the entire efforts of utilization of biomass by adding new areas of just going beyond the paddy straw, but some different outlets of bioenergy in the form of like biogas and etc. And it was so interesting to understand that you have turned the coin of gold energy to the biomass. That itself put up a great perspective, an opportunity to move forward with this concept of transition of green energy. Thank you so much, sir. Now, before I invite our next senior delegate on dais for giving the address,
At the cost of repetition, I'll once again mention that this event is live and on two social media platforms of NTPC YouTube channel as well as Summer Mission YouTube channel. Ladies and gentlemen, we have privilege for having Shri S. Narayanan Sir, Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board. He is an Indian Forest Officer belonging to 1997 batch of Haryana. Besides his field assignments, he has served as the head of monitoring wing of the European Union's Community Forestry Program implemented in the state of Haryana. He has also served in the Ministry of MSME in Union Government. He has been working as Member Secretary of the Board in state of Haryana since 2016. So with this, I will request and invite Shri S. Narayanan Sir to please come on the dais and give his keynote address, please. Thank you. Respected Chairman of CAQM, Dr. Imam Kutisa, Sri Ramesh Babu, Director Operations NTPC, Sri Arvind Nautiyal Sahab, Joint Secretary CAQM, Sri Kunesh Garji, Member Secretary Punjab Pollution Control Board, Sri Sudeep Ji, MD National Biomass Mission, and experts as well as participants from various stakeholder departments, states and other fields. Good morning to you all. I am very thankful to the National Biomass Mission and NTPC for having organized such an important workshop in a very crucial time where we are actually fighting to reduce the crop residue burning in the northern states, which is contributing reasonably to the air pollution in Delhi and NCR. So it's a very, we are actually rather trying to address the issues in all possible ways, in situ, ex situ, as Mr. Kunesh was also telling, whatever way possible we are trying to rather actually do it. Government is, union government as well as state governments are paying a lot of money for incentivizing the things and also to ensure that no crop is burnt and it is getting properly utilized in the effective economical and environmental friendly manner. So in that way it becomes more crucial, and with the new guidelines and directions of CAQM also, at least 5% of the fuel should be used from the biomass side as far as the thermal power plants are concerned, and it has to be rather increased to 10%. So we are hopeful at least 7% should be rather reached within that particular time, seeing many of the constraints and initial hiccups. We hope that will be done. And with this particular 5 to 10% if implemented uniformly throughout the country, we are hopeful of actually reducing around 38 million tons of carbon dioxide as per an estimation. So we think that that much of emission will be cut down over the period. And then this will contribute significantly to our commitment to COP26 commitments. So whatever is planned, our plan to rather reduce the fossil fuel, use the renewable energy, and also to rather actually replace it with the bio-renewable resources. That will also be rather significantly addressed. So I hope that this will rather actually contribute in a bigger way in that way also. Because with the 90 to 180 million tons are expected, it is expected to be rather used, reduced in the year 2030 with this pace, wherein 50 to 100 million tons of coal will also be substituted with this biomass by the year 2020. So this target lines can be rather, at least to a greater extent, we can try to achieve if everything goes in the positive manner and the way we are expecting it to go. Some other National Biomass Mission has also estimated that around 95,000 tons per day of biomass pellets is the requirement if you are actually having a 5 to 7% of co-firing of this
biomass in all the thermal plants in the country. But this one is not being rather actually produced. As we all know, not even 10% is produced of this one as on date. Maybe due to many of the infrastructure and other logistical issues. They are still rather lagging behind considerably. So we have to rather work on it in a very efficient way to address the gap. Now in NCR, due to the directions of the CAQM, we have got a very positive impact. I learned from the industries that even from farmers and agriculture department can also rather supplement my claim. The biomass, the rate of the biomass, the price of the biomass has increased more than double. Now that many of the textile industries, many of the food industries, even the metal industries in NCR, particularly in case of Hyderabad, Gurgaon, Panipat, Sonipat, all the people, they are rather keen in rather getting this biomass pellets. So the one side the demand has actually increased for this particular biomass. So that is definitely going to reduce its indiscriminate burning in the field level. That is what we are expecting with this additional directions. We will be rather controlling the crop residue burning in the forthcoming paddy harvest season. Even in this season, we have seen a considerable reduction in the wheat harvest, like wheat vegetable burning, and we hope that this will rather gain some momentum in the forthcoming paddy harvesting season also. Now, I understand that at least 36 gigawatt production is actually from the thermal power plant is being co-fired in India. Jhajjar has also started now, but again its utilization is still rather actually underway. It has to go a long way to achieve the target within the time frame, whatever has been fixed by the CAQM also. So in Haryana, as far as Haryana is concerned, we have around 13 lakh hectares of area with 14 lakh hectares area, which is expected to be rather under the paddy cultivation in the forthcoming season of 2022, of which we have roughly around 8 lakh hectare will be under the basmati, which is having its own demand even previously also, and around 6 lakh hectares will be under non-basmati. Thereby we are producing cumulatively around 70 million tons of this, 70 lakh tons of this paddy straw. In this season we are expecting. As far as Haryana is concerned, we are taking it quite positively. We have already formulated a bioenergy policy incentivizing almost all the bioenergy projects in the country. We are giving an exemption in all possible ways actually. Even CNU, many of the projects are exempted, and in case of fees also it is being exempted. And we have a special team to rather scrutinize these things in a positive way, so that it will rather give a push to these industries. They are encouraged. Even the board has exempted them from the consent fees, authorization fees and all. So in that way we are actually giving a thrust to these industries, so that they can rather actually come and set up, and that can rather help us in facing the issue of our crop residue burning. So, Renewable Energy Department in Haryana, they have also been rather actually working hard. We are having a target of around 15 lakh metric ton to be rather actually utilized of crop residue to be utilized in this forthcoming years. There, it includes, of course, those projects which are already existing. Those are under the pipeline, as well as they are which are proposed to be done. So all these things actually, half of it is being already rather targeted for this year. Maybe around 7.5 to 8 tons we are planning to rather achieve it in this year itself. So that is one thing we are actually thinking over. Agriculture department has formulated a separate policy for ex-situ management of our paddy straw. So in this way, we are hopeful that we will be coming out with a very successful model, probably very successful implementation of our ex-situ policy. We will be coming out with a significant result in the forthcoming paddy season as well as in the coming years also.
with these instructions and directions of CAQM, we will be having multiple benefits for the stakeholders in all the sectors, particularly for the farmers, and it will be a win-win situation for all of us. So rightly pointed out by Mr. Kuneshgar, we are hopeful that in the coming years we will be rather actually tackling this problem also environmentally in a very friendly way. And I'm hopeful that this workshop will come out with strategies for facing those problems or whatever issues coming out of this particular field in implementing the policies as well as directions of the CAQM and Government of India. And I wish this workshop a big success. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing your perspective on biomass utilization and state policy on bioenergy. Thank you very much. Now we have the privilege of having with us Shri Arvind Nautiyal, sir, Joint Secretary to Government of India and Member Secretary Commission of Air Quality Management. Sir Arvind Nautiyal is an officer of Indian Railway Services of Mechanical Engineer. He is a qualified mechanical engineer by training through the prestigious special class Railway Apprentice SCRI scheme, and possesses vast experience in railway rolling stock design, production, maintenance, and operations in one of the most complex and biggest railway networks across the world. Prior to his appointment as a member in the Commission, he was posted as Joint Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, where he was handling a multitude of charges like Environment Impact Assessment of Infrastructure Sector, Coastal Regulation Zone Policy and Project Appraisals, Himalayan Ecology and Sustainable Development, Environmental Education, Project Director of Society of Integrated Coastal Management and the Control of Air Pollution Division, etc. He has also undergone a certificate course in Public Administration from Syracuse University, USA. With this, may I now invite Shri Arvind Nautiyal, sir, on the dais to share his perspective and to give his address to the audience, please. A very good morning to all of you. Honorable Chairperson, CAQM, Dr. M. Kuti, Director of Operations, Ramesh Babuji, my colleagues on the dais, Krishna Rananji, Kavdesh Garji, Sudeep Nathji, distinguished officers from the state governments, delegates, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank profusely NTPC for taking this initiative and Dr. Kuti for guiding this and driving this initiative for getting a common platform where all the stakeholders involved, right from the farmers and the other agrarian institutions to the entrepreneurs, to the aggregators, to the facilitators, to the industrialists, to the power plants, and rather I take this opportunity and take this liberty to extend the scope and the title of the workshop to not only restrict to power plants, thermal power plants, but also to major sectors, those which can utilize the biomass, and in particular context of today's workshop, the paddy straw for various applications, energy or non-energy applications. So, I mean, this is a kind of a new beginning. We have been working in this direction. The state governments concerned, the institutions and organizations concerned have been working in this direction. But to give this impetus was the need of the hour. And to have a common platform here where we can have deliberations not only through the structured presentations but informal discussions and deliberations amongst ourselves, among the various groups. Because at the end of the day, this is only a collective endeavor that would lead to the desired goals. We may talk about various usages, various applications that would come from it, but it is the collective endeavor and working in harmony along with environmental concerns. That is the driving force which would lead
to a fruitful results out of this workshop. So I have a perspective on the ex situ utilization of paddy straw, which I will be presenting in detail in the next session. So, but nevertheless, this is with my opening remarks. This is again to thank all of you to be here for such a fruitful discussion here, and I wish success to the event. Thank you so much. Thank you so much, sir, for sharing your perspective, and surely we will look forward to listening details about your perspective on the topic of the day. Now we have an honor to have with us Dr. N.M. Kurti, Chairman Commission of Air Quality Management, as chief guest of today's event. Dr. N.M. Kurti is presently the Chairperson of Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas. He is a member of Indian Administrative Services with about 35 years of he served as Secretary to the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas. He has held crucial positions in the central government, state government, and union territory administrations, including in the Ministries of Environment, Forest and Climate Change, Urban Development, Finance and Petroleum and Natural Gas, Government of India. He has served as Chief Secretary to the Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. N. Kurti did his MSc in Agriculture from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, MA in Rural Social Development from University of Reading, United Kingdom, PhD in Agriculture from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. So I take this privilege to now invite our chief guest, Dr. N. Kurti sir, on the podium, and we all are eager to listen to you, sir, to understand your perspective, your guidance, to take this workshop forward. Please give your inaugural address for the event. My friends at the dais, Shri Ramesh Babu, Director Operations, National Thermal Power Corporation, Shri Arvind Notia, Member Secretary in the Commission of Air Quality Management, Shri Narayanan, Member Secretary, Haryana Pollution Control Board, and Karnesh Garg, Member Secretary, Punjab Pollution Control Board, Mission Director, National Biomass Mission, Mr. Sugindar, various officers representing the central government and state government, delegates, entrepreneurs, other stakeholders, ladies and gentlemen. Most of the speakers who have spoken before me have already projected the issues and what can be done to move forward. At the outset, I must say that this one-day workshop that is being organized by the National Biomass Mission and NTPC is a timely intervention and a timely response to address a burning issue that has caught the attention of not only central government and state government, public at large in the entire northern belt of this country, entire Indian locality place. Let me give you a comprehensive background of what is the issue. Paddy continues to dominate crop mix in this part of the region. And this leads to enormous paddy straw generation. Between Punjab and Haryana, about approximately 40 lakh hectares of paddy is cultivated, and out of that 40 lakh hectares, almost 30 lakh hectares is non-basmati paddy. There is a need to differentiate between basmati paddy and non-basmati paddy, because basmati paddy straw is hardly burned and non-basmati paddy straw is greatly burned. Out of these 40 lakh hectares of paddy that is being grown in this part of the country produces 25 million tons of straw. You see the quantum. So what is the problem? The problem is
handling 25 million tons of straw every season, paddy straw. The problem is gigantic, the problem is huge. Out of these 25 million tons, maybe around this 5-6 million tons straw is of basmati straw, so that we can leave aside. And if you minus 5 to 6 tons from 25 million tons, we are grappling with 19 million tons of straw that is to be handled every season in Punjab, Haryana, NCR district of Uttar Pradesh, very limited extent Delhi and Rajasthan. These 90 million tons have to be scientifically managed. One, to ensure sustainability of agriculture. Two, to continue to see that our soil health does not deteriorate further. In the process, enhance farmers' income considerably and also reduce air pollution caused by burning of stubble. Such a large-scale paddy straw generation has led to large-scale crop residue burning, which is episodic and happens mainly in October, November, winter months, and contributes adversely to a great extent to adverse air quality in this region. Large-scale burning of paddy in October, November, primarily in Punjab and Haryana, contributes significantly to any attempt to control air pollution measures in this region, National Capital Region and adjoining areas. Why this is happening? Every one of you know, but to summarize in one or two sentences, mechanization of agriculture, especially harvesting mechanization, has led to smaller stubble on the ground, which is tedious and uneconomical to remove. Delayed sowing of rice in Punjab and Haryana, and therefore a very limited narrow window available for harvesting season between harvesting of rice and sowing of wheat are the main reasons why we are led to this stage. Some of my speakers earlier also told that 15 years before this might not have been such a big issue, but in the last 15 years we have made major progress in agricultural mechanization, and this is one of the reasons for one of the reasons for increased stubble burning. Coupled with this, the climatic and geographic conditions of this part of the country is many parts falls in the airshed, leads to winter inversion, low temperature, wind patterns. All this put together aggravate the scenario in the northern India, the Indo-Gangetic plains, and these are some of the most populated regions of Delhi, NCR, etc. And a large number of people are exposed to this pollution, air pollution, over if not for a long period of time, even for a short period of time, especially people who are children, old age, sick people, people with respiratory problems, it can lead to serious health hazards. We have been now monitoring, we are an young baby, the Air Quality Commission is very recently created. So ever after that, we are monitoring fire counts between 15th of September to end of November on a daily basis using satellite. We have tied up with ISRO, Indian Space Research Organization. We have almost a live kind of data. The last harvesting season, the actual number of fire that is captured by the satellite is 78,550. This is only in the states of Punjab, Haryana, NCR district of UP, Rajasthan, and little bit in Delhi. Each one of you know, well aware that this huge amount of burning of stubble remains a major cause of concern, not only to the government, to each one of us. Since the direct fallout is we inhale toxic and polluted air.
in the process create problem for our health. This problem has been taken note by most institutions in this country. The Honorable Supreme Court has passed a series of orders on this. Honorable NGT has passed a series of orders on this. Programs have been launched by the central government. Schemes have been launched by central government and state government. These schemes are evolved over a period of time. And the major strategies to control the stubble burning are also well known. One is diversify crop, shift away from paddy. Second one is shift to other varieties of paddy like basmati. In situ solutions, which the earlier speakers told, cut it and mix it with soil, and plow back, compost, and lastly, ex situ management. The Commission, immediately after Constitution, has identified this as a major challenge and is an area which needs focused attention. We therefore made a detailed framework how to handle this issue, touching upon all complexities involved. And this framework was sent to all the NCR state governments, and the NCR state governments have also prepared detailed action plan last year, that is 2021. 2021, we implemented this action plan for the first term. We learned many weaknesses, and based on the weaknesses, we have prepared first action plan, Punjab, Haryana, UP, part of NCR part for the current year. So, this action plan extensively deals with ex situ management also. अभी ऐसा स्थिति है, सब लोगों को पता है कैसा क्या करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये कैसा करना है, इसका क्या इंस्टीट्यूशन बनाना है, क्या मैकेनिज्म बनाना है, उसमें क्लैरिटी का थोड़ा कमती है। हम तो 3 महीना 4 महीने पहले हम गुरुग्राम में एक बड़ा लंबा कॉन्फ्रेंस करवाया था। वो कॉन्फ्रेंस में एक इश्यू स्टबल बर्निंग में था। आज का इश्यू स्टबल बर्निंग का फर्दर स्पेसिफिक है। एक्सिट यूटिलाइजेशन में बायोमास थर्मल पावर प्लांट में कैसा को फायरिंग कर सकता है, ये डायलॉग से काफी समस्या निकलेगा। एंड दीस आर द अटेम्प्ट्स इन दिस रिगार्ड। तो एक्सिटिव मैनेजमेंट क्या होता है? एक्सिटिव मैनेजमेंट इन सिटू मैनेजमेंट से डिफरेंट है। इन सिटू मैनेजमेंट वही फील्ड में उसको हैंडल करो, उसको कट करके मिस करके बायो डिकम्पोजर लगा के फील्ड में ही हैंडल करे। एक्सिटिव मतलब फील्ड से निकाल के इसको कोई फैक्ट्री में ले जाए, इंडस्ट्रीज में ले जाए, कोई जगह में लेके जाए, इसको ऐसा यूज कर सकता है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है, ये पैडी स्ट्रॉ सब लोग सोता है एक वेस्ट है। हम चाहता है इसको वेस्ट का तरफ से मत देखिए, इसको वेल्थ का तरफ से देखिए। एंड अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐसा कैपेबिलिटी है टू कन्वर्ट इनटू वेल्थ। तो इसको वेस्ट से वेल्थ कन्वर्ट करने का जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस है, साइंटिफिक सॉल्यूशंस है, वो सॉल्यूशन को फील्ड में अप्लाई करना है। दिस इज द चैलेंज वी हैव। ये बायोमास कहाँ यूज कर सकता है? पावर जनरेशन प्लांट में यूज हो सकता है। पंजाब में भी अभी स्ट्रॉ बेस्ड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, लेकिन नंबर कम है तो हैं। बायोफ्यूल है, बायो सीएनजी है, बायो एथेनॉल प्लांट्स है। अभी पानीपत में एक बायो एथेनॉल प्लांट आएगा, 1000 करोड़ का प्लांट आएगा। नेक्स्ट मंथ अगस्त सितंबर में this will become functional, so that a large amount of straw will go into this plant and that will convert them into ethanol. ये ethanol को हम पेट्रोल में मिक्स करेगा and this will go to your vehicles. पटियाला में भी एक प्लांट कंस्ट्रक्शन में है। बठिंडा में भी एक प्लांट कंस्ट्रक्शन में है। ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सब सही होने से नेक्स्ट जून जुलाई में ये प्लांट भी कंप्लीट हो जाएगा। उधर भी लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रॉ जाएगा, वो भी एथेनॉल कन्वर्ट होगा, पेट्रोल में मिक्स होगा। दैट विल बी आल्सो यूज्ड फॉर फायरिंग व्हीकल्स। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं,
दिस इज न्यू एंट्री। ये बायोगैस प्लांट्स कुछ पार्ट कंट्री में कुछ जगह में ये बायोगैस प्लांट्स बहुत सक्सेसफुल है। ये बायोगैस प्लांट्स जो गैस आ रहा है डायरेक्टली गैस व्हीकल्स में जाता है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। वी हैव टू रेप्लिकेट दिस हियर आल्सो। देन को जनरेशन में यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में यूज हो सकता है। इंडस्ट्रियल बॉयलर पंजाब में ऑलरेडी यूज हो रहा है, ब्रिक किल में यूज हो सकता है एंड torrefied pellets and biomass pellets coal fired thermal power plant में मिक्स होकर फायर कर सकता है। उसका स्पेशल फोकस आज का वर्कशॉप में ही है। देन अदर छोटा छोटा यूज बहुत है। ये pellets and briquettes can be used in paper making, particle board making, compressed agricultural panel furniture, packaging material industries। So ये सब में इसका यूज है। अभी रिसेंटली कमीशन ने बायोमास को क्लीन फ्यूल बोल के डिक्लेयर किया है। ओके, हम इसको बहुत सोच के हमने बायोमास को वी हैव पुट एज ए क्लीन कैटेगरी फ्यूल। इसका परिणाम आप देखो क्या होगा, क्या होने वाला है। जितना मेरा पास खबर है, जब नोटिफाई करने से पहले बायोमास का प्राइस 3 रुपीज 4 रुपीज किलो था, 4 रुपए के नीचे था। आज का बायोमास का प्राइस हो गया 8 रुपया 9 रुपया कुछ किलो में हो गया। अभी एनटीपीसी का रिसेंट टेंडर में जितना मेरे को पता है 9,000 रुपीज पर टन आ रहा है, तो प्राइस अराउंड 9 रुपीज आ रहा है। अभी जब ज्यादा लोग बायोमास यूज करेगा, इसका प्राइस और बढ़ेगा। इसका जब प्राइस बढ़ेगा उसमें 2 मुख्य फायदा है। एक है जलाना कम हो जाएगा, सेकंड के फार्मर्स को प्राइस मिलेगा एंड इट विल बिकम एन इकोनॉमिक रिसोर्स। जब बायोमास हमने क्लीन फ्यूल यूज करके डिक्लेयर किया, उसी टाइम हमने कोल को एनसीआर में बैन भी कर दिया अदर देन थर्मल पावर प्लांट्स। सो एक तरफ से कोल यूज नहीं कर पाएगा, सेकेंडली आपको बायोमास क्लीन फ्यूल पर डिक्लेयर किया। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, because in the days and months and years to come there is going to be huge potential for biomass. Central government का policy है national policy for management of crop residue, central scheme है for promotion of agricultural mechanization for in situ management, and ये स्कीम में लास्ट 3 साल से 1821 से about 1,750 करोड़ सैंक्शन किया है मशीन प्रोक्योर करने के लिए। एंड टुडे इन पंजाब एंड हरियाणा एंड एनसीआर पार्ट ऑफ यूपी adequate number of machines are available to handle this problem and to mix it with the soil. And the step taken by the Ministry of Power, and they are constituting a national biomass mission, whose executive director is today, is another very important step. This is with a special focus on using biomass in thermal power plants for co-firing. So, ये तो शुरुआत है। 2016 में इसको ट्राई किया है, साइंटिफिक ट्राई किया है। 2020 में सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद अभी शुरुआत हुआ है। एंड दिस एक्सिक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफर्स इमेंस यूटिलिटीज फॉर immense opportunities for utilizing agricultural residue as a resource and deriving economic value through products and services. Policies are already in place, but more policies to smoothen it and to remove the rough edges need to be put in place. But the most important is a robust and continuous supply chain of biomass, and also the processed pellets, briquettes, that is vital for exit project successful. For this purpose, storage and measures for protection of the paddy straw from moisture become critical. आपको पता है जब पैडी स्ट्रॉ में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, उसको यूज नहीं कर पाएगा। ग्रेन में भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर का यूज नहीं कर पाता है, उसको भी ड्राई करना पड़ता है, इसको भी ड्राई करना पड़ता है। Panchayat land and other storage spaces
need to be identified to commensurate the quantities required for executive application. So that decentralized approach हो जाए, village में भी जगह मिले, तहसील में मिले, district में मिले, उधर store हो जाए, उधर से इसको shift हो जाए, use करने का premises में, and then similarly setting up of adequate number of paddy, straw pelleting and briquetting machines units in the vicinity of targeted end use locations are most important. यहाँ पे सारा एंटरप्रेन्योर को, टेक्नोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को बहुत बड़ा important रोल है. Transportation of these goods to faraway distances is going to be an expensive proposal. Therefore, decentralized premises बनाए, उसको nearest industrial unit में जाए, so that supply chain systematic हो जाए and availability ensure हो जाए for industries or all other applications. State governments have been advised by the Commission to develop a mechanism and policy for assured availability and supply of paddy straw, map the districts and villages for agricultural straw availability and demand from various industries for optimum utilization as well as allocation, establish institutions for aggregation at the village level, block level and district level, develop appropriate decentralized mechanism for collection, storage and transportation, ensure quality of residue, primarily the moisture aspect, and ensure requisite infrastructure at the industrial sites for proper utilization of straw. जैसा मैंने बोला 2016 में 17 में NTPC इसका टेक्नोलॉजी का feasibility evaluate किया है, and after evaluation, extensive studies, it has been proved beyond all reasonable doubt this can be co-fired in thermal power plants up to 10% without बिना any boiler modification में इसको torrefied and non-torrefied can be successfully co-fired. And ये co-fire का experience का basis में, it is convinced that this can be done on a large scale, replicate कर सकता है, उसका basis में we have issued direction to the 11 thermal power plants within 300 kilometers radius of Delhi to co-fire them 5 to 10%. The union budget of last year, central government last year का budget में भी co-firing in thermal power plants has been made mandatory by 5%. So जो हमने mandate किया है 300 kilometers of Delhi में जहाँ 11 thermal power plants है, these are statutory directions. These statutory directions have to be complied with. We are monitoring it, but I must tell here, some efforts have been initiated in this direction. The progress has not been satisfactory. NTPC is co-firing around 100 metric tons a day. So monthly it is around 3,000 metric tons. Private sector's contribution needs to be picked up substantially. And regular co-firing is yet to start in power plants managed by Punjab and Haryana. The quantities of biomass that is being co-fired is very limited. It needs to be substantially increased. But CMD NTPC mentioned that they will be issuing giving the order of a massive tender within next 1 week or so. And they have also issued procurement, already they are lined up for 1.1 million ton. So as per the data available with the Commission, about 11.85 lakh ton of paddy straw in Punjab and 4.7 lakh tons of paddy straw in Haryana are currently being used in various ex-situ projects in industrial boilers, biomass projects, bio-CNG plants, bioethanol plants, CBG plants, etc. That is last year, during 2021. But there is a proposal, there is a lot of effort that has been made by the state governments and everybody who concerned with this. And it is expected by 2023, this 11.85 is likely to go up to 27 lakh tons of biomass in Punjab, that is 11 to 27, and 4.78 from Haryana, that is to 18 lakh tons in Haryana,
in ex-situ applications. This only indicates that ex-situ applications, though getting a push, the push has to be much stronger by policies, by commitment of action, and through financial support. The suggestions which have been given include viability gap funding for biomass power plants, long-term CBG offtake agreement, linking pricing mechanism with the variable input cost, 100% assured offtake to CBG, continual capital subsidy, and subsidy to CBG developers. अभी तो बायोमास को को-फायरिंग का बात अभी हम कर रहा है, सेम थिंग एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करने का बात भी हम थोड़ा पहले कर रहा था, उसका कारण से इनिशियली 2% 3% से शुरू होके उधर अभी ब्लेंडिंग 10% हो गया. 10% is a huge amount nationally. So it is very much possible. In petrol we are mixing ethanol and selling it, and today large number of units have come in Punjab also, Haryana also, UP also, and various other parts. They are making large amount of ethanol. They are making ethanol from sugarcane, they are making ethanol from straw, they are making ethanol from grains, and therefore ethanol production is picking up in a big way. I am very confident people like you who are sitting here, entrepreneurs, committed citizens, public spirited citizens, you will immensely contribute to this effort, so that what we have achieved in ethanol, the same thing can be achieved in co-firing thermal power plants also. Today's technical session, especially the session in the afternoon, that will touch upon various technical issues. What are the experiences as of today in co-firing? क्या सक्सेस हुआ है, क्या डिफेक्टिव है, अभी आगे लेने के लिए क्या करना है, फाइनेंशियल इश्यूज क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा हैंडल करना है, पेलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या डिफेक्टिव है, उसको कैसे हैंडल करना है. All this will be discussed this afternoon in the technical session. So it is now established beyond all doubts that straw can be used as an economic resource in multiple places. I have already mentioned that. Now the players, the entrepreneurs, the stakeholders, the bankers, the financial supporters, the policy makers and technocrats must ensure how you actually get it done in the field. And that is also quite difficult, because in Punjab, in Haryana, in UP, everywhere, many plants have already come out and many plants are in the pipeline. What is required to be done is replicated in a big scale, so that we should look at the 25 million tons of paddy straw that is being developed every year, how to dispose it, not 1 million, not 2 million, not 3 million. And today, any amount of briquettes you produce, any amount of pellets you produce, we are capable of buying. Any amount you produce, we are capable of buying. Because today, coal is being fired. Coal is not a very environmentally sustainable product. I think today coal is also being imported. Import is always expensive. And so, make any amount of pellet, people are going to buy it. Assured supply, assured offtake, assured price. Punjab, Haryana में कोई entrepreneur का कमती तो है नहीं है. You have done fantastic work in the many previous years. Even in entrepreneurial spirit. So this entrepreneurial spirit should come forward and see that more and more in-situ plants come up, more and more pellet plants come up, more and more briquette plants come up, which can be taken by companies like NTPC and state government का power plants है, 11 power plants NCR का within 300 kilometers है, उसका requirement of pellet इतना ज़्यादा है, अब कितना भी बना लो, उन लोग खरीदेगा. And I am very confident that today's conference will result in meaningful discussion and valuable guidance, especially to entrepreneurs and other stakeholders, to tap the huge opportunity and potential that this sector gives in the immediate future, in the medium-term future,
as well as in the long-term future. Because we need power all time. Power is always required, and this is a renewable energy. So this is not a polluting power. So this has been declared as renewable by the Ministry of Renewable Energy, Government of India. And the budget provides for this. Therefore, what is required is the straw-based pellets को thermal power plants को use करने के लिए you must try to see that adequate बनाया जाए and it is fed to them so that this can be used. So इस प्रोग्राम सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या बॉटलनेक्स है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या क्या कमती हैं, उसको आइडेंटिफाई करके आगे ले जाने के लिए पूरा प्रयत्न करना है. ये प्रयत्न अकेला NTPC, अकेला कमीशन नहीं कर पाएगा. Because the task is so huge, and जब तक sincere and spirited stakeholders like you don't become an active player at individual level, society level, community level, this is not going to be successful. Therefore, aggregators should come, and such aggregators and units come up in the entire region, preferably in a hub and spoke model. The exit to paddy store utilization will continue to be difficult. So one or two persons cannot do it alone, one or two agencies cannot do it alone. It has to be collected by each one of us together. And to conclude, there is a compelling need, there is a dire need to give further push for pelletization and co-firing in thermal power plants. The 11 thermal power plants should also set up their own pelletization briquette plants before private entrepreneurs are able to build a large amount of them and able to feed you. So we have taken up with the thermal power plants to also start with their own pellet manufacturing units. We will also soon call them for a meeting. Therefore, the idea is huge amount of so-called waste is available. Science is available to convert them into an economic resource. Technology is established to do so. Entrepreneurs are available in plenty. So what is the issue? The issue is just getting it done and the commitment to get it done. So before I conclude, I hope the participants will use this opportunity to learn and make significant progress in converting biomass, especially paddy straw, into a resource, and in the process achieve 4 things. 1, minimize burning, because every October, November, December, May, international news, national news, regional news, TV news, everywhere this is the India most polluted, northern region most polluted, Bhiwadi most polluted, Gurugram not polluted. This is the news everywhere. This is not in national interest, not in state interest, not in individual interest, not in our health, not in the interest of our health. Therefore, 1, minimize burning, 2, improve environment, 3, enhance farmers' income, and at last, we have to promote sustainable agriculture. But we have to feed the entire Indian population, and this can be fed only when the agriculture is made sustainable. And burning is not a sustainable agricultural practice. We have to eliminate it as quickly as possible, and since technology provides for this, commitment is there to get it done. I would once again appeal to everybody who is present here to pay your complete might and strength behind this, so you see that we become successful. Thank you so much. Thank you so much, sir, for enlightening the August gathering by putting up the threadbare discussion about different aspects of biomass and putting up the complete picture of biomass ecosystem. But at this point of time, we are feeling a sense of gratitude as well as a sense of enlightenment. And before we close the inaugural session for today's program, we'll go for the felicitation of our distinguished guest on dais. For this, may I request
Mission Director Shri Sudeep Nath sir to please do the honor for felicitating our chief guest of the day, Dr. Anand Putti, Chairman, Commission for Air Quality Management. Shri Sudeep Nath sir. Picture photo. देख रहा हूँ. I again request Sudeep sir to please felicitate Shri Ramesh Babu, Director, Operations, NTPC Limited. So please do the honor for felicitating Shri Arvind Notial sir, Member Secretary, Commission for Air Quality Management. Now I request Shri SPS Big sir to please felicitate Shri S. Narayanan sir, Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board. And last but not the least, sir, please felicitate Shri Kunesh Garg sir, Member Secretary, Punjab Pollution Control Board. Thank you so much, sir. Now, before we break the inaugural session, I request and invite Shri SPS Big sir, GM NTPC, to please put up vote of thanks for inaugural session. लाइट लिया लाइट ले गया. Good afternoon, everyone. Most respected guests on the dais, Chairman CFM, Dr. Kuti sir, Director Operations NTPC, इतनी रख पीछे रख लाइट पीछे रख पीछे. Member Secretary CFM, Arvind Notial sir, Mr. Narayanan sir, Member Secretary, Haryana State Pollution Board, Mr. Kunesh Garg, Member Secretary, Punjab State Pollution Control Board. Shri Sudeep Nath, Mission Director, National Biomass Mission. Our most valued invited guests from central government, state government and the GENCOs. Delegates representing manufacturers, farmers associations, industry associations and bankers. Sir, on behalf of all the participants, Sabat and the NTPC organizing team, it's my privilege to propose a vote of thanks and express our gratitude to the eminent guests on the stage who have taken time out of their busy schedules to be with us and share valuable thoughts on the agenda of the workshop. Sir, your continued guidance and support will be crucial to the success of the ambitious roadmap of Biomass mission. A big thank you, Dr. Putti, for comprehensively capturing the issues and the scale of the problem in such a short speech. And sharing with us the strategies that the government is following. So the conviction and the passion that you have, we are sure that we'll be able to meet the objective of the next Biomass mission. Sir, thank you for sharing the government's vision, your expectations from the sector, and the efforts being taken in this direction. So the big presence here, it's a testimony of the response of the sector to the vision. And sir, we also take your signal that Biomass mission has to reach to the scale of ethanol usage that we have been able to do. So that's the target objective for us. We are grateful to Sri Ramesh Babu, Director Operations, to share with us the scale and potential of market that NTPC has to offer to the
entrepreneurs to the manufacturing sector. It's a huge opportunity wherein assured business for 7 years will be available, and we hope with that the bankers, the financial institutions will come forward to support the manufacturers. We are grateful to Mr. Narayanan and Mr. Garg for sharing the state's perspective and the efforts that are being put in to achieve the objectives that we have set for ourselves. And we are also grateful to Mr. Arvind Nathwar, who is always passionate about the subject whenever we meet him. So we'll look forward to hear from you in your presentation. Thank you, sir. स्टार्ट ला दे देसी गाना यार Sir, I would like to use this opportunity to place on record our hearty thanks to all the delegates and participants present here, without whom this event would have no significance. You are the most important stakeholders here. Respected guests of the dais, ladies and gentlemen, this workshop has been organized with a very short notice and has been made possible by a very motivated team. Though it's too early in the day, it may look like the end of the year vote of thanks, but still I like to put on record acknowledge and appreciation for the organizing team. The contribution of those who worked really very hard for the success of today's workshop. The NTPC team, the Samarth team, the PR team, the hotel team, the logistics partner, Barman and Dolly, the venue management team of the hotel, and everybody else associated with the organizing teams. Their commitment is visible in the outcome today. A big thank you all. So I will be failing in my duty if I do not acknowledge the support and the push that has been given by the CAQM PM and the senior management of NTPC, without whose support this event would not have been possible in such a short time. Sir, once again thanking you. Now I will be requesting, so our next program is, after this event, we'll just go around the exhibition stalls, we'll have an interaction with the exhibitors, and subsequent to that, we'll have a tea break, and we'll be waiting for the next technical session after about half an hour. So I'll invite you to visit to the stalls of exhibitors. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. I request all the esteemed guests present here to please first visit the stalls which have been put up by banks, OEMs, machine manufacturers and consultant services. Request all guests to visit those stalls to understand the quantum of work done and the opportunities available in the respective stakeholder domain of bioenergy value chain. I request to stage management group to please keep the stage ready for post-tea presentations by getting the set of financials on stage. Thank you very much. Manchester City, I would say. Manchester City. Right now we are actually selling out around 15 to 16 machines in a month. Yeah.
Totally. Actually, I have a lot of my clients who actually want to give pallets to NTPC. They are eager to give that. We should give the tender. No, I'm giving them machines. They are waiting for the tenders. Let the NTPC give us the. बस वो उसी का वेट कर रहे हैं. टेंडर मिलेगा तो Yes. Many production comparatively increase हो रही है after 2018 because pallets actually got introduced then. उससे पहले briquettes का market ज़्यादा था. 1989. इस टाइम तो 45-50 दिन में एक मशीन था. अभी तो एक महीने में 15 से 16 मशीन है. Thank you so much. Thank you. इसको बोलो बना रहे हैं 1969 से ऑलरेडी इंडिया में कुछ मशीनरीज हैं जैसे बिग बेलर्स हैं वो भी इम्पोर्ट हो रहे हैं यूरोप से. बाकी जो छोटे बेलर है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इसकी लाइन स्टार्ट 20 kg बेल. तो पर डे कैपेसिटी इज अराउंड 40 to 50 tons. Approximate only one plant in India. Yeah, there's a plant in Pune. Its capacity is around 1,000 meters per year. Extending us. Right now the market is very small. सर एक्चुअली क्या है सब पानी की प्रॉब्लम क्या आती है ये रिक्वायरमेंट सर ये बिग बेलर्स सभी एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज फार्म साइज छोटे हैं. हमें फार्म साइज देखना पड़ेगा, नॉट देखना पड़ेगा. और एग्जाम्पल जैसे कि हमें पंजाब हरियाणा यू कैन मिक्स ऑफ दैट. हम एक के ऊपर नहीं जा सकते. स्मॉल फार्मर कैन स्टार्ट विद दिस but this has the experience. I'm an aggregator. You are an aggregator. I want to actually buy this. Sir, two factors. Sir, so then I emphasize two factors. One is your farm size that you are having in your region. Second is your economic strength. ये मटेरियल आपको 2000 टन करके देगा पहले क्वांटिटीज में और अगर आप यहाँ पे जाएंगे 4000 टन. फॉर्म से जहाँ पता है आप समझना हम एग्रीगेटर कम्युनिटी हो सर आप क्या सजेस्ट करें? सर मैं जो सजेस्ट करूँगा सर मेरा जो सोल्यूशन ये है कि देयर हैज टू बी अ मैच जो आप ये वाले सिस्टम पूरे मैकेनाइज्ड है. मतलब हैंडलिंग तक आपको लेने का जरूरत नहीं है. तो आई थिंक यू शुड हेल्प फॉर दिस बिकॉज ये टोटली मैकेनाइज्ड है. बट डे वन में ये नहीं रहेगा. यू हैव क्या है कि कॉस्ट वेरी करती है और इसके पास स्टॉक नहीं है. दूसरा सर एक लिमिटेशन कैप है जो डीलर पे 12 लाख तो उसमें ये काउंट करता है. इसमें मोर देन 70% पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं. 4 इंडस्ट्रीज फार्मर तो ले नहीं सकता. इकोनॉमिकल वाइबल नहीं होती.
सर इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वहाँ पर कोई इसके लिए ट्रैक्टर देने की जरूरत नहीं, उसके घर पे 50 और 60 ट्रैक्टर है, तो इसके लिए सिर्फ मशीन इस सिस्टम्स के लिए उसको ट्रैक्टर भी बड़ा बाय करना पड़ेगा, हैंडलिंग सोल्यूशन भी लेना पड़ेगा। ये हाईटेक है। चलिए भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बनाएंगे सर आप आपकी सर यार तू भी सोच के आना अभी क्या हुआ, टारगेट काम कर रहे थे
बेटा डिस्प्ले से 20 साल से 5 साल में करना चाहिए ना, स्केल करना होना चाहिए ना। स्केल करने के लिए तो कोशिश में है कि लोगों को सबको दें, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास इंडिया में नहीं है जो फुली ऑटोमेटिक भी नहीं हो और कम आरक्षण कॉस्ट में बन सके। जैसे जो NTPC का सर्टिफिकेट आने वाले प्रोडक्ट मिला था उसके प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है पर केजी। मैंने सोचा कि भारत देश को पोसाने वाली प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, इसीलिए हमने दूसरी मैकेनिज्म मशीन थी उसमें मैकेनिज्म रिसर्च किया, थोड़ा उसके बाद में बनाया। तो आज मैं आपको मतलब प्राउडली सर कह सकता हूँ इंडिया में सबसे चीपेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे मशीन की आती है 1 रुपये से 1.5 रुपये किलो में पैलेट हम बनाते हैं। और मैं सर आपको आया था मिला था मैं आप मेरे को तो नाराज होकर चला गया सर आप नहीं हो। देखो ऐसा है, आप तो इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में हैं, आपको तो हम लोग समझा नहीं सकता है। नहीं मैं किसान भी हूँ, किसान हम भी किसान ही लेकिन अभी तो मास स्केल पे इसको प्रमोट करना। अभी देखो 1,000 साल पहले पढ़ाई क्यों नहीं होता था, सारा पेपर क्या बोलते थे लीफ में लिखता था, लीफ में दिखता था। उसके बाद हो गया प्रिंटिंग, मास प्रोडक्शन, उसके बाद हर बच्चा के घर में किताब आना शुरू हो गया। इसलिए इसको तो मास प्रोडक्शन कराना पड़ेगा। आपके जैसा आदमी नहीं, हमारे जैसा आदमी कैसे कर पाएगा, बुढ़ा हो गया देखो आपको करना है। ये पूरा प्रोडक्शन जो हो रहा है
और अभी नेक्स्ट में सेकंड आउट आ गया सर हमारी सेक्शन ऐसी चौक ये यूनिट एवरी मंथ कोई भी इंडस्ट्री जो है किसी को लगा है परंतु उसको वो मशीन नहीं है वो मशीन जो है बड़ी कॉस्टली है बड़ी वो सिलेंडर है जो सिलेंडर है सर
चार्जर लाए दवाई वाइस में 2 मिनट में बंद कर दे। नहीं बंद नहीं करना। या तो लाइन छोड़ो चला नहीं चले हाँ नहीं लगी रही अगे आया अगे लमोतर नहीं सोचे तो भी हाँ ठीक है पूरे ना आया करो चार्जर मेरा गाड़ी है चार्जर
मिनट हो सर, एक मिनट हो। क्या जगह है? सी पोर्ट है, सी पे ना दे दे यार थोड़ी देर में। हेलो, ओ कब रहने दे नहीं यार थोड़ी आधा घंटा डाल दे मेरे बस। नहीं सी चाहिए। की गाड़ी 10 लाख की थी, 15 लाख की बढ़ गई। Billion people in developing countries but still lack access to electricity. So, the United Nations General Assembly from 2014 to 2024 has declared a decade of sustainable energy. So in this direction, what they have done, they have given IRENA, that is International Renewable Energy Agency, to
give a detail of renewable energy share and energy efficiency in detail. So, the IRENA has developed a study, they have made a study, and they have created a renewable energy roadmap of 2030 and 2050. So under this, they have done study and published the report in 2019-20. So in this one, general electricity, global electricity generation like fuel-wise is, which was generated from in the year 2019 was 20,044 terawatt hour of electricity. Out of which 37% electricity was produced from coal and 27% from renewables, which was mainly driven by solar, wind, and a significant contribution from biomass. So this share of natural gas has also been increased from 18% to 23%. Now if we see the global biomass supply, what actually the biomass contribution in this direction is. So in 2019, what the study says, that the domestic supply of biomass was 56.9 exajoule globally, out of which 85% of domestic supply was from solid biomass itself, which includes of course the traditional biomass as well as the modern biomass, and then which is followed by biogas at 2% and all. So, friends, once again I would like to share that since we are a little bit delayed, so I will go a little bit fast. So, if we see the global renewable heat generation, so in 2019 report it shares 1.66 exajoule of renewable heat was produced in both heat-only plants as well as combined heat and power plants, out of which 97% of all renewable heat produced was from biomass, which is so this shows the sector has been an annual increment of 5% since 2000. So if we see the continent-wise global electricity generation in 2019 and 20, Europe has a high share of renewables in the electricity mix at 37.8%, followed by America as 32.5%, and then Asia 22.3% in 2019. From the overall 7,311 terawatt of renewable power was produced in 2019. So this is like a continent-wise we have given apart from other things. Now, the global biomass utilization for power generation. So in 2019, if you see the report, 68% of all biopower generated was from solid biomass, which is a boost to our mission as well, because and followed by 70% from municipal and industrial waste. So this is a very good thing that solid biomass is being used for all the sources of energies. Now, what we can see by this renewable energy roadmap, which has been presented by IRENA on the request of United Nations. So in the year, there is a prediction of a roadmap, that is a renewable energy roadmap of 2050, which is showing a good positive result that 85% of renewable energy can be utilized. It is a prediction that can be utilized in our power sources, apart from 24% from 2015, that is during the Paris Agreement. And one point, if you are seeing, we are shifting like 12.4 gigatons of CO2 per year, which has been drastically reduced up to 2050, 1.9 gigatons per year. So this is a good thing. So what is the takeaway from the Indian point of view? So if you see this Indian point of view, that is a jump in 2050 is around 92% there. So, which is a very good trend, and although it is a prediction, but it is a very, very good positive sign for us, provided the policies and the goals made up by the Ministry of Power, Government of India has been meticulously followed. It should be followed actually by the stakeholders, by different stakeholders, and it should be used in the power plants. So definitely this task is not far, and we are going to achieve it. Now, what are the things if we see from the Indian point of view? What actually the Indian potential in biomass? So if we see from Indian scenario, in biomass production, utilization and availability, we are seeing the production and utilization UP. If we see a little bit like state-wise, if we go in detail like state-wise from Indian point of view, so Uttar Pradesh is having a good utilization, in fact production as well, and surplus as well. Then followed by Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab and Haryana.
So this is just a glimpse which has been made, a study made by ASCII from our Indian point of view. So if we see the major crops contributing to all the total biomass potential across India is rice, wheat and maize, which is almost contributing more than 40% apart from cotton as well. But basically if we focus on the northern part of India, so this is like this much growth is, this much crop production is being done in this part of India. So consequently the, what we say, the paddy straw is also being generated accordingly in this area, that is because of rice and wheat production. So if we see the surplus biomass potential across India, so Punjab is having a 22.25 million tons of surplus biomass production, followed by Gujarat, Uttar Pradesh, which is having 21.6 million tons, and Haryana is also within the top 10, that is 10.91. So apart from this surplus biomass potential which are already available in India, why don't we use, why don't our stakeholders can use this surplus biomass for the power potential? So if we see state-wise the power potential, so this is like a state-wise power potential. So which is having, Punjab is having a very good power potential, that is more than 300 megawatt, followed by Uttar Pradesh which is having 2,800, and also our Haryana state is like 1,400 megawatt. So very good power potential if we see in terms of biomass. So friends, if we see like in 2021, the total agriculture residue generation in India was 754 million tons per year, and the total agriculture surplus was 228 million tons per year, which you might be able to see, which can produce a billion units of 325 itself. So which is a good sign. So the thing is, the message from the Ministry of Power and the Government of India, what we are addressing is, why don't we utilize? So just we have made in this direction, Ministry of Power has taken many visionary steps which I will share you in detail as well. So if we see this trend from 2000 to 2030, so the trend is upward and it is quite encouraging. So of course this vision is very important, and definitely I will just come to what exactly the policy mandates in this direction and what the steps has been taken and what the role of the mission in this direction and in what way it can benefit to you and in what way we can help you. So if we see, anyway, if the biomass is surplus, it is in the form of raw material. So something has to be made either in the pellet form. So the technology which is being used is either torrefied or non-torrefied if we see from agro residue point of view. So the torrefaction is being done because we have to make the chemical properties of raw biomass to bring closer to coal. So by torrefaction, the gross calorific value, it comes very closer to coal, which is being utilized in thermal power plants. That was our intention and that is what we have to address. So apart from this, yeah, there is a little bit of moisture content and volatile matter. That is a matter of concern, and the research activities are going on in this direction. So if you see this in one slide, actually in this details, in the technical session after post lunch, the details will be there. So for if you see the torrefied and non-torrefied, the basic difference is of course the gross calorific value is quite drastically increasing, which is coming closer to the coal. And not only that, it becomes a hydrophobic material which is totally water resistant and which will definitely helpful if it is in the long storage term, because as biomass won't available all the 12 months in a year, so it will be very much helpful for long storage. So we are trying to bring, we initiated this also torrefied technology to help in the direction, and we have initiated to bring also in this direction. We are helping the pallet manufacturers how to come up with these technologies. So if we see that after this pallet has been made, so generally in this point of view, because all are different stakeholders, so how it basically comes to the power plant. So when our farmers are harvesting,
So the unused paddy straw, it is being left, it is being cut by a suitable farming machine which has been raking at a suitable place with the suitable farming machine, because there are machineries, farming equipments also, stalls are there, you can interact with them in this direction also, and then with a suitable baler, either round or square, it should be belt at a proper place. Specifically round is considered because it is good for transportation and handling purpose, and then it is being sent to pallet manufacturing unit, and after pallet manufacturing unit it is being transported through coal mill or to the power plant through the conveyor. So it is quite interesting way, and at every stage every stage from supplier, from our farmer point of view to the pallet manufacturer, and from the pallet to the power plant, supply chain is very important, and that's what we are facing a little bit obstacle, and we are trying to find an alternate solution for that, and we have made various subgroups in this direction. So in this direction, what are the takeaways for our stakeholders, that is the GENCOs, pallet manufacturers and farmers? First of all, I would like to share some benefits in this direction, because if we co-fire our raw biomass with co-firing with coal, it eliminates burning of agro-residue and creates economic value of agro-residue by promoting it as a fuel in power plant in co-firing mode. It improves, of course, the air quality index, which creates additional income. While creating additional income for farmers, it encourages the establishment of decentralized pallet manufacturing units and generate employment opportunities. Of course, it is a good chance for the GENCOs also, opportunity for revival of old age units, confirming environmental norms with minimal investments, and it is a cost-effective solution for reducing greenhouse gases. Now, what are the takeaways for GENCOs? GENCOs, it's a less dependent on coal, and because as you are less dependent, why I am saying is because nowadays we are importing coal at a very higher cost. So that is not a solution to this problem. We have to use renewable energy, and that is a clear-cut message from the government of India, which I have brought for you. We cannot afford imported coals at a high cost. We will give our farmers a basic priority and use our farmers' hard-earned, their labor cost and all, to make this as a sustainable energy. Why not we are using it? Because recently, just on the 12th, Power Minister, in fact, Steering Committee Chairman, Honorable Secretary has already cleared it. Instead of imported coal, we have to use this biomass in our power plant. Of course, it brings less carbon footprint and considered under RTO by MNRE. So what are the takeaways for pallet manufacturers? So it is a new and lucrative blue ocean business strategy, which is very encouraging for the existing pallet manufacturers as well as the new entrepreneurs. Various government schemes for financial assistance for setting up of pallet plant is already available, and it is being initiated also in that direction by the guidelines of RBI, an opportunity for being a part of India's journey to green energy transition. So what are the takeaways for our farmers? It ensures additional income. Instead of just burning as a waste, why don't they supply to the pallet manufacturer and earn the income? Apart from that, there is a very good chance of local employment, because it creates under our skill employment and employment generated scheme also. It is a very good scheme, and improves soil health by saving from negative effects of stubble burning, and helps the farmers to clear the land for next crop at no cost. So it is a win-win situation for all the stakeholders. So if you see the market scenario from the business point of view, if you co-fire 10% biomass co-firing, so for farmers, even if they sell their crop at 1.5 rupees to 2 rupees per kg also, so there is a available market for our farmers that is up to 20,000 crore. It is the estimation and approximation based on some study. And then pallet manufacturers, if they sell two power plants at 6 to 7 rupees per kg, so the available market for them is around 35,000 crore, and of course for our power generation it's a green energy. So the total available market for power sector is approximate 55,000 crore. This is our approximation. I will come, every question answers will be done after this session, please. Then if we
also for them, because the primary reason in between that is they don't have, that is the cheapest way actually to remove the stubble from their field. And maybe a lack of alternative methods to take out the complete stubble from their paddy field, that is also one of the things. And these things are there. So if we see these things, but apart from these things, it also affects the soil nutrients, because by heat generation, it kills the useful bacteria and microbes of the soil, which affects the fertility of the soil. In addition to, it affects our human health also. In one of the study, just I have read it in Times of India, that if we are staying near our NCR region or somewhat nearby, around 18 to 20 years, the life expectancy is reduced by 1 or 1.5 years, maybe go to 2 years. It depends on that, how much it is there. So we have to take it very seriously. So I brought a message from our Ministry of Power, Government of India, in this direction. So they have set up a national mission in this direction under the aegis of Ministry of Power, Government of India. So in this direction, to address the issue of air pollution due to farm stubble burning and to reduce carbon footprints of thermal power generation. So under this, they have set up a mission structure. This is just a mission structure, which is the apex body's Ministry of Power, headed by our Honorable Secretary, Steering Committee, then under them Executive Committee, and then our Mission Director, which under our Mission Director, which is headed by Executive Director, NTPC, and under them there are various 5 subgroups, subgroup 1, subgroup 2, 3, 4, and 5. So subgroup 1 is headed by CPRI head, who is looking after research and development. Subgroup 2 looking after the technical specification of boilers if the thermal share goes on increasing by co-firing. Subgroup 3 headed by MOP, supply chain. Subgroup 4 headed by EEE, who is looking after the testing of biomass, testing of raw pellets. So what if it should be proper if they are supplying to the power plants, that in the terms of GCV, and also on both sides they can test it either through power plant or through the pellet manufacturer. And then subgroup 4, of course, headed by MOP, who is looking after this regulatory issues. So if we see just a glimpse of major activities, because already the major activities has already been compiled, just a few glimpses because of a shortage of time. So I don't think I will read each and everything. So the guidelines has already been revised and issued, and it is available in our website as well. Then technical assistance. Our national mission is giving to all our stakeholders. The monitoring is being done, and we have also developed a website also, which is going to be launched shortly. Identification of labs. Already 8 labs have been identified, and the list has been shared to our GENCOs as well. So the R&D projects are also going on, because since, as you all are aware, that biomass is a new sector and we are going in this direction. So R&D process is very important in this direction, because the loss of GCV due to longer storage period is happening. And how much is the paddy content? Paddy content in the sense, because pallets are manufacturing and selling, but how much is the agro residue in the form of paddy in the pallet? It should be measured. So that also research is going on. Then training awareness program, as you all are aware, that training awareness programs is rigorously being done by our mission director under our very able and visionary leadership of our mission director. 8 numbers of farmers and awareness training program has been carried out, and then awareness to GENCOs and pallet manufacturers is also being taken care. So apart from this ease, because it creates a ease of doing business, so we have also it is very light. I'm very happy to say that we have already made the pallet procurement through GEN portal as well. This is a recent announcement. And then as I've told that, as I've already told, farmers awareness program, we have already conducted 7 numbers of farmers awareness programs. Actually, this has been happening every month across all India. So we have conducted in Haryana, Punjab, Bagpat UP, Patiala Punjab, Palwal, Kanpur UP, Durg Chhattisgarh, Dahod Gujarat, and that's going on. The list is there because we have already made a schedule, and already more than 1 year program has already been chalked up. So this is for pallet manufacturers. Likewise, we have conducted 5 training programs, which has already been done in Madhurpur, Delhi, Nagpur, Maharashtra, Pune, Maharashtra, Chennai, Tamil Nadu, and Bangalore, Karnataka. So if we see the online training program for GENCOs,
So 4 numbers of capacity building program has already been done by, actually this program has been conducted by NPTI. We have nominated NPTI under the supervision of National Mission on Use of Biomass, which has been carried out by GENCO that which has been done by Badarpur, Durgapur, Nagpur, Neyveli and Naamgarh. Yeah. Now, before going it, still have 15 minutes left, I think, or 10 minutes left, right? So, the enabling policies, because we have, this is the mission and the policy mandates that, because already the revised policy has already been mandated for biomass utilization for power generation through co-firing coal-based power plants, which has been mandated in the month of October itself. So I'm not going to read all this one because it is already available in website of Ministry of Power, Government of India, in our website also. Actually, it is available, but sure, we have not launched officially, and it is available in CA website also. So for ball mill, ball and race mill and ball and tube mill, 5% blend of biomass is compulsory, but in ball and race mill, torrefied only it is to be there, and the minimum contract period will be of 7 years, and the policy in force for 25 years. So this you can read it in detail in our ministry website, Ministry of Power, Government of India, and our Samarth website also. So what are the progressive footprints in biomass co-firing? So up to, this is like 5th of July, up to, the record is. So we have already achieved a cumulative of 34 like KPI index measurement, which is of course an achievement under our ever leadership. And then out of 34 plants so far, NTPC has co-fired for 14 numbers and rest 20 numbers. So if we see the biomass usage for co-firing in thermal power plant, so this NCR region, so in NCR region we have divided NTPC power plants and non-NTPC power plants. So NTPC power plant, which has a total biomass usage of 21,495 metric tons, and non-NTPC 907.4 metric tons, and in other regions, that is apart from NCR region, total biomass usage was 56,000, and this was non-NTPC biomass usage of 1,319 metric tons. So total biomass usage was more than 80,052, more than 80,000 metric tons. That is there. And if you see the progress in tendering of biomass procurement, that is the tender quantity. Sorry. So which is kind of a long-term and short-term tender. Yeah, long-term and short-term tender. So NCR region, if we are saying that is NTPC plants 40.89 LMT and non-NTPC plants 17.93 LMT, and in other regions 64.87 LMT, and other organization 112, more than 112 LMT, which is having a total quantity of 23.6 million metric tons. So what are the way forwards? Actually, friends, what I want to just convey here on behalf of our mission and on behalf of our government's mission, that we have, in the direction we have complied so many things, but still so many things are still left over, and which is being in the direction of developing it, and we are doing it in that direction. So just a few glimpses in one slide, because the time limit is very less. So the consultancy services for assessment of biomass sector for identification of prospective locations for pallet manufacturing established across Punjab, Haryana and UP. Preparation of legal binding document for pallet co-firing documents through EC Act. And to promote digital marketing platforms for interaction, information and business expansion. Developing, of course, this is one of the major things, developing aggregation, collection, storage, pallet manufacturing set up by new FPOs, and developing storage facility at power plant. Of course, developing processed biomass storage facility at farmers and pallet manufacturers. To increase the number of labs for testing of biomass all over India, because this has already been initiated by our subgroup 4, and they are in the process of setting it also, apart from other 8 NABL labs, and developing biomass as a key substitute for coal. So, development of model for small and large capacity torrefied power plant at GENCO's premises. So these are some of the way forward, and want to give the glimpse, just because apart, in addition to this, we have done so many things. Like we have developed like GST, or because this is a commodity of pallet, so GST and HSN code also has been developed. This here I have not mentioned that. So many things are going on. So whatever the graph, pie charts and bar charts have shown, these are the references which government has made a study, and just I have shown not only from the global point of view, from Indian point of view. So friends, what I would like to say to all our stakeholders, what I want to address on behalf of National Mission, and the message, the clear-cut message from the Ministry of Power, Government of India is, please dosto,
ये जो बायोमास है, जो रॉ बायोमास है, इसे हमें एज ए रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म में हमें पावर प्लांट में यूज करना है, और हमें जो इम्पोर्टेड कोल जो कॉस्टली यूज हो रहा है उसको कम करना है, और हम ये ग्रीन क्लीन ट्रांजिशन एनर्जी के फॉर्म में बहुत यूज होगा, और बिना आपके सहयोग से इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल विदाउट योर सपोर्ट एंड हेल्प। सो आई रिक्वेस्ट farmers, pallet manufacturers, and of course our GENCOs, please help in this direction to make our mission possible. Thank you very much. So if any possible question answers, please note it down. I will be here, and I will try to solve your query from my point of view, from my presentation. And apart from this, in addition to this, because if any query is related to this, because there is a post-technical session, definitely at every point of view, for every stakeholders, there are very interactive good sessions are there. Please come up with your questions and answers after lunch. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Praful. Please stay back for a moment on stage, please. Thank you very much for reading out the activities and mission details with the participants. May I request Shri Sudeep Nag sir to please do the honor for felicitating Mr. Praful. Thank you very much. Now moving toward the last presentation before the lunch, may I now request Shri Arvind Nautiyar, sir, Member Secretary Commission for Air Quality Management, to share his perspective about the theme of today's workshop, that is site utilization of paddy straw. Shri Arvind Nautiyar, sir. कहना कितने बजे आना रात वाला जी 4 दिन तो पड़ेगा। Very good afternoon once again. Now, moving from the bigger perspective of biomass in general, I will be specifically talking about the issue of paddy straw management in the entire NCR, particularly from the states of Punjab and Haryana and Uttar Pradesh, and the possible usages that we might look for, particularly for the ex situ utilizations. So it would be mainly focused on paddy straw utilization ex situ. So, as we are all aware, farm fires owing to stubble burning has been a matter of great concern from year on year, and the concerns are widely ranging from all strata. It affects individuals, it affects governments, it affects society, it affects, the image of the country. So with that perspective, the governments, state government, the central government, and the stakeholders have been working earnestly towards controlling this menace. Things have been improving, but the way we stand, and the figures are here before you. While there has been a marginal improvement, if you compare the figures of 2020 versus 2021, there has been a marginal improvement of about 10,000 odd cases, but still this is a high number to be talked about anywhere. Very high number, and there has always been a need to control to as close as nil. We are just taken a single step towards a long journey of controlling this menace, but we are there on track. Now,
management of paddy straw, particularly during, and since the bulk of it comes from the state governments of Punjab and Haryana, I have not taken into account the generation and the issues related to NCR districts of Uttar Pradesh and Rajasthan, which contribute very minimally to this issue. So we'll be restricting mainly to the figures of Punjab and Haryana for the simplicity purposes. So Punjab generates about 18.74, and these are all million tons, mind you. So the magnitude can be well imagined. 18.74 million tons, of which 2.69 is about the basmati generation, and the rest 16.07 is the non-basmati generation. The reason for, as Dr. Kuti had already explained, the reason for this bifurcation is that basmati finds an easy way for utilization as fodder directly, whereas the other variety, owing to high silica content, does not actually go into the uses for fodder, which is the most logical usage, and hence we need to look for the mitigation measures. So 16.07 million tons, that's a rough estimate of what Punjab generates of non-basmati paddy. Likewise, in the state of Haryana, we have 6.8 total straw generated, of which about 60% is 55 to 60% is basmati. The rest 2.9 is non-basmati. Now that's the generation. How have we utilized it? So from time to time we have been advocating schemes, ways, measures, programs to control, prevent, mitigate stubble burning. The Ministry of Agriculture has been supporting a scheme for providing machinery at subsidized cost and rather in fact also free to marginal and poor farmers, so as to manage the straw in situ. So last 3 years have seen large outflows, cash outflows as subsidies to the states to procure machines. These come with challenges of technology adoption, of complementing those machines with other implements, but nevertheless the intention was to use maximum of these machines or implements so as to incorporate or mulch the straw generated into the soil itself, so as to have the nutrients preserved and also clear off the fields of the straw. In the intervening period, a biodecomposer technology was also developed by IIRL, which decomposes the standing or the cut straw, degrades it and incorporates it in the soil. Another step forward was ex situ utilization that we all know about. At the cost of repetition, I would say, but this is the most potent way or a framework for dealing with the management of the stubble, because it, at the end of the day, it works as an economic resource. It is an economic resource to the farmer, it's an economic resource to the aggregator, it's an economic resource to the pellet manufacturer, it's an economic resource to the pellet or briquette manufacturer and the end users, and in the end, it's an environmentally sustainable mode of energy transition. And we are all serving the environment in that manner. So this becomes a vital network, vital framework for management of paddy stubble. So in particularly 2021, if you just see the figures, in situ management and other means like composting and others led to utilization of 4.55 tons in Punjab. Through ex situ it was about 1.19, still leaving about 13 million tons of straw to be burnt. Likewise, Haryana figures are in front of you. 3.5 million tons total managed through in situ means only 0.48 million tons was utilized as ex situ.
measures, and approximately 2.82 million tons was burnt in the field. So how do we manage the paddy straw burn? As I stated, there could be in situ measures, there could be ex situ measures. In situ measures, they are traditional measures of composting, the biodecomposer application that I talked about, and use of machines, mechanized means and other implements for mulching of straw and incorporating it in the soil. Then the other vital component is about ex situ. So ex situ utilization has two optics, one for energy uses and other is for non-energy and other commercial applications. So energy particularly for bioethanol production, biogas production, and as fuel in industries in the form of pellets and briquettes, boilers. There's a huge potential for these to be utilized in the industrial boilers. And thermal power plants, of course, we've been talking about, that's how the mission was started, and that is the major uptake of such biomass, along with other types of biomasses, of course. But here we'll be focusing on what's the quantum of paddy straw, how much there's the potential to be utilized in various applications. And definitely power plants, thermal power plants are a major, there'll be a major takers for all the straw that is generated. The non-energy uses could be, though they are small in numbers to begin with, but they could be taken up in a big way, like for mushroom cultivation, pulp and paper industry, and packaging, the agri panels, and also in fact now it's being used for tandoors also in dhabas and restaurants. So as a replacement of unclean mode of energy, so it could be utilized there. So that was in terms of energy and others, but just coming to simplify it. So as fuel, you can utilize it in industrial boilers, waste to energy plants, brick kilns, and thermal power plants. And other applications could be composting, bioethanol, biofuels, compressed biogas, and production of paper, particle board, compressed agri panel furniture, packaging materials, and in tandoors and also in crematoria. Talking specifically about what are the current levels of utilization of ex situ paddy straw. So this is Punjab in 2021 utilized about 11.85 lakh metric tons. So basically 1.1 million tons roughly, and Haryana 4.78 lakh metric tons in various biomass power plants, biomass power generation plants, industrial boilers, and bioethanol plants. There are already some projects in pipeline very close to commissioning, or some would be commissioned in a gap of 1 or 2 years. So those have been enlisted here. So biomass power projects, there are 2 which are coming, which will consume about 1.2 lakh. And the HPCL bioethanol plant, which has a huge capacity of consumption of about 2 lakh tons of paddy straw. It's biomass, but paddy straw would become a major constituent of it. CBG projects likewise, there are 23 such projects coming up under the Satat scheme launched by the Government of India. So those are likely to consume about 8.8 lakh tons, and there are other industries which are still planning to use biomass in their industrial boilers, and those would be consuming about 3.55, so totaling it about 15.55 lakh metric tons or another 1.5 million tons. So there, as we see that this initiatives and these exercises began about 5-6 years back, but we
hope to see a quantum jump in the current levels and that in the coming 1 or 2 years. So it will just get doubled. So that's a very happy sign, but that's not enough. Unfortunately, we are now at the crossroads wherein, as was aptly put during informal discussions, we have no dearth of demand. We have no dearth of manufacturing capabilities or supply potential. But somehow there's been a missing link. So I take this opportunity and this workshop as that important bridge of connecting all stakeholders to make a seamless kind of a movement, to make this possible for the paddy straw, which is immensely available, to the required entities which are really looking for these alternatives. They are conscious entities. They anyway require fuel. They will be happy using cleaner fuels. So this is the gap that the workshop envisages to bridge, and I am very happy to see the spectrum of stakeholders, wherein the financial institutions, the FPOs, the market users, the industrialists, the aggregators, the entrepreneurs, and the policymakers all are here to look for this common cause of establishing a robust and a continuous supply chain. So coming back to the statistics for Haryana, 4.78 has been utilized during 2021, which is planned to be enhanced to about another 4.96. Another 4.96 in the CBG plants under the Satat scheme and miscellaneous other biomass power projects, CBG plants and ethanol plants to the tune of about 13.76 would be enhanced. So there will be a significant jump as far as ex-situ utilization of paddy straw in Haryana. So 4.78 to additional 13.76 in a span of 1 or 2 years. So let's say 2 years down, we would be in a position to utilize about 27.4 lakh metric tons from Punjab, and Haryana about 18.54 lakh metric tons. But if you just recall the initial figures, there's still a large gap. This only accounts for 2.74 lakh million tons and 2.7 million tons and 1.8 million tons. Cumulatively put together, there is a big gap yet to be filled. We have about close to 20 million tons to be utilized. So that is where lies the potential. The requirement for this gap to be filled is the foremost requirement of a robust supply chain. There's nothing new in it, but there is this slide tries to see the potential for each sector. So paddy straw availability from the farmers, then for raking and baling operations is the next step, which could be taken up by the farmers themselves or the CHCs or the aggregators. So it's not that it's only to be given by farmers. Farmers could be further involved, or if required, they can transfer it to the CHCs or the aggregators. Likewise, the technical issues about moisture content and storage logistics was discussed. This is a very important crucial item, and considering the volume, we need large spaces. So that is where the governments, the state governments and the agriculture department and other departments concerned come into picture, and the village panchayats have a lead role there to provide land for such storage and necessary basic infrastructure for such storage. Thereafter comes the role of manufacturing and the aggregations. So pellets and briquettes, as the demand is from the industries, can be manufactured either in an entrepreneur model by the individuals or through cooperatives. It could be, so the space is wide open.
So all, and in fact the government interventions, and in fact Dr. Kuti also suggested that NTPC is rather working towards it. They are setting up their own plants. They are considering setting up plants, pelletizing plants in their own premises, so that the ready supply is available and the continuous supply is available. Again, getting straw to those plants will be facilitated through this kind of a supply chain. And finally, the end users, the industries, thermal power plants, industry and other power generation plants, bioethanol plants, those are the end users who will be utilizing the pellets and the briquettes. Thermal power plants are the major entities who will consume the paddy straw. Rather, they consume biomass, but paddy straw will be an important component, and it has been now mandated to maximize the paddy straw content in such biomass. And to this effect, besides the budget pronouncement of 2022, even earlier than that, the CAQM had already issued statutory directions which are binding on all. To all the thermal power plants, we have identified 11 thermal power plants because that's because of the jurisdiction that we are in. So we have asked these 11 entities to utilize at least 5 to 10% of biomass of the total requirements of coal for co-firing. And the table would give you the figures. So we have just made a rough assessment of what is the requirement, what is the annual requirement of biomass, and obviously through biomass, the paddy straw. So cumulatively in these 11 power plants, you see the individual figures there, but I'll just read out. It's 25.42 lakh million metric tons, and that too, this is at, the calculations are based on a 5% requirement at 60% PLF, which is a reasonable figure to be seen, to assume. But with technology upgradations and the trials that the NTPC has been carrying out, it has been established beyond doubt that there are no technical concerns in straightaway co-firing biomass in the boilers there. And accordingly, this 5% can easily go up to 10, and of course, torrefication provides you a bigger window of, a larger window of greater utilization. And with upgrades, of course, that would be possible, but that's a long lead. To start with, we can immediately start co-firing of biomass in the thermal power plants and also industrial boilers. So that is another facilitator. Earlier on, we were focusing on thermal power plants, which is the biggest chunk, but industrial boilers also have this potential. So, but now if we just see, the requirement per se is 2.5 million tons, against which the existing contracts are only for 1.48. So, but we have learned that now the contract management has been, the exercise has been taken up in earnest, and now the tenders are either awarded or just in the state of award, or they are already in process. So about 1.2 million ton, so or 12 lakh tons has been tendered for. So that still says that only 13 lakh metric tons, and these tenders, mind you, are not only for annual basis. These could be long term also. So still there's a big gap on what the requirement of the total requirement of the power plants is, and the tenders have been floated so far. If we come to the actuals, while the statutory direction is to co-fire 5%, and that obviously the requirement will come to about 25.42, against which we have just managed about 1631 tons in the power plants, which is a bit of a sorry state. There could be reasons for delays, for technical, some technical upgrades, some management decisions, some procurement decisions, but the directions were issued last September, so it's
it's close to about 10 months. So after the directions were issued, since 1st January 22, we have just been able to fire 1631, and if you see, obviously the bulk of it comes from NTPC fire power plants. So this is an earnest request to all the power plant operators here, and also those who are not here, to please step up, make all efforts to get to the target, at least to the minimum baseline levels that have been statutorily ordered for, which is also a budget pronouncement, and it has a statutory ramification. Coming to other than power plants. So this is just a perspective. We have 14 NCR districts of Haryana, 8 in Uttar Pradesh, 2 in Rajasthan, and the entire NCT of Delhi. So just, I mean, NCR by itself is a big area you all are aware of. The annual fuel consumption pattern is in just 6 major NCR districts has been depicted here. And if you can see here, so close to about 2 million tons of coal or liquid diesel oil is being consumed in 6 districts alone. If you take the entire NCR, these figures could be further, extrapolated. I don't have the figures right now. These are the major ones, so which we have tried to capture here, based on a CSC's report. So, and we have a statutory direction, as our chairman sir was already pointing out. We already have statutory directions for transforming from coal and non-cleaner use of energies to cleaner energies, and the deadline is 30th September. In some cases, and in some cases, the rest of the cases, in most of the cases is 30th September, primarily where the PNG infrastructure is already available, so that they can transit fast. And in other areas, it's 31st December. In effect, 1st of January onwards, 2023, there shall be a complete ban on coal, LDO, and all other polluting solid liquid fuels. So to that effect, the Commission has come up with a standard list of approved fuels for NCR. And Sir was already mentioning about biomass being adopted as a clean fuel. So now that features prominently in the list of clean fuels, and while PNG infrastructure is already there, PNG is welcome. PNG is definitely in the long range, PNG is better in terms of characteristics, emission characteristics, but nevertheless we have taken into account all considerations, all technical, financial, economic, socio-economic considerations, environmental considerations, taking a balanced view and an optimal view. The biomass fuels have been permitted beyond Delhi. So in the NCR, but beyond Delhi, we have permitted biomass fuels for all industrial applications, and not only industrial, some other commercial applications also, and miscellaneous applications. So this slide just gives you a perspective that 2 million tons of fuel requirements arise only in these 6 districts. If you take the entire NCR, the requirements would be much more. So this is just to brief you all about how immense is the potential of use of biomass. And in the regions of Haryana and Punjab, paddy straw dominates the biomass, which is not being managed otherwise. Hence, there's a direct correlation there of a fruitful utilization of paddy straw. So, we have certain facilitators or statutory directions to this effect, which I have mentioned about in bits and pieces. But these are the statutory directions. These can be referred to on our website also for details. But I'll tell you just briefly about what the directions mean. So this was the direction 17.921, wherein I was talking about, wherein the thermal power plants, 11 thermal power plants, and of course the biomass mission talks about the power plants in the entire country. But the CAQM's jurisdiction
from that perspective, it has been directions were issued to these 11 power plants to mandatorily co-fire biomass. Then the direction dated 4th February 22, it talked about a complete switch over to PNG or biomass fuels. Earlier on it was only PNG, so this biomass was added so as to give an option. And by 30th/9, beyond the jurisdiction of GNCTD, in some areas we have given a dispensation of 3 months, which I talked about. Then, but this use of biomass which needs to be done in a controlled manner, and hence there is a requirement of technical upgrades and better air pollution control and emission devices. So we have issued standards, and which are definitely achievable based on international experience, based on our own literatures, and based on what the plants are already achieving. Of course, through suitable interventions and technological upgrades and equipments. So this direction dated 17/3/22 deals with the standards for emissions in the industrial processes. There was a concern. There was a CPCB notification which was not permitting any new industry to come up unless it was on PNG in the NCR. So there were a concern that there was representations from various quarters. We considered even that, and even the new industries, those who propose to use biomass, have been permitted. Of course, beyond the Delhi's jurisdiction, beyond the National Capital Territory, but in the NCR, rest of the NCR. And standard, we have already talked about the standard list of approved fuels for various applications. So these are the enablers or facilitators and also statutory requirements which need to be followed up, which need to be scrupulously followed up for management of environment and particularly air quality in the region. And to that effect, paddy straw, I see paddy straw as a great resource for all of us to help mitigate such issues of air pollution and also benefit society, benefit individuals in an economic and from health perspectives. So at the end, what are we looking for? We are looking for 100% paddy straw management and zero farm fires. And I'm sure we'll walk an inch towards this vision and mission through this workshop particularly. And thank you so much for your patience. Thank you so much, sir, for clearing out the entire landscape of paddy straw management, the ground situation, potential, and what is the way forward. May I request now to Shri Sudeep sir felicitate our presenter for the session, Shri Arvind Nautiyal sir. Thank you very much, sir. Now, ladies and gentlemen, thanks for your patient listening and for being with us. We understand a lot of calories have been, worked out for assimilating all the information details which have been shared to you. So it's high time for breaking for lunch. It's 2:10, and because of the available time for resuming the remaining session, we will be breaking for 45 minutes, and we all will assemble back by 2:50. Thank you very much. Thank you, sir. I think the organizing group next exactly now. I'm also not clear. I'll share the details. Just have a lunch.
ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਲੂੰਗੀ ਲੈ ਜਾ कैमरा बंद कर दे प्लेटफॉर्म में है नहीं आगे
15 minutes for making their presentation, followed by 15 minutes of question answer by the group of esteemed guests, so that there may be a positive discussion may take place for the exchange of knowledge and information. We have with us Shri R.K. Dewal sir, Director Technical Commission for Air Quality Management. Will be doing the honor of playing the role of session chair for the purpose of moderation of technical sessions. Now, without taking much time, I will invite our first team comprising of Mr. Prasad Rao Dahapute from Brah Capital to discuss and present upon the topic of market analysis and forecast, financial projections, and FPO methodology. Mr. Prasad Rao. How do you alert the speaker? Yes, I just forgot to mention there will be a ring after a time of 12 minutes just to let you know that you are close to your 15 minutes duration. So all the teams would be cordially requested to please sum up within the given time of 15 minutes so that we may do the justice with the time for the purpose of exchange of different knowledge and information. Mr. Dahapute, please. Good evening, everyone. Could you go live? Sir? Yeah, please. I am Prasad Dahapute, founder and managing director of Brah Capital. Thank you very much, Mission Samad Directorate and NTPC for giving us this opportunity to present it. Since the time is less, I won't take more time on this. Mission Samad, everybody already knows about this. The important thing is this prima facie at what is the 53 MTPA which we are looking at with the calorific value of 3,600 and just valued at 6 rupees per kg kind of the biomass pellets, non-modified. It looks at 39,000-40,000 crore rupees. NTPC, as Director of Operations has said, they would be buying the pellets of 10,000 crore to start with, and that could rise up to 20,000 crore per year. And I think that itself is the most important factor for making this mission more successful. So NTPC, which is the host of this conference, is going to play a major role in this. And the next major role is going to be the FPOs, because without biomass is the secret of our energy, and that's it. Mission Samad's energy. There are multiple things which we look at that, how we look at it. But the most important part is how it helps our farmers. There has been discuss in agri-value chain, and the bottom of that is farmers. And there has been society all across India, but I think Central India and Telangana, which has faced a massive wrath of climate change, and because of that. So this is actually very good for people in Central India, as well as Western India, and parts of North India where biomass is more than enough available. When we look at this, what it could be, if we see this gradually, our projection which I show you, our projection show that it could be the non-modified pellets would be 43,000 crore rupees market by 2022, and modified one, which is going to be the bigger one. This would be largely because the massive biomass that is available is a low quality for biomass, and the only way to make it good for co-firing is torrefication of that biomass. So torrefied pellets will be a larger chunk of the market, should dominate something like 50% of the market share. I'll show you these projections. Direct benefit of these proceeds. We see 75.7 million tons of biomass is required for biomass pellets are required for 5% per annum. If we move to 10%, that would be double of that. This is using the mix of this. We have also the 50% mass loss with a moisture content of 20% in the biomass. And if you go for torrefication, there would be roughly 47.5% of loss in the yield loss in biomass to the pellet conversion.
These are the things. If we consider these two assumptions, then 15,100 crore to 28,500 crore would be the direct benefit to the farmers through the sale of biomass to the pellet plant. Some of the FPOs could go into that, and that could be considered as an incentive. If FPOs do value additions like we are doing the 12 TPD plant near Nagpur for Mauda NTPC, that is our first FPO plant. If we go through that, then I think the value addition for the farmer members through these FPOs or the federation of people, that incentive will be additional 15,000 crore to 28,000 crore. If they go for the tarification, the incentive will be 28,000 crore. So Mission Summer definitely is going to be the biggest kind of mission for reducing the carbon footprint of our coal-fired power stations. But more important, it's phenomenally good for our MSMEs. I'll come to the MSMEs. But a pellet making sector, which is a non-existing sector, or which is a sector something like 3,000, 4,000 crore right now, is going to be the 1.2 trillion rupees or 1,20,000 kind of a sector within next 10 years. And that's largely because of Mission Summer. So this mission is going to empower not only MSMEs, they are going to empower farmers also. The MSME numbers I'll give you the next thing. So biomass available, we have our own NITI Aayog, MNRE, they have done 620 MTP of biomass generated. Some of the other figures, the Shakti Foundation has done more detailed analysis, 570 million. CSC estimate, that is one which is really good. And I think TIFAC's survey of 662 districts, that is also pretty good. We have this data. And our estimate is actually little larger than this because a lot of biomass which is literally burned for no reason. If we collect this biomass and we manage this biomass and storage this biomass, I think we should go to 250 MTP. A lot of bagasse is available in Western Maharashtra, and similar amount of bagasse would be available in Western Maharashtra. These two are very developed kind of areas, and most of the kitchens there are fired on LPG. So because of that, the women are not interested in firing their chula with bagasse. And that bagasse is collected. I mean, we have done this with a couple of chagri units for 20,000 tons per annum kind of contracts. If that is considered, then bagasse will be the largest available thing, followed by the rice straw, and the third would be the cotton stock. And then soybean stock and other things are there, including chana, black gram, all those things together. This is commercial use of biomass. I think 2 to 4 rupees per kg should be available. All types of biomass, pulses and oil seeds. The biomass will be costlier, but again, this is a 2% or 3% kind of ash content, and calorific value is something like 4,000 kilocalories per kilo. So that is the advantage. That's why the rice straw or something would be very, very cheap, whereas bagasse will be in the middle, and then oil seeds biomass will be the costliest. Technologies, I think somebody is going to cover this non-torrefied technology and torrefied technology, so I am going to skip this. But to be precisely what my job is here to look at these economic value added parts. So economic value added part, we can see that simply NTPC is going to drive this mission, and thanks to the better rate they offer, I think 20% return on equity on this for the MSMEs as well as the FPO kind of plants is absolutely possible. Non-torrefied, if you have complete back-to-back biomass available at 2 rupees per kilo, and you go at say 6.5 rupees per kilo initially, even that gives the 20% return on equity. Now here the some kind of subsidies have been considered, and loan guarantees have been considered in this model, which are right now dependent on the Minister of Agriculture extending that. If that is not there, then the return on equity is lower, or otherwise then this becomes 8 rupees per kg for the non-torrefied pellets. And then what is the 9 rupees per kg we are talking? Without any subsidy or anything, that would be 11 rupees per kg for 100 TPD kind of torrefied or non-torrefied pellets. Non-torrefied pellets have started the mission. So right now this is very, very small capacity, 1.5 million tons per annum kind of capacity is available. Whereas briquettes capacity is very high, which is 3 to 4 times of this. But we have not considered briquettes. What we are right now, we are just taking the global capacity of that. And what we are going to define is actually whatever the world has in the pellets manufacturing right now, that we are going to add up over a period of next 5 years. So this capacity addition is going to be huge. The biggest challenge that we are going to face is the equipment thing, which is our equipment makers are really
micro and small enterprises, there's not so someone who is even mid-sized. That could be one thing, but we have multiple of them available, so I think initially we should sell to until 15 to 30 million tons per annum. Thereafter, I think these people themselves will be converted into mid-sized enterprises, so on equipment side we are not much concerned. Torrefied pellets, since rice straw, which is 2,500 kilocalories per kg, it doesn't conform to CA norms, so since the regulator doesn't permit that, automatically that all will be converted and blended and will be non-torrefied pellets only. So that one, and part of the bagasse, which is that straw and the fiber that creates some problems, again that is going to be. So since the most available resource, biomass, and the second most available biomass, they will drive the torrefication industry. Plus, since the 20% higher calorific value, NTPC is ready to pay 20% more for that. So torrefication is the most important part of driving this Samarth mission. And that's going to see the biggest jump 2024 onwards, and thereafter I think it's going to grow at say 15-20%. The machines and other things, I think other people are going to talk on that, so I skip it. What is our role? I think we have a network of 164 FPOs in this country. So this is going to drive the income of small and marginal farmers. 86.2% of the farmers in this country, they are marginal. Basically, the land holding is less than 2.5 acres, 2.5 hectares. I have to see that correctly. But from these small farmers, we can collect 144 MTP of biomass, and that's the most important part of it. Other who are really good farmers, they may have 100 million tons of biomass, but they will negotiate very hard with you. So how we collect this collection of the biomass and the management of this biomass, including storage of that, can be done through only FPOs. Because they're scattered, there's a 1 acre, 2 acre, 3 acre, and max 4-5 acres. So this can be done in aggregation of 1,000 farmers at the FPO level. It's an institutional way of doing business. Ministry of Agriculture is spending huge amount of money on this, and there are some 5,000 crore scheme going on for 10,000 FPOs. So that can be converged with this mission Samarth, and it could be a very successful. This is how we work on mechanism of FPOs and possible partnership of FPOs. We are talking with some of those players. But really 5 FPOs and those 6,000-7,000 farmers for a 100 TPD plant, we can actually collect and manage to store around 20 to 25,000 tons of biomass, and that makes your plant operate at 80 to 85% of capacity. Today, everybody is complaining there is no biomass. How mission Samarth is possible? The honest answer to that is you all have set up the sugar mills without talking to sugar cane farmers. No sugar mill in this country has been ever set up without having minimum 20,000 sugar cane farmers. But we are going into the pellet making without talking to a single farmer who has 2 to 3 tons of biomass available at his farm. Second thing is farmers are like kings. They are not nauker kind of thing. Anybody who doesn't want to be nauker of anyone, he becomes a farmer. So if you tell him that, yeah, okay, did it, he will say that you come and take it, otherwise I'll burn it. That's the attitude of farmer. Farmer is not a slave of anyone, and that's what everybody should remember. So FPO mechanism is a very different mechanism. We do all the business with our farmers with due respect. Because of that, I end up traveling 21 days a month, but that is working very good for us. This partnership of FPOs, and especially 100 TPD plant which needs 5 FPOs, that could ensure your plant operating for 200 days or so, and that's how it works. This is the FPO model, FPO shredder, and how we work. I think that is something which we have covered. Most of these things we talked since I was asked to focus on this. So, 100 TPD plant with semi-automatic kind of thing, 7 to 9 crore rupees. Capital expenditure would be 7 to 9 crore, 3 to 4 crore. And 2 crore rupees of additional working capital if you go through the FPO mechanism. Then if you go with this and you say the 8 rupees, 8 rupees per kg kind of pellets, then for non-torrefied, you are around 50% of return on equity that any micro or small enterprise can earn.
Since it goes to 7 to 9 crore, it won't be a micro, it will be a small enterprise. And capital employed return is also 30%, so basically the whole payback period or even non-target pellet at 11 rupees comes to 3.3 years or even could be as less as 36 months. This is what we have seen is the 33,000 per ton kind of the pellet making in our assumption. More questions we can take. Sales will come from 25 crore rupees to 30 crore rupees depending what you sell. And this is what could be for torrefied, which is a little higher on that, but I think same kind of thing would be done if we consider 10 rupees or 10.5 rupees of selling price. Transportation is not a big deal because all those people who need ash, they transport your pellets. This is what we are. I think I'll not focus more on this. We have a network of 550,000 farmers. We have 32 FPOs which are owned by through our group companies, Soil Agri India Producer Company. These FPCs, including NTPC or Renewable, is 51% owned by Soil Agri FPC. And other we have a network of 164 FPCs and all that. We are even in Northeast. We are also working as a transaction advisor to Mahatma Phule Renewable Energy Corporation, Government of Maharashtra. And we are setting up 1600 TPD capacity for Mahape. I think they will be talking to NTPC separately. So I should not talk on behalf of Government of Maharashtra agency. How this looks at, this is how the MSME's turnover is going to rise. It's going to be huge, 43,000 crore, non-tarifed, 78,000 crore. So the non-existent sector right now is going to be 1.2 trillion rupees. Farmers' income, 36,000 crore rupees will go to farmers directly. Incentives and dividends and other income that will come to the FPO Federation or incentive from the farmers, 6,000 crore. So I think 2032, we can see farmers getting roughly 42,000 crore rupees. We have taken the escalation factor of 5% in all these estimates. What we need grants. We need capital grant to make it cheaper. Ministry of Power should bring in some kind of CFA rather than working with MNRE. I think Ministry of Power should come directly on this. Summer day product SBI has launched it, but I think it needs to be a little more refined. But infra-NBFC should come in a big way, so that just like the Satat biogas plant, this should also be coming up forward. And then I think the first and foremost, those all power companies that need it, they should have some CSR fund for enhancing participation of farmers, for ensuring that enough of biomass is available to the pellet making. So CSR of power utilities, especially central cities, CPSs, and even other large private sector power enterprises, that would be a very important part of that. And that's it. Thank you very much. Thank you for answering. Right now, you have some plans in the Western. We just completed our bidding process. I think it is going to be completed on Tuesday. We have received 2 confirmed bids for Nagpur, which is Moda NTPC intentionally, and Solapur we have 40% from that, which is the 2 one. So 3 plants of 100 TPD size we have in plans. To back up the biomass for all these 3 plants, we have done a network of 30 FPOs. This is only in the state of Maharashtra. Others, Noida, we are working with NTPC and others, but we are not forming any plan in Western UP or this Northern Haryana. These are the 3 only which are. How is your model FPOs? They aggregate and they store and they run the machines? Right, sir. Yes, we support FPOs. We invest in FPOs and we set up a FPO level shredder small pelletization plant. That first pilot we are doing near Nagpur model, and that model we are replicating in 80 FPOs. If you give them financial assistance for shredder and all, do you give them financial assistance for shredder? Or We give equity participation to the FPOs. Only FPO can invest in FPOs, so we give to our mother FPO. The name is Soil Agri India Producer. It's a small FPO, but we are starting with the first. Even the one which is in Gautam Nagar, we are given them 3 lakh rupees of equity assistance right now, and we give our commitment to them is 15 lakh for the share. how did you get back your money? We get back our money, we have our models, but I think since Soil Agri owns 51%, we don't need it. It's like
NTPC with Biomass. How we get money from NTPC with Biomass? We get money from our own subsidy. Mr. Prasad, in your presentation you have written that biomass price will be 2 to 4 rupees per active level. So this biomass you are talking about in baled form? This is in baled form or this is just at field? At field. At field. So collection, baling cost is extra. Collection cost is 1 rupee. Okay. So collection cost is 1 rupee. Now we can do the full model. And then conversion cost? Conversion cost is not much, it goes to 1.5, including capital. Do you have any plans to have, Mr. Prasad, this side? Okay. Yeah. Oh, sorry. Do you have any plans to replicate it in Punjab, Haryana, Western UP? Yes, sir, we're talking to Hisar right now. Huh? My sister is in law, yes, so we'll be working in Hisar also. थोड़ा जल्दी करा देते हैं. आप capital assistance दे दो, मैं कल कर रहे और orders are your capital assistance. मैं तो मालूम नहीं हूँ, my भाभी is from Hisar and my wife is from Western UP. आप बुलाए, मैं तो यही कहूँ. How much money you are looking for? How much money you are looking from NTPC? NTPC वो कुछ CSR कर ले, सही लेवल तो हम काम करेंगे. No, how much you are looking for? I should be 20-25 crores. 25 crores. इनको प्रायोरिटी साथ इश्यू है तो they can come through NABED. NABED is a very good network of, I think around 5 years. We are looking for a model that you have integrated in Maharashtra. The same model without CSR, why it cannot be done out here? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इतनी बड़ा करते हैं. You want some CSR for the machines? CSR is not required for that. The awareness campaign needs to be done at the FPO level. आप नागपुर पुणे में प्रोग्राम करने में फायदा नहीं होगा. ब्लॉक लेवल पे करना पड़ेगा और किसान का पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए. 200 किसान आने चाहिए. एक गांव से 2-3 आने चाहिए. You want basically awareness programs at block level? वो FPO के थ्रू कर सकते हैं. वो कर लो आपका काम हो जाएगा. 50 talukas around Nagpur Moda and 30 talukas around Hodki Surabaya. We are in this area also. In this area में उसी को रिप्लीट करते हैं. यहाँ से तो हमने राजनीति के एग्री का APC का प्रपोजल मिशन समूह को सबमिट कर दिया है 8 जून को by email and by hand. ठीक. Sir. Yes, please. सर मेरा नाम विजय स्वरान है और मेरी सालमियत पे सर एग्रीमेंट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड. मैं भी सेम प्रोसेस पे ही वर्क कर रहा हूँ सर. हमने भी एक चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसके थ्रू हम फार्मर से पराली कलेक्ट करते हैं और हमने भी लगाया हुआ है सर बायोमास प्लान. तो ये आप जो टेंडर के लिए बोल रहे हो सर, पिछले 2 साल से हम टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं लगातार. पिछली बार किया तो भी सर ये टोरिफिकेशन नॉन टोरिफिकेशन वाला बीच में गया था एजेंडा. अब की बार फिर अप्लाई किया सर. अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक कोरेंडम 3 उन्होंने हमारे पास भेजा था मेल के थ्रू HPGCL हरियाणा वालों ने. तो उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि देयर इज नो टोरिफिकेशन प्लांट इन इंडिया. तो हम 5% अनटोरिफाइड यूज करेंगे. तो हमने फिर उनके पास मेल के थ्रू मतलब रिप्लाई मांगा कि सर अनटोरिफाइड के लिए क्या प्रोसेस होगा. तो थोड़े दिन बाद रिप्लाई आता है कि सर नहीं हम तो टोरिफाइड ही लेंगे. तो सर ये जो है ना सर इसके ऊपर थोड़ा बताएं. आपका सवाल सही है लेकिन देखिए उनको पराली जलाना आई मीन यू नो द इश्यूज आई हैव गिवन द गाइडलाइंस फ्रॉम CAQ. तो वो बंधे हुए हैं कि 50% तो आपको पराली डालनी चाहिए. यस सर. ये जो 50% का रिजर्वेशन है तो उसके कारण आपका टैरिफ वैल्यू 3600 होगा नहीं. बट टॉरिफिकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन. हमने प्रेजेंटेशन में बोला कि राइस इज द मोस्ट अवेलेबल सरप्लस बायोमास. ओके, सरप्लस बायोमास इंपॉर्टेंट होता है. बायोमास तो बिलियन टन भी होगा. हमारे एस्टिमेट में 700 का है. बिलियन टन भी हो सकता है, नहीं हो सकती. बिलियन टन का प्रोडक्शन होता है ग्रेन्स और बाकी सारे फूड आइटम्स का. तो बायोमास भी उतना होगा 1 का RPR करेंगे तो रेसिपी टू प्रोडक्शन रेशियो. इसका सही जवाब देना है तो वो जो 50% पराली उन्होंने क्या कि लोग जलाते इसीलिए किया होगा. हाँ सर 50% पराली कंज्यूम करते हैं सर उसके अंदर. तो आप 2 TPH की कैपेसिटी या 1 TPH की टॉरिफिकेशन कैपेसिटी डालते हैं आप क्वालिफाई हो जाएंगे. HPGS का क्या होता है हमको पता है स्टेट मेजरमेंट कैसे करती है. और आई थिंक आपका एक्सपीरियंस आप मिशन समझ डायरेक्टर के साथ शेयर कीजिए. देवते के करके सर हमारे एफपीओ ने टोरिफिकेशन के प्लांट के ऊपर भी ट्राई किया था. एक सेटअप हमने लगाया था जिसमें टोरिफाई करने की कोशिश की थी बट उसमें एक्सीलेटर केक ज्यादा है
हमने एक चैम्बर क्रिएट किया था जहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे एंड कंटिन्यूअस फ्लो कर रहे थे, बट थोड़ी बहुत भी अगर लीकेज हो जाता है वहाँ पे या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है तो सडनली फायर पकड़ रहा है, तो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं कई टेक्निकल ऑक्सीजन आ रहा है आपके इसमें, सिंपल सा इशू है, आप निशान बायोमेट्रिक से बात कीजिए, बाकी टेक्नोलॉजी वाले लोग आने वाले हैं, दे विल आंसर योर क्वेश्चंस, लेकिन ऑक्सीजन जरूर आ रहा है आपके इसमें, इसीलिए फायर करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यस सर। एचपीसीएल ने कभी भी नॉन क्वालिफाइड के लिए नहीं किया, उन्होंने क्वालिफाइड के लिए किया है। उसका कारण था एक तो हमारे पास ट्यूब मिल है पानी का, दूसरा एससीसी चाइना के हमारे यमुनानगर हिसाब है, हमें सेट हो राइट सर, तो मैंने आपका आधा जवाब तो मैंने दे दिया। थैंक यू। ठीक है सर, आइए प्लीज। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर, जो हम ऑल इंडिया के टेंडर्स निकालते हैं, कोई पीपीसीएल निकालता है, कोई एचपीसीएल निकालता है, कोई एनटीपीसी निकालता है, कोई निकालता है, ये इनका एक सेट पैटर्न क्यों नहीं होता कि इतनी ही ईएमडी होगी सबकी? तो कोई कहता है कि मुझे इतनी ईएमडी चाहिए, कोई कहता है मुझे इतनी ईएमडी चाहिए, कोई कहता है मुझे वो चाहिए, कोई कहता। अब एक आदमी तो पागल होता है, वो 4000 पेज का वो पढ़ते पढ़ते ही थक जाता है, वो क्या वो सबकी अलग-अलग डाल देते हो आप। एक सेट चाहिए फार्मूला, की इस फार्मूले पर सारा काम होगा। जैसे मिशन डायरेक्टरेट में मॉडल परचेज एग्रीमेंट आपने एक मॉडल डाला है, वो मुझे पसंद है, जो मॉडल डाला है, मॉडल टेंडर नोटिस भी मैंने वो पढ़ दिया है, मॉडल टेंडर नोटिफिकेशन, वो ठीक है, लेकिन कोई करता नहीं है उस पे काम। ये मैंने नाक साथ अभी भी 2 साल के टेंडर निकल रहे हैं सर, अभी भी 2 साल के टेंडर आए हैं, 4 दिन पहले 2 साल का टेंडर आया है, आपने 7 साल की नोटिफिकेशन निकाली हुई है। नाक साथ इज आंसरिंग योर क्वेश्चंस। हेलो, I can't see कौन बात किया था क्वेश्चन? हाँ वो है। अच्छा, नहीं देखिए, ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में तो ये गाइडलाइन दिया हुआ है कि ये 7 साल का होना चाहिए और 7 साल के हिसाब से इशू होना चाहिए। क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी तो अपना प्लान का हिसाब से चेंज होगा। बात ही नहीं कर रहे सर, हम कहते हैं ईएमडी की, कि हम ईएमडी इतनी लेंगे, इतने टन पर इतनी ईएमडी लेंगे, इतने टन पर इतनी ईएमडी लेंगे सर, टेंडर की ईएमडी है। ये एक्चुअली मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में गाइडलाइंस दिया हुआ है एंड विद इन दैट क्वांटिटी तो जिसकी जितनी 5% रिक्वायरमेंट होगी वो उतना ही लेगा ना, उस पर तो ज्यादा वो जाएगा ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि ये हमारे उसमें नहीं है, हमारी बिजली का खर्चा बढ़ जाता है। सब में ईएमडी अलग अलग है, कोई तो 10 लाख की ईएमडी मांगता है, कोई लाख की ईएमडी मांगता है, 5 लाख की ईएमडी मांगता है। अब हरियाणा ने निकाला है, उसमें कोई ईएमडी नहीं है। देखिए एक मिनट, हरियाणा और पंजाब और पीएम एनसीआर रीजन के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए ये तो थोड़ा अलग, वो तो गवर्नमेंट डायरेक्टिव है, उसी को फॉलो करना है, दैट इज सेपरेट, वो तो गवर्नमेंट डायरेक्टिव है, उससे इमेज तो करनी है। सर ये ट्राई की तरह एक इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बना देते कि जो गाइड करे सबको? एक जैसे ट्राई है हमारे, सारी गाइडलाइंस सेट करती है, ऐसे ही हमारी एक नोडल एजेंसी हो जो सेट करे कि ये थर्मल प्लांट या ये जो बीपीसीएल है, जो एचपीसीएल है, जो यूपीएचसीएल है, वो इसी हिसाब से ही टेंडर निकाल सकते हैं। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपका इशू हम लोग सुन ले रहे हैं, हम लोग इसको डिस्कस करें तो फिर टेक अप। अभी बरवाड़ा राखी पाएगी थर्मल पावर प्लांट का टेंडर निकला है, उसमें हमने नॉन क्वालिफाइड का भरा है, जबकि वो जितने को नॉन क्वालिफाइड और निकाल देते हैं क्वालिफाइड के लिए। क्वालिफाइड में एक दो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो हर बार वो भरते हैं और वो माल सप्लाई नहीं कर पाते और उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते, उसकी वजह से सारे वेंडर आउट हो जाते हैं, उसकी वजह से सारे वेंडर आउट हो जाते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं कुरुक्षेत्र में हूं, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। आपका पॉइंट नोटेड है, वी विल चेक इट। ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ये मैं अभी एनटीपीसी 49 कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहां भी था, नोएडा में भी था, मैं एनटीपीसी में ऑलरेडी सप्लाई अभी भी दे रहा हूँ, एचटीपीसी हथुआगंज अभी भी सप्लाई है, बट 6 महीने तक पेमेंट नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ आप लोग सुनते हो ऊपर जाके पेमेंट का क्यों नहीं है, ये फिर वो तो होनी चाहिए ना, फार्मर को पेमेंट कहाँ से लेंगे, हम 6 महीने पेमेंट करेंगे। सुनिए, पेमेंट में तो उसमें दिया हुआ है कि पेमेंट पीरियड, एनटीपीसी में तो पेमेंट पीरियड फिक्स है दिया हुआ है, उसका अंदर पेमेंट होना चाहिए। अगर 7 डेज के बाद कितने महीने की पेमेंट आ रही है, एक मिनट सुन लीजिए, वो उस प्लान से आपको टेकअप करना है। हो सकता है कि जो पेपर सबमिट किया है
वो पेपर्स में कुछ कमी होगा। नॉर्मली यही होता है पेपर साल भर से मैं एनटीपीसी में सप्लाई दे रहा हूं तो उसमें मेरे अपने पेपर कंप्लीट कैसे हो गया? अरे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्टिकुलर इनवॉइस सबमिट किया है उसी में कुछ कमी हो सकता है, अदरवाइज कोई कारण नहीं बनता। आप एक काम कीजिए, वो स्पेसिफिक इशू लेके आपने कम्युनिकेशन दीजिए, हम लोग देखेंगे। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, समय की बाध्यता के चलते हम शायद ये अब तो समय आपको कम हो जाएगा, ऐसी बात तो आप सभी से लोग हैं, आप अपना जो इशू है ना, आप एक मेल पे डालिए। आप एक मेल पे डाल दीजिए, हम लोग देख लेंगे, हम आपको जरूर रेस्पॉन्स करेंगे। मैं थक चुका हूँ आप लोगों का एनटीपीसी में मांगे। नहीं आप ऐसे तक पहुंच चुके हैं तो आप देते रहिए, ठीक है ना? आप एक मेल डाल दीजिए, हम लोग उस पेज को चेक कर लेंगे, ठीक है? सभी एस्टीम गेस्ट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको रजिस्ट्रेशन किट के साथ एक फीडबैक फॉर्म भी दिया गया है और ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके कंसर्न, आपके फीडबैक आप देना चाहते हैं उस फॉर्म में पाएंगे, आप लोग एक्सप्लिसिटली मेंशन कीजिए ताकि कोई जी। तो जैसे सभी जानते हैं कि पंजाब में पैडी सबसे ज़्यादा है और वेस्टेज भी यही है सबसे ज़्यादा पराली का, लेकिन पंजाब से पहले क्यों नहीं लेती है एनटीपीसी? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मोस्टली प्लांट्स हैं एनटीपीसी के वो यूपी हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, इस एरिया में है, लेकिन जो एनटीपीसी पंजाब से पहले नहीं लेती, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो लोकली मैन्युफैक्चरर है वो 300 किलोमीटर में रहता है सर, वो अपनी पीढ़ी कम डालता है तो उसको प्रेफर किया जाता है, लेकिन बाकी जो मैन्युफैक्चरर है वाले को कैसे मैच करना, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपने जब अपने सवाल के जवाब खुद ही दे दिया, जो टेंडरिंग के रूप से जाते हैं तो उसमें जो डिस्कवर होता है प्राइस, एनटीपीसी उसी प्राइस में ही तो खरीद सकता है। नहीं एलवन को सभी मैच नहीं कर पाएंगे ना सर, कोई 900 किलोमीटर में बैठा है और कोई 300 किलोमीटर से इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि पंजाब में पैडी से जो करेक्ट बनते हैं वो यूपी में जाएंगे। पंजाब हरियाणा में भी जो पावर स्टेशन हैं उसको डिस्कस करेंगे बाद में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुदीप नाथ सर से कि प्रसाद जी ने जो एक प्रेजेंटेशन हमारे बीच दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर elaborating about the attitude methodology for utilization. I think you have rightly struck the chord with the audience. There was a very warm response from the audience side, especially for the first session, sir. That was so overwhelming. So I request Sudeep sir to please felicitate Prasad ji for his wonderful presentation. As the next presenter, I will request from Team SPI for presenting upon the topic of financial assistance for biomass sector, bankers perspective. Mr. Pradeep from SPI. हाँ नमस्कार। सबसे पहले मैं मिशन डायरेक्टर सुदीप नाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं दिल्ली हेड ऑफिस बैठता हूँ और मिशन डायरेक्टर के साथ में हम लोग पिछले 3 महीने से पॉलिसी बनाने का काम कर रहे हैं।
और इसके बारे में स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर भी इशू किया है, जिसका विस्तृत से जानकारी मैं आगे दूंगा। लेकिन दो चीज़ें मैं, जो सुबह से प्रेजेंटेशन चल रहा है काफ़ी टेक्निकल और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इन इश्यूज़ पे हम लोग मिशन के साथ में बात कर रहे हैं और एक मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे मैं अलॉन्ग विद मिशन डायरेक्टर की टीम के साथ में काम कर रहे हैं कि ताकि जब ब्रांचेस में प्रपोजल जाए, क्योंकि आप ये समझिए कि स्टेट बैंक की अपनी 1200 ब्रांच हैं जो पूरे भारत में फैली हुई हैं एसएमई फाइनेंसिंग में, और ऐसे ही दूसरे नेशनलाइज बैंकों की होगी। हर आदमी हर क्षेत्र में इतना वो नहीं हो सकता है कि वो हर इंडस्ट्री को समझे। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एक मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और फाइनेंशियल मॉडल हो। फाइनेंशियल मॉडल मैंने सबमिट किया था और मुझे ये जानकारी मिली है कि शायद सेक्रेटरी एनर्जी एंड एनटीपीसी के उच्च अधिकारियों ने उस फाइनेंशियल मॉडल को स्वीकार कर लिया है। अभी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट आना बाकी है। तो मैं सुबह से जर्नली टेक्निकल सेशन है तो अंग्रेजी में बात हो रही थी, तो मैं एक तो पैसे की भाषा बोलूंगा जो सभी को समझ में आती है और अपनी मातृभाषा बोलूंगा हिंदी। तो सब्जेक्ट पे जाने से पहले मैं 2 मिनट लूंगा कि स्टेट बैंक और एमएसएमई, ये एमएसएमई क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान है 31%, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 37%, एक्सपोर्ट में 50%, और ये अनुमानित किया जाता है कि करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। जो 6 करोड़ से अधिक हमारे माइक्रो और एमएसएमई उद्योग हैं। दुर्भाग्यवश ये भी अनुमानित है कि इनमें से 95% लोग किसी भी फॉर्मल सेक्टर या बैंकिंग चैनल से लोन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास में जैसे उद्योग आधार या बेसिक डॉक्यूमेंट भी नहीं होते हैं। पिछले वर्षों में काफी प्रयास किया गया है सिंप्लीफिकेशन का, और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक लोग फॉर्मल सेक्टर में आएंगे ताकि उनको बैंक व्यवस्था का लाभ मिल सके लोन के रूप में। मैं यहाँ पर 2 तरीके से बात करूंगा। एक तो नॉर्मल बैंकर, मैं नॉर्मल बैंकर नहीं हूँ। हमारे डिपार्टमेंट की स्थापना 1967 में की गई थी इंजीनियरों के द्वारा, क्योंकि ये पाया गया था कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, जो आप लोग हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, पैलेट क्या है, ब्रिकेट क्या है। अगर आप किसी बैंकर से पूछेंगे तो वो शायद ये भी ना बता पाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। रिंग डायर मशीन ले या फ्लैट डायर मशीन ले, कैलोरीफिक वैल्यू का क्या अंतर पड़ेगा। तो और उद्यमी से यही अपेक्षा की जाती है कि उसको अपने कार्य के बारे में पता हो। लेकिन जब आप बैंक जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि साहब आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, करंट रेशियो क्या होगा, डीएससीआर क्या होगा। यानी कि दोनों की भाषा बोलने में और समझने में अंतर है, उद्यमी की भाषा और बैंकर की भाषा। तो ये माना गया कि एक डिपार्टमेंट की आवश्यकता है जो कि एक सेतु का काम करे, कि एंटरप्रेन्योर की भाषा को बैंकर को समझाए और बैंक वाले को। वो डिपार्टमेंट को आज मैं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 1978 में इस डिपार्टमेंट में 300 इंजीनियरों की भर्ती की गई थी, जिसमें से 80% आईआईटी के थे, और इनका 4 साल का अनुभव था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने के लिए। क्योंकि सिर्फ डिग्री से आपको ज्ञान नहीं मिलता है कि धरती पे क्या हो रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है। तो मेरा 90% कार्य और समय एंटरप्रेन्योर के बीच में ही व्यतीत करता है कि कितना जमीन चाहिएगी, कितना शेड की आवश्यकता है, कौन से अप्रूवल्स आपको लगेंगे, कौन सी मशीनरी सप्लाई ठीक है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है। और हम लोग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मैंने दोबारा से शुरू किया है, जिसमें मैं 45 से ज्यादा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूटों में गवर्नमेंट के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ में जो बच्चे अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं उनकी मदद कर रहा हूं। अभी तक मैं करीब 100 प्रोग्राम ऐसे कर चुका हूं। बैंक अधिकारियों को मैं ट्रेनिंग देता हूं इंडस्ट्रियल फाइनेंस में। और 2010 से मैं व्यक्तिगत रूप से 1-to-1 एंटरप्रेन्योर काउंसलिंग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें अब तक 2500 से अधिक एंटरप्रेन्योर लाभान्वित हो चुके हैं। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य से बात करूंगा इस स्कीम के बारे में, जो मेरा पिछले 3 महीनों की अंडरस्टैंडिंग है। कहाँ मुझे लग रहा है कि फंडिंग में गैप आएगा। स्कीम तो आ चुकी है, पर जैसे किसी ने कहा उसमें मेरे को लगता है कि और सुधार किया जा सकता है, ताकि जो एंड यूजर यानी कि आप हैं उनको लोन मिलने में आसानी हो।
ये स्टेट बैंक की फिगर है 31/2022 को करीब 2,83,000 करोड़ रुपए की हमारी आउटस्टैंडिंग थी एमएसएमई सेक्टर को। मेरा अपना अनुमान है कि ये फिगर 4 लाख करोड़ से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटी है, मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज है या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो क्लासीफाई नहीं हुई है। मेरे देखे वो भी एमएसएमई ही है। ये एक और बहुत कंप्लेन सभी बैंकों के अगेंस्ट होती है कि सर हम बैंक जाते हैं कि तो हमसे कोलेट्रल की बात की जाती है, और इसमें संभवतः कुछ हद तक सच्चाई भी है। लेकिन एक फिगर मैं देना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में मुद्रा लोन में 33 करोड़ लाभार्थी सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोन दिया गया है, और 18.5 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव, जिसमें ये भी हो गया, नए लोन ले लिए। ये सिर्फ मुद्रा लोन की फिगर है। CGTMSE वो स्कीम है जिसके अंतर्गत 2 करोड़ तक का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कवर किया जाता है सभी बैंकों के द्वारा, और 1 करोड़ तक का रिटेल ट्रेड किया जाता है। पिछले 2 वर्षों में मैं भारत सरकार के साथ, स्टेट बैंक के साथ मिलकर हम लोगों ने ये 6-7 स्कीम में, पिछले 2 साल की बोल रहा हूं, कोरोना काल की, इथेनॉल की फाइनेंसिंग से मैं 2004 से जुड़ा हुआ हूं, जब 5% की ब्लेंडिंग का सरकार लेके आई थी। मैंने एक डिटेल स्टडी करी थी उस समय, और मेरा ये विचार था कि स्टैंड अलोन इथेनॉल प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। उसके कारण थे मेरे अपने, और वो सिद्ध भी ठीक हुए कि जिन लोगों ने उस समय इथेनॉल लगाया वो लगभग सारे प्लांट एनपीए हो गए। अब 2020 की बात करते हैं। आज की तारीख में हम लोग इतने कन्विंस्ड हैं कि इथेनॉल फाइनेंसिंग में हम सिर्फ, अगर आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, तो सिर्फ 5% आपकी कैपिटल पे हम फाइनेंस कर रहे हैं। आप एक इमेजिन कीजिए, एक पब्लिक सेक्टर बैंक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट में आपको 95 करोड़ का लोन दे रहा है। शर्त उसमें ये है 5% इक्विटी की ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होना चाहिए। आरोग्यम की स्कीम अभी 30 जून को खत्म हुई है। इसमें 100 करोड़ तक का लोन हमने दिया है बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए हुए। रूफटॉप सोलर मैं 2004 से काम कर रहा था। बहुत एफिशिएंसी कम थी, सेलों की वाइबिलिटी नहीं आती थी, बैंक 1.75 का DSCR मांगता था। अब 10 साल बाद हम लोग 15 साल का रिपेमेंट कर रहे हैं और इसका 1.20 की DSCR ले रहे हैं। इसके अंदर भी कम से कम हमने 500 मेगावाट से ज्यादा का फाइनेंस किया है। कंप्रेस बायोगैस और बायोमास पैलेट ये समर स्कीम के अंतर्गत आए हैं, और स्टेट बैंक ने इन तीनों को कंबाइन करके एक स्कीम निकाली है जिसकी डिटेल मैं आपको अगले स्लाइड पे दिखाऊंगा। और ये इथेनॉल उस 95% के अलावा है जो मैंने आपको जिक्र किया। जनरली ऐसा एंटरप्रेन्योर 3 चीजें पूछी जाती है कि सर मुझे कितना लोन मिल जाएगा, मुझे को कितना अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे इक्विटी या कैपिटल लानी पड़ेगी, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, और कोलेटरल सिक्योरिटी मेरे को क्या देनी पड़ेगी। तो मैंने ये 17 पेज का सर्कुलर एक पेज में कंप्रेस कर दिया है। जो लोग बायोमास पैलेट या ब्रिकेट NTPC या ऑयल मार्केटिंग कंपनी या प्राइवेट प्लेयर्स को, डाबर है, हिंदुस्तान लीवर है, रिलायंस है, अडानी है, सभी लोग, क्योंकि कानूनी बाध्यता है जिसकी चर्चा हो चुकी है या आने वाले समय में है, तो लोग तैयार कर रहे हैं, अपनी टेस्टिंग चल रही है। तो जिन लोगों के पास में भी इस तरह की सप्लाई अरेंजमेंट है उसको हम फाइनेंस करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आज आपके पास टेंडर हो, ये कभी नहीं होता है। जब आप उद्योग लगाते हो ऐसा नहीं होता है पहले दिन ही आपको ऑर्डर मिल जाए। यहाँ तो NTPC का सपोर्ट है तो हो सकता है आप ऑर्डर एडवांस में ले लो, तो ये कोई बाध्यता नहीं है। रिपेमेंट पीरियड इसमें रखा गया है 10 साल के करीब रखा गया है रिपेमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट EBLR ये RBI के द्वारा हर महीने निर्धारित होता है। अभी स्टेट बैंक का EBLR 7.35% है, जो 2 महीने पहले 6.55 था, क्योंकि 90% रेपो रेट RBI ने बढ़ाया है, तो वो हमने 7.35। और फिर रेटिंग निकालते हैं हम लोग किसी भी लोन को देते समय, चाहे वो 1 लाख का लोन हो चाहे 1,000 करोड़ का लोन हो। तो रेटिंग है स्टेट बैंक SB1 से SB10, 1 बेस्ट रेटिंग होती है, जैसे AAA कंपनी हो गई उस तरह की। तो उसके आधार पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्प्रेड बोलते हैं, यानी EBR के ऊपर मैं आपसे 1.75 इंटरेस्ट लूंगा,
या 5.6 लूंगा, जो आपकी अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ के आधार पर तय किया जाएगा, जो एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन मैकेनिज्म है जिसमें 3 चीजें देखी जाती हैं। कौन प्रमोटर है, उनकी टीम क्या है, अनुभव क्या है, उसके बाद में किस इंडस्ट्री, किस बिजनेस में आप काम करने जा रहे हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ग्लोबल फैक्टर्स क्या है, और तीसरा फाइनेंशियल मॉडल। इन तीनों का सम्मिश्रण जो कम से कम 70-80 पॉइंटों पे 1-2 नंबर होते हैं और ऑब्जेक्टिव होता है ये। जब एक चीज और है, जब हम CGTMSE की कवर की बात करते हैं तो हमको यानी प्रत्येक बैंक को एक इंश्योरेंस अमाउंट CGTMSE जो फंड है, जो ट्रस्ट है, जो सिडबी चलाता है, उसको रेमिट करना पड़ता है कोलेटरल नहीं देने के एवज में, कि अगर इन केस कोई यूनिट खराब होता है तो हमको उसका 65 से 85% डिपेंड करता है कि बॉरोवर कौन है, नॉर्थ ईस्ट का है, SC/ST है, वुमन है या जर्नल है। तो ये पैसा बैंक के पास नहीं जाता है, आपसे हम ड्राफ्ट या RTGS लेंगे और इमीडिएटली रेमिट कर देंगे CGTMSE पे, क्योंकि इस बात को लेके काफी ग्राउंड लेवल पे भ्रम है कि साहब ये 2 रुपए 70 पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। यानी कि अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देंगे, जैसे CGTMSE में परमिटेड है, तो आपको वो रेमिटेंस वो यहां पर कॉस्ट मैंने नहीं की है। अच्छा, 2 करोड़ तक के लोन CGTMSE में कवर्ड है। 2 करोड़ के ऊपर में ये लिखा गया है कि ये केस टू केस कमेटी, जो सेंसिंग कमेटी है, वो डिसाइड करेगी। और अगर टाई अप है आपका बेचने का, लिटरली जैसे NTPC या कोई और पावर प्लांट है, L&T है, टाटा है, अडानी है, या किसी और आप उसको सप्लायर को दे रहे हो, हल्दीराम को दे रहे हो, या जो रेगुलेटर है, तो उस केस में वो वेव कर सकती है। अच्छा, टर्म लोन, जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो टर्म लोन की बात कर रहा हूं, यानी कि जब कैपिटल कॉस्ट जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल आता है, तो उसको हम लोग 70% तक आपको लोन दे सकते हैं। नॉर्मली हम 66% यानी एक तिहाई आपको लाना पड़ता है, 2 तिहाई बैंक देता है टर्म लोन को, अनलेस वो गवर्नमेंट स्कीम है कि 25% मार्जिन स्पेसिफाइड है। ठीक है, मैं जनरल टर्म लोन की बात कर रहा हूं। और मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल 25% रहता है। एक चीज और, ये बैंकों में जाते हैं, डिले का चर्चा होती है, तो इसको दूर करने के लिए एक स्कीम अनाउंस की गई थी, PSB लोन इन 59 मिनट्स। आप वहां जो यूनिट 3 साल से कार्य कर रही हैं, उनको किसी भी बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस साइट पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, आपके द्वारा चुनी गई बैंक और आपके द्वारा चुनी गई ब्रांच में वो पूरा अप्रेजल करके भेज दिया जाएगा और आपको रियल टाइम में एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो 3 साल के एग्जिस्टिंग में है। इसमें GST रिटर्न, आपका बैंक स्टेटमेंट 1 साल का, आपका सेल टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स है नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड, ये ऑटो फैच होता है। स्टेट बैंक ने सर्कुलर निकाला है कि अगर इन चारों में कोई गलती पाई भी गई सब्सिक्वेंटली, तो उस अधिकारी या किसी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये साइट से फैच करता है। तो जो लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं, मेरी एडवाइस है आप इसमें जाएं, ताकि आपको बैंक जाने की अभी जरूरत ना पड़े 3 साल वाले, अदरवाइज आप अपने नॉर्मल SME ब्रांच जा सकते हैं। जब DPR के लिए जो हम लोग अप्रेस करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो मेरा NTPC मिशन की टीम के साथ में हुआ था और नाग साहब ने इसको स्वीकार किया और हम लोग एक जॉइंट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट या जो भी पेपर आप बोलते हैं, बैंक जाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3 चीजों के ऊपर में आधारित होती है कि आप लोग कौन है, आपकी टीम क्या है, आपका क्या अनुभव है, आपका कितना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरा, जो मैंने पिछले 3 महीनों में समझा है, 10-12 एंटरप्रेन्योर से बात हुई है, 4-5 में प्लांट गया हूं, आज की तारीख में भी टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति है। प्लांट 50 लाख से लेके 10 करोड़ तक कोट किए जा रहे हैं सेल कैपेसिटी के। काफी तो आपके पंजाब के हैं, राजकोट के सप्लायर हैं और चाइना के प्लांट है, यूरोप के प्लांट है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया है NTPC के टीम से कि आप लोग टेक्निकल हो, आप बेहतर समझते हो, तो क्या हम इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, जैसे हमने कि जब सोलर फाइनेंस कर रहे थे तो हमने टॉप 10 सप्लायर की लिस्ट बनाई थी उसकी,
तो इस तरह अगर हम कर दें कि भाई, तो एक जो बैंक में होता है उसको ये लगता है कि वो हर प्रोजेक्ट को टाइम नहीं लगेगा, समय कम लगेगा, कि ये हमारे भाई 10 प्लांट सप्लायर हैं जो कि एनटीपीसी की लिस्ट में है, तो इनको ये टेक्नोलॉजी नहीं देखने की जरूरत है, उनका क्या सपोर्ट सिस्टम है वगैरह, यानी कि प्लांट पे ड्यू डिलिजेंस हो गई। दूसरा, अप्रूवल के बारे में भी, क्योंकि ये अभी तक जो ब्रिगेड के प्लांट चल रहे हैं, ये बहुत ही छोटे पैमाने पे चल रहे हैं, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे लोगों ने अपने लगा रखी है, और जितने प्लांट वालों से मैंने पूछा वो कहते हैं जी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी स्टैच्यूरी उसकी, ऐसा संभव नहीं है। तो जब आप बैंक जाएंगे तो एक बड़ा ऑब्जेक्शन हो जाएगा, तो एक स्टैच्यूरी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको पॉल्यूशन से एनओसी लेना पड़ता है, लैंड यूज का चेंज है, मैप अप्रूवल है, अगर इसकी एक लिस्ट एनटीपीसी बना दे तो हम जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें लगा देंगे, और उसके आधार पर मैं ये कोशिश करूंगा कि स्टेट बैंक एक सर्कुलर निकाल दे पैलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिससे कि बैंक का भी फायदा होगा लोन के रूप में, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको हर बार अपना समय नहीं व्यतीत करना पड़ेगा। एक बात और जो मेरे इनिशियल मतभेद थे, तो जब हमारी डिस्कशन हुआ तो मिशन के लोगों का ये था कि सर बायोमास अवेलेबिलिटी 1 से 1.5 महीने होती है, तो 10 साढ़े 10 महीने का वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हमें करना चाहिए। जो मैं उस दिन भी अपनी बात पे कायम था, आज भी कायम हूं, कि एक तो ऐसा बैंकिंग इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल 3 महीने से ज्यादा थंब रूल पे फाइनेंस होती नहीं है। दूसरी, पैसे से ज्यादा जो वन मैन टाइप ऑफ शो है, जो 1 करोड़ या 2 करोड़ का प्लांट लगा रहा है, उसको 10 करोड़ की वर्किंग कैपिटल पे स्पेस की, मेंटेनेंस की, कलेक्शन की प्रॉब्लम आएगी, जो एफपीओ इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन, है ना। इसमें आई एम वेरी बुलिश, यानी कि मैं पर्सनली बहुत इससे कन्विंस हूं कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देश और उसके लिए तो है, जो सारी बातें हुई है। ऐसा बैंकर भी मुझे इसमें कोई रिस्क नहीं लगता है, अगर 2-3 चीजें जो मैंने जिक्र करी एनटीपीसी इसमें अगर वो कर दे, क्योंकि अगर आपको देखिए क्या होता है, 3 चीजें होती हैं कि आप क्या रॉ मटेरियल कलेक्ट कर पाएंगे, क्या आप उस चीज को बना पाओगे, बैंकर क्या देखता है, और या आप बेच के पैसा ले पाओगे। तो यहाँ डिमांड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 लाख टन पर डे की रिक्वायरमेंट है, वेट आपके टेंडर के थ्रू डिस्कवर्ड है। तो इसमें एक ही चीज हो गई कि भाई प्लांट की जो टेक्नोलॉजी, उसका प्राइस और कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। थैंक यू वेरी मच। यहां पर मेरे चंडीगढ़ के मित्र भी, राजेश यू आर देयर, ये मेरे काउंटर पार्ट है जो चंडीगढ़ में यहीं बैठते हैं हेड ऑफिस में, जो मैं डिपार्टमेंट देखता हूं दिल्ली में। तो आप राजेश से कनेक्ट कर सकते हैं, जो लोकल एंटरप्रेन्योर, मैं समझता हूं कि ज्यादातर चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब के मित्र यहाँ हैं, तो राजेश अपना नंबर यहाँ से शेयर कर लेगा, और ये हेड ऑफिस में बैठते हैं कंसल्टेंसी सेल में, इज अ चीफ मैनेजर। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले हमको जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप इसको टेस्ट करो तो इन्हीं के पास आने वाला है आपका प्लांट। प्लीज, अब आप कोई सवाल पूछना चाहे तो। हाँ जी, हाँ जी, काफी अच्छा बताया, और जो मेन पॉइंट था वो भी आया था कहीं, कोशिश की। मैं 2 मिनट में मैं बात कर रहा हूँ। उनसे मैंने स्वयं एक सवाल किया था कि जो आप कह रहे हैं 1.5 महीने का पीरियड, एक्चुअली वो 1.5 महीने का पीरियड नहीं होता, 1 महीना ही होता है, नंबर 1। नंबर 2, इस 1 महीने में हमको 18 महीने का माल स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि जितना माल स्टोर करेंगे उसमें 10, 30, 25% वेस्टेज भी होती है। तो आप कहते हैं कि 3 महीने से ज्यादा वर्किंग कैपिटल की फाइनेंस आप लोग नहीं करते, तो मुझे 18 महीने का जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर मैं 100 टन का प्लांट लगा रहा हूँ तो मुझे 50, 60, 70 करोड़ रुपया चाहिए। तो उसके लिए पहले तो जो आप 25% हमारी मार्जिन मनी मांगते हैं, और उसके अलावा जो 3 महीने का दे रहे हैं उसके लिए क्या कोलेटरल मांगेंगे, पहले तो सवाल ये है। और दूसरा, ये जो 18 महीने वाला है, अगर आप कर ही नहीं सकते तो फिर इसका जब तक सोल्यूशन नहीं आ जाता तो मैन्युफैक्चरर क्या करे उस समय तक? 18 महीने की किसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपने सुना सर, जो पैडी स्ट्रॉ है वो 1 ही महीना मिलता है, अगर मुझे उसको 12 महीने चलाना है तो मुझे 15-16 महीने का स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ खराब भी होगा। तो आप क्वेश्चन को प्लीज काइंडली समझें। तो ये प्रॉब्लम एक, ये तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई है, जो वर्किंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं
जो जितनी बेल्स इकट्ठी करके रखने में जो प्रॉब्लम है और कितना खर्चा होता है और कितनी वो मिलती है, ये जो पिलफरेज है उसकी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। तो जो 15-16 महीने का ये जो रिक्वायरमेंट का गैप है, ये गैप आप इसको समझना पड़ेगा आपको और किसी को इसको एड्रेस करना पड़ेगा कि ये गैप कैसे मीट होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो कैसे आगे आएगा, कहां से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगा, या फिर वो वही जो बहुत बड़े लोग हैं वही कर पाएंगे, फिर ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर तो जो एसएमईज में आते हैं या एमएसएमई में आते हैं वो तो 70 करोड़ नहीं लगा सकते ना जी। थैंक यू। चीजें आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि ये पहली एग्री बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, ऐसी मैं एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं एमएसएमई को करता हूं, लेकिन जो मेरी कॉमन सेंस है कि शुगर मिल है, ये सीजनल इंडस्ट्री है और वहां पर पीक और नॉन पीक का कॉन्सेप्ट है। शुगर भी आप देखिए, गन्ना भी जो पराई होती है वो अक्टूबर से फरवरी तक होती है, जब वर्किंग कैपिटल पीक पे होती है और उसके बाद में वो जुलाई अगस्त में जीरो हो जाती है। और ऐसी दसों इंडस्ट्री का मैं उदाहरण दे सकता हूं। ये पहला इंडस्ट्री नहीं है जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, और जहां पर एग्रीकल्चर होता है वहां सिर्फ सीजनल ही होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने इसमें आपने स्टोरेज और उसकी बात उठाई। स्टोरेज की मैंने कहा कि इसीलिए हम लोग शुरू से एनटीपीसी को यही कह रहे हैं कि सर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई संस्था बीच में आनी पड़ेगी जो एग्रीकल्चर पे सस्ते रेटों में गवर्नमेंट सब्सिडी होती है इंटरेस्ट रेट वगैरह में, और वो मैनेज करेंगे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक और बात आपके सवाल से हटके मैं, क्योंकि सीनियर लोग भी हैं एनटीपीसी के और मिनिस्ट्री से भी, कि जो हमने प्राइस अपने बिजनेस मॉडल में लिया है वो ₹1.25 से ₹6 तक वेरी कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि ₹1.25 में एक फैक्ट्री है, यहाँ पर कोई ₹4 दिखा रहा है, ₹6 दिखा रहा है। और बड़ा प्लांट इसमें इसलिए मैं नहीं फोर्स कर रहा हूँ कि वायबल होगा, क्योंकि मैंने कम से कम 10 प्लांट बायोमास के 2005 से लेकर 2010 में राजस्थान के जितने बायोमास सक्सेसफुल चल रहे हैं वो मेरे अप्रेस किए हुए हैं, जहां पर रिक्वायरमेंट 70 से 80 टन प्रति वर्ष की होती है 10 मेगावाट प्लांट की, है ना। और वहां पर भी यही होता है कि वो अगर एडिशनल पैसा चाहिए वो अपना लगाता है। तो ये एक चैलेंज है। बड़ा प्लांट मैं नहीं समझता हूं कि पैलेट में 100 टन से ज्यादा एक लोकेशन पे आएगा। एक बात और मेरे दिमाग में, मेरे मित्र ने अभी एफपीओ से करा था, ये क्लस्टर फाइनेंसिंग की हमने स्कीम स्टेट बैंक में चलाई थी, जो मोरबी में जैसे ये टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स है उसी तरह हमने करीब 25 स्कीमें लगाई थी जब जमुनानगर में ट्रेडर को। अगर आप लोग भी सर कंसीडर कर सकते हैं कि अगर कोई एफबीआई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कि वो 1 लाख टन जैसे इकट्ठा कर सकती है, तो उसके विन सिटी में 10 प्लांट फाइनेंस कर सकते हैं, और उसके लिए स्पेशल स्कीम भी बनाई जा सकती है क्लस्टर फाइनेंस के अंतर्गत। आपको भी क्लैरिटी होगी, एफपीओ को भी क्लैरिटी होगी, एंटरप्रेन्योर को भी क्लैरिटी होगी कि उसको कितना पैसा, और हमको भी ऐसा लेंडर क्लैरिटी होगी। आई एम ओपन टू दैट, वी कैन डिस्कस, आई एम इन दिल्ली ओनली, है ना। तो ये एक मॉडल सोचा जा सकता है और जो शायद वाइबल भी होगा और हैसल फ्री होगा। उसका डिस्कशन चल रहा है। हाँ सर, मैंने थोड़ा मेरा आदमी रहेगा, उसके बाद डिस्कशन चलेगा। हाँ, मैं तो सर वही हूँ, और मेरा तो एड्रेस पूछते हैं सबसे आसान है। जितने पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री धरना देते हैं वो मेरे गेट पे देते हैं, जो आप टीवी पे देखते हैं हम लोग लाइव देखते हैं। संसद बाग, जंतर मंतर। तो और अगर कोई सवाल नहीं है तो या तो मैंने बहुत अच्छा बोला या बहुत खराब बोला, किसी को समझा, ताली बजा दीजिए आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी और राजेश जी। मैं समझता हूँ कि आपने एक बहुत ही मूलभूत जो जरूरत होती है फाइनेंसिंग की, उस पर जो कंडेंस फॉर्म में अपना प्रेजेंटेशन दिया है, इट वाज रियली क्वाइट इंसाइटफुल एंड वेरी यूजफुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि प्रदीप जी का फेलिसिटेशन एक मोमेंट करें। हमारी अगली प्रेजेंट टीम एनटीपीसी दार्वी पावर स्टेशन से है, जो आप सभी के बीच बायोमास को फायरिंग का जो दार्वी का फायर प्लांट का अनुभव था वो आप सबसे साझा करेंगे। क्या टेक्निकलिटीज हैंडल की गई हैं फॉर मेकिंग दोज अरेंजमेंट्स फॉर को फायरिंग ऑफ बायोमास बाय ब्लेंडिंग विद द कोल। सो दैट टीम कंप्राइजेस ऑफ मिस्टर विवेक सिंघल एंड मिस्टर भरत अरुण फ्रॉम एनटीपीसी दार्वी।
Good afternoon, everyone. Myself Vivek Singhal, along with my colleague Mr. Bharat Barun. In the paper, I will present biomass co-firing experience of NTPC Dadri. As NTPC Dadri was the first pilot project for co-firing of biomass. In this presentation, I will highlight the basic of background of the biomass co-firing, what was the need of firing of the biomass, and I will share the NTPC Dadri experience. As our power plants are designed for the 100% coal firing, so we did some minor modifications in our system, in our software part or in our hardware also. So I will discuss in detail also, and finally the environmental benefits. Now Mr. Bharat will take over. Thank you, Vivek sir. So during November 2016, NCR experienced its worst smoke scenario. So at that time, the AQI level were more than 2000 scale. This smoke scenario repeats every year during the pre-winter times. When studies were done what were the reasons for this heavy smoke, then it was found that the main reason for the scenario was the burning of agro residue in the neighboring states. And the studies also reveal that one way to counter this smoke scenario can be by feeding this agro residue to the thermal power plants, because thermal power plants are equipped with very efficient these equipments like ESPs, which reduces the environmental harms caused by burning this agro waste. In 2017, NTPC established the pilot project in NTPC Dadri for co-firing of pellet with coal. For this, a team was constituted which comprised of people from CCOS, CC Engineering, and our research wing, Netra, and people from site were also involved. Various brainstorming sessions were conducted, and they came out with the specification of pellets to be used at station and the operational procedure for precautionary safety measures. We at NTPC Dadri have 6 units. 4 units are of 210 megawatt and 2 units are of 500 megawatt. So at first we decided to co-fire 100 metric ton of pellets in 4th unit, 1 mill of 4th unit of 210 megawatt, and with 5% blending of pellet with coal. Then the blending was increased to 7.5%, and later 10% blending was done with coal, and feeding was done to 1 mill. Later, when we gained success and gained confidence, then we fed this blended coal to all the running mills. These are the technical specifications of biomass pellets we are receiving at station. These are the material, shape, diameter, length. The moisture content we can see is less than 8.5%, and we reject the sample with the moisture content more than 14%. The ash content is also very low. And here we can see the GCV is almost equivalent to the GCV of coal. So we impose penalty for the samples which have GCV lower than 2800, and we incentivize for higher GCVs. We have a variable price mechanism for deciding the price. This we have erected a platform for sample collection, and this is the infrared moisture analyzer with which we can instantly calculate the percentage composition of moisture in the biomass sample. When we receive the sample, the first calculation is done for the size and moisture on which the rejection and acceptance of the sample is done. Later we calculate the GCV. In the first stage, when testing was being done at our research wing, then the lab analysis was done, and proximate analysis and ultimate analysis was carried out. So here is the report of proximate analysis. Here we can see when 100% coal is burned, then the fixed carbon is significantly high in comparison to the 100% biomass combustion. So when blending is done, the fixed carbon reduces, and thereby the carbon dioxide emission is reduced. Similar is the case with ash. The ash content also reduces, but the volatile matter, here we can see when we increases the blending, the volatile matter increases. In ultimate analysis, we can see the nitrogen and sulfur content of 100% coal sample is much higher
than that of 100% biomass, that is pure biomass. When we do blending, then the NOx and SOx emission reduces significantly. So devolatilization is a process in which the volatile matter of a substance evolves. So when devolatilization of biomass starts at 200 degrees centigrade and it completes at 360 degrees centigrade, while in coal sample it starts at 300 degrees centigrade and it ends at 380 degrees centigrade. So the coal with blended biomass burns comparatively faster than pure coal sample. Biomass test firing was first started in September 2017 in 3 phases. We have already discussed that 3 phases were, first the blending was done with 5% pellet and 1 mill of unit 4 was fed. Later it was increased to 10% blending and 1 mill of unit 4 was fed. And once we got success, all the operational mills were fed with 10% blended coal. Based on our experiences, the system for handling and storage were designed. Now, 4 December 2018 was a proud day for NTPC Dadri because this was the day when we started commercial co-firing at our station. But up till now, we were feeding only in 210 megawatt units of our station. On 16th January 2020, another milestone was achieved when we started feeding co-firing in 500 megawatt units of our station. When we received the first 2 trucks at our station, then those trucks were manually unloaded, sacks were manually unloaded and blending was done at our yard. Those blended coal was fed to the emergency hoppers using payloaders, but after that we started directly feeding the biomass to the emergency hoppers, and these emergency hoppers are equipped with rack and pinion gates, and below this emergency hopper are the vibro feeders which are equipped with VFD. So we can feed the biomass in a regulated manner on our conveyors and blending is done. To comply with the biomass policy, we have to handle lots of tons of biomass every day. Manually doing this is a very tedious process and very difficult to do. So we have installed the facility of truck tippling at our station, through which we can unload complete truck in one go. And in coming future we are in process of installing one more truck tippler, and 2 silos for storing this biomass. The capacity of these silos would be 750 tons. That the unloaded biomass would travel to the silos through bucket elevators, and we would reclaim this stored biomass using these belt feeders, and existing CSP conveyors would be used for blending. This scheme would automate the whole system and manual intervention would be minimized, and this scheme would be implemented in pan NTPC. Here is the blending process. When we do not have any rack at our track hopper or wagon tippler, then we reclaim coal from yard using our stacker reclaimer through these conveyors. And these emergency hoppers are mounted over the conveyor. We feed the biomass and the blending is done at the conveyor itself. This blended coal is transferred to the transfer point and thus transferred to coal bunker. But when we have rack, then the coal transfers to the conveyor to the transfer point, and we only feed biomass through emergency hopper, and blending is done at transfer point, and the blended coal is thus transferred to coal bunkers. These pictures are of initial days when we did not had any shade or storing space and truck tippler. Then manual unloading of these sacks were to be done by the laborers. And payloader used to drag this biomass to the emergency hoppers. This is the picture of blended coal with biomass. Now further slides will be taken by Vivek sir. Thank you. Thank you, Bharat. As our power plant was designed for the 100% coal firing, so in our existing system we did some minor modifications also. Like in our, as you can see in this diagram, this is the photo of a bunker. This is a diagram of a ball mill which we use in the thermal power plant. This is the photo of bunker where we store the fuel and biomass.
This is the feeder where we, from feeder we control the feed rate of the fuel, and this is the mill where we grind the fuel. And that grinded fuel is being carried by using high pressure and high temperature air to the furnace, so by using 4 pipes. So these high pressure and high temperature air comes from these two areas. These are the hot air, this is the cold air. And by mixing this air, that temperature, high pressure and high temperature air comes and carries the, remove the moisture from the fuel, and it carries it to the furnace. So our initial mill inlet temperature in the thermal power plant is normally maintained around 280 to 300 degrees centigrade. But as Mr. Bharat explained, the BM content in our biomass is high. So our initial philosophy of maintaining the temperature is based on the mill outlet temperature. So we had to change our philosophy, and when we are feeding the biomass, then we control the temperature by using mill inlet temperature. As we cannot go beyond 195 degrees centigrade in any case, because there are chances of fire due to high BM content. So we provided a biomass mode. That when we make this biomass mode on, then automatically all the permissible protection related to biomass will come in service. Also, we provided an additional protection of hot air gate closing at 195 degrees centigrade. So whenever if by any mistake temperature goes beyond 195 degrees centigrade, then hot air gate will automatically close, and it will help in controlling the temperature. Also, PA head of pressure, this is the air which is carrying the fuel to the furnace. Its pressure is also maintained slightly higher than the normal. Normal value is around 800 mm water column. Also, we did a minor modification in mill inerting system also. Mill inerting system is commissioned in all the thermal power plants. Mill inerting system is basically the steam lines which is used in case of emergency, in case of any fire in the mill, and we use that steam line to quench the fire. So normally the mill inerting system is manual. So whenever there is a fire, we have to open that valve manually, and then we can quench the fire. So because there are chances of fire in case of biomass is high, so we provided a motorized inerting valve in the downstream of mano valve also, so that that mano valve is being kept in open condition, and motorized inerting valve will be in closed condition. So for if the temperature goes high, will come in control room. So if there is any fire in any individual pipe, then the operator can take action accordingly. Also, we provided an orifice in the mill inerting common line to control the pressure. These are the normal mill parameters which are maintained when we are feeding biomass. Mill inlet temperature is maintained around 180 degrees centigrade. In any case, we do not go beyond 190 degrees centigrade. Mill outlet temperature is normally maintained 60 to 65 degrees. And pre-start and post-shutdown purging is necessary. Purging is a normal process which is followed in all thermal power plants, but in case of biomass it becomes mandatory. Also, all the parameters related to mill, like mill inlet temperature, mill outlet temperature, mill current, and mill DP, these parameters also need to be monitored continuously if we are firing the biomass, and in initial stage it is very mandatory. Also, role of local operator is also becomes very important in case of biomass firing. As we have provided a feeder view glass from where the local operator can see if the biomass is coming or not, and also operator should be deployed at local for initial stages of biomass firing in case of any fire hazard. Also, flue gas temperature in superior zone, APH flue gas outlet temperature, these parameters also should be monitored continuously. This is a slip which is a normally coal handling plant provided to a main plant operation in case of biomass feeding. So in this slip we can see the biomass feeding quantity. Here we have written unit 5F. It means that the biomass is being fed in the unit 5 of mill Farakka, and that is the bunker level, from which bunker level to which bunker level biomass feeding has been done. So from that operation people gets the approximate idea that how much time it will take to biomass to come into the feeder, and accordingly he can take the biomass mode and make on. And when the local operator informs to the control room that biomass has started coming, then we make this biomass mode on. When we are making that biomass mode on, that means ultimately we are any protection and permission related to biomass are coming in service. So there is certain procedure which is being followed for the biomass mode. This is the biomass mode mimic, and this is the additional button we have provided for the biomass firing.
is biomass mode on, this is biomass mode off. When the 100% coal firing is being on, then biomass mode off will be in service. And if biomass mode off is in service, it means that mill outlet temperature philosophy is being followed. And when the biomass has started coming, then the biomass mode will be made on, and it will be controlled according to inlet temperature. So when we want to take biomass into mode on, then we take all the Chairperson manual, reduce the inlet temperature, and we put the biomass mode on, and accordingly we take that biomass. Similar same procedure is followed for biomass mode making off. So in case of fire, there is a standard operating procedure which is being followed in all the thermal power plants. There is only one difference for biomass, that we have provided motorized valve, which we can also open in case of fire. So these are the photos of biomass receipt and unloading for the initial days when we used to receive the biomass in sacks, and the manual unloading was used to be done. And initially we did not have any storage facility. So and as biomass is hygroscopic, it absorbs moisture faster. So we developed the covered set for the biomass storage also. And in the future we are developing the silo facility. Recently, at 19 April 2022, we have started firing sludge also in our thermal power plant also. We received around 30 metric ton of torrefied sludge from the Delhi Jal Board, and we received it and we fired it in Unit 4. GCV of that sludge was low. So extrusion temperature was also low, so accordingly we restricted that firing at the blending was restricted up to 5%, and our test firing was very successful, and there was no issues observed in operation, and there was no abnormality was found. Finally, coming to the benefits, as Mr. Bharat explained, that sulfur content in biomass is low. So ultimately we are reducing the cost of our power plants for SOx emission control devices. It is around 18.2 million. We have calculated the prices based on the considering that we are running the 210 megawatt plants at around 100% PLF and continuous 5 months, and 10% blending has been done. So as contained in biomass is low, so ultimately as evacuation and transportation cost will be reduced, and approximately we are saving around 0.7 million per annum. And as the carbon content reduces, the greenhouse gas emission reduction is also will be significantly higher. And there will be benefit for the farmers also for around 1,500 to 2,000 rupees per acre. Also, as there is if we are burning the crop residue in the farms, then we are wasting that energy. So we are recovering that waste energy, and approximately around 1,200 kilowatt hour per ton of energy will be saved by using this biomass co-firing. And there are other benefits like employment opportunity, development of entrepreneurial skills will also be. Thank you. If there is any question. Yes, sir. What is the form of volatile matter in case of non-torrefied, when you use non-torrefied pellets? Sir, if we are maintaining our parameters, then if the volatile metal content is already very high, in the non-tarified also around 67% PM content is there in non-tarified coal also. So if we are burning that about maintaining our parameters around 180 degree temperature is maintained, then there is no harm. And if we are increasing the temperature and VM content is high, then there devolatilization starts. So there are chances that burning can take place in the mill itself or in the coal plant itself. So there are risk increases. So for the safety point of view, we maintain the inlet temperature. So the problem of BM is handled if we are maintaining our temperatures. What I got from your answer is that we will have to maintain the temperature of mill. Yes, mill inlet temperature. Yeah. Outer temperature is automatically lower than the inlet temperature. Pagani di bai di Maintain the temperature of so many extruders. Keep them around 30-40 degrees centigrade. 1 degrees is huge. That can be maintained with the water cooler or something like that. That should not be the problem. Because when we use torrefied pellets, the yield reduces. The previous speaker told that the total yield will reduce. So that will increase the cost. So if you can manage it, that will increase at least by 2 rupees a kg.
That's one. And next, my question is, you fed the pallets along with the coal. You ground them into a mill. Yes, sir. If there is no restriction of the questions, so you ground them, milled them, reduced into very small pieces, and then carried to the furnace. So some of the boilers they use a separate system of putting the biomass from the other channel. You did not use it. You used it as such. Okay. And have you modified the input system for firing the biomass separately with the coal, or you use the existing system? Sir, we are using the existing system. The direct firing of biomass has not been done yet. Yes. सर उसमें क्या है कि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, these are designed for 100%. Okay, if we have our power plants are designed that we have to convert it into coin powders and firing. They are not designed for firing industrial waste as well as the agriculture waste. They both are different kinds of boilers. Usually in Western countries, they fire from the creating the bomb. I do not understand boilers. Second thing is that even our Yes, he wants to reduce it to talcum powder, and my concern is if you want to reduce the size of paddy straw to talcum powder, the energy input ratio will be more than the output ratio. Yes, in this boiler, yes. But my submission to NTPC is thanks for joining this conversation. That sir, why has to answer? I'm a teacher, so one will speak at a time. So my submission to NTPC is that let's start looking for the boilers. No, in this boiler, we can have separate. There are boilers. Yes. There were safe boilers. Yes. They are not actually blocks in this boiler. Yes. Yes. Looking for that. Are they business? Okay. Thank you. We will increase. As an engine, we will increase that. Only 10 paddy straw can be used. Can I ask a question? To me? No. Yes. So myself, G.S. Sandhu, I'm executive engineer and looking after boiler maintenance. I have a few questions. When you reached the 5%, was it during the rainy season or during all seasons you were reached? Because during rainy season you must be knowing that we get very wet coal. And firing this wet coal with 5+% blending at the outlet temperature of 65 degrees would be a problem and lead to choking of the artisanal pipes. So have you tried this in the wet coal, especially at NTPC you are getting a good quality coal as compared to our state test? Sir, in all the seasons? My few questions. First thing I want to know is, secondly, at how many points in the piping you have provided RTD? Pardon? At how many points, at which locations you have provided RTD in the outlet piping, the pulverized PS piping, and how many points you have provided RTD so as to avoid the choking of the pipe? Okay, sir. And have you used continuous blending for how much time continuously? For how much months? Continuously, okay? And one more question was there. Have you used non-tarified also? Yes, I will give the answer. Sir, up to now, we have used non-tarified and tarified coal, both type of coals also, what type of biomass in our power plants. And biomass feeding is being done in all the seasons. Bottleneck comes that biomass is not available at our plants. So normally, our normal procedure is that whenever we receive the biomass, we instantly feed it into the bunkers because it absorbs the moisture, as you have said also. And now the storage of biomass is done in the covered facility so that it does not absorb any more moisture. So it is fed instantly. So suppose if moisture content of coal is high, as you have said that it is wet coal, then problem comes that we can reduce the feeding of the mill. We can reduce the feeding of mill and to increase the mill inlet temperature. So that our problem will come from the efficiency side, that APH will do a separate temperature will increase if we are using the wet coal, but no such problem comes. Yeah, so
दिन 7 यूज करें, सपोज 6 दिन का, बिल हमको बढ़ानी पड़ती है, फिर हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगी अगर हमारा कोल में मॉइस्चर ज्यादा है। और दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अगर मेरे पास कम क्वालिटी क्वांटिटी हो जाती है तो एनटीपीसी के पास भी कम ही रहा है, तो ऑब्वियसली जब मैं इसको कन्वीनियंट होऊंगा, कंडीशंस ऐसी होंगी, तब तो मैं फायर करूंगा, क्योंकि मेरे को वही फायर करना जो मेरे पास है। आज वो गीला आ रहा है तो कह देंगे कि आज मत डालो, अपने पास है ही इतना, ठीक है। वो कंडीशन अलग होगी जब हमें कंटिन्यूस 5% ब्लेंडिंग के साथ फायर करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली फायर करना पड़ेगा, हटाना नहीं पड़ेगा अनलेस देयर इज इमरजेंसी फायरिंग। दूसरी बात कि नॉन टॉरिफाइड में आपका जो आपने फायर किया है, टॉरिफाइड जो आपको मिला है, मैं पढ़ रहा था 22% वोलेटाइल कंटेंट नॉन टॉरिफाइड में आया है। 22% नॉन वोलेटाइल कंटेंट के साथ क्या टॉरिफाइड मिलेगा हमें? मेबी आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मिलता हूँ, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपने जो किया 67% वोलेटाइल मैटर था, टॉरिफाइड के साथ भी 30% के आसपास, इवन इंपोर्टेड कोल में 30% वोलेटाइल मैटर रहते हैं, ठीक है। हमारे जो कोल्स हैं 35% वोलेटाइल मैटर टॉरिफाइड के लिए डिजाइन है मैक्सिमम, क्योंकि जो नॉन टॉरिफाइड है उसमें वोलेटाइल मैटर का ज्यादा कंटेंट पानी की वजह से होता है, तो वो फायर नहीं कैच करेगा। नहीं सर, टॉरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन कैप्सूल्स में हीट करते हैं ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए, ठीक है, कि फायर पकड़े ना, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में जैसे कोल से कोक बनाते हैं वही चीज करते हैं, तो मैक्सिमम नॉन कंबस्टिबल पार्ट निकलता है उसका, कुछ कंबस्टिबल्स निकलते हैं, और जो कंबस्टिबल है तभी उसकी जीसीबी इतनी डाउन नहीं आती, थोड़ी डाउन आती है टॉरिफिकेशन के बाद। तो ये सारी चीजें क्या इसका हमारा कंसर्न है बीइंग स्टेट जेट, क्योंकि जिस पोजीशन पे आपको हम नहीं होते हमें वैसा कोल नहीं मिलता। सर जैसे अभी जो हमारी प्रैक्टिस है, जैसे अभी हमारे पास कम क्वांटिटी में अभी बायोमास रिसीव हो रहा है, इंपोर्टेड कोल भी हमारा फीड हो रहा है, तो नॉर्मली हम लोग Don't worry, you mix 5%, nothing will happen. Okay? Considering कि 5% डालते हैं, वो यूज करना है कंटिन्यूअसली, नहीं 5% लगातार यूज करना है आपने। आपने 1 महीने के लिए यूज किया आपने? For how many times? 1 महीने के लिए यूज किया, more than some you demonstrate. पानी हमारे आपको यूज करो, it's not an issue. We have been doing it 14 sessions. और सर वो रह गया आरटीडी कितने पॉइंट्स पे लगाए आपने? आरटीडी कहीं लगाने आपकी एक लोकेशन में होगा। केवल मिल आपने सर पीसी पाइप में सर एक्चुअल में हमारा चाइनीज बॉयलर है, हमें ओईएम ने कहा है कि आरटीडी तो आपको लगाने पड़ेंगे फायर करने के लिए। वो है एक कंपनी की बात है, वो है हाँ नहीं ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन कितने पॉइंट्स पे लगवाए हैं? अभी in 4 5 at each one point it has been provided. At furnace inlet? Nearest. Nearer to furnace inlet, before 2 meters before nozzle or vent. 2 meters or maybe some 5 to 10 meters also it is there. But it is at one point my intention is to see that choking नहीं है. One is a choking, another part is also it is not burning inside the piping. हाँ कोई बात नहीं. So choking and to avoid the mill inside. So this whatever we are burning, almost many of the times it has been burned. As such, there are no issue. What you said is when the burning, when the biomass is increasing, mill outlet temperature is coming down. Then, when the mill is able to run at 67 tons, we have to reduce the mill loading. Sometimes it is up to 35 tons. So what it is affecting? The capacity of the mill is coming down. What you said is extra mill it needs to be run. All these at the cost of some APC, but the prime motive is we have to burn the biomass. Keeping in that mind, it has been used. Have you tried this biomass in all two mills PBD? Panipat power station. ये तो recommendation for that. कहाँ use करना कहाँ नहीं. Sir, right now we are. There is also recommendation. See, what we are having the what type of mill in that only I can burn. So other I cannot imagine. But for that already instructions have been given, guidelines have been given. उसमें गाइडलाइन दिया गया है, गाइडलाइन आई है कि आपका जो वोलेटाइल मैटर है, क्लोरीफाइड में अगर ऑल मिल में यूज करना है, बिलो 22%, बिलो 22% का इंडस्ट्री बैठती है कि क्या क्लोरीफाइड वोलेटाइल मैटर दे पाएगी, मतलब दे पाएगी, हमने देखा नहीं इतना कम. नहीं सर, recommendation overall volatile matter after blending. Overall volatile matter of the coal after blending. Even without blending in coal, imported coal, our boiler is designed for 30% volatile
टेंडर में 22% है सर, आई कैन शो यू। आप वो नॉर्मल कोल और क्वालिफाइड कोल दोनों को ब्लेंड करने का बात जो सारी ऑर्गेनाइजेशन ने टेंडर निकाला है उसमें ये लिखा है कि 22% क्वालिफाइड नॉट ब्लेंडेड, और अगर ऐसा है तो मिलना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं, इवन 22% जो आप बोल रहे हैं 22% 25 पे मिलता है, 25 ये मिलना पॉसिबल है, ये ऑलरेडी देखा है। दूसरा एक और इसमें जो उन्होंने रेज किया कि क्या बाल एंड ट्यूब मिल में यूज किया है एनटीपीसी ने, बस नहीं रिकमेंडेशन इज देयर, बस जस्ट ये जानना चाह रहे हैं कि आई एम द पर्सन गिव द रिकमेंड हाउ विल आई यूज इट, हमने तो रिकमेंडेशन डाला है, समझ रहे हैं अब नई रिकमेंडेशन आई है बॉल एंड ट्यूब में रिकमेंडेशन में है कि बॉल एंड ट्यूब हाँ 5% और इसमें वो भी था स्लाइड में थी वाइड जो आई है गाइडलाइंस उनके अकॉर्डिंग 5% बाल एंड ट्यूब में या दिस इज वेरी गुड। So is there any problem during operation with biomass fluctuating loads? In state example, we have there is a period of time that we have to reduce the load up to demand, but that is the backing down period. In that case, what provision we have to use is that? we are only letting around 5%. After that, we will not 5%. There is no operational issue at Pallet. No operational issue at Pallet. No issue. So, you are using it at small level. All the operational. All we have tested in after firing biomass all the running units. If outlet temperature is maintained, then there will be no choking. So feeding will be reduced. No. सर अभी बोला 67 टन से 35 टन तक लेके आगे आ रहा है, तो मिल लोडिंग कम करना पड़ता है, कम किया है, कम करना है, इसलिए एक्स्ट्रा जरूरत पड़े तो लेना। सर मिल लोडिंग कम के साथ आपके फैन की लोडिंग करानी पड़ेगी, मार्जिन होने चाहिए, चलो वो ऑपरेशनल इश्यूज है बट बिगर क्या है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया कर रहे हैं ऑपरेशन शुरू करके मिल बोर्ड रेगुलेटरी कमीशन भाई हम एक है आपके ये प्रॉब्लम है, आपको उनको कंसेशन दो, फिर एटीसी को बढ़ाओ। पहले आप यूज करो, फिर हमारे पास अरे हरियाणा के रेगुलेटरी ने तो ये कह दिया कि आपने यूज नहीं कीजिए, परमिशन चलो एक सर और बताना, ये आपका कोई एक्सपीरियंस पैडी स्ट्रा पैलेट्स और नॉन पैडी स्ट्रा पैलेट्स में कोई डिफरेंस ऑब्जर्व किया है? सर ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो कोई डिफरेंस ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ। आपने दोनों यूज किए हैं, नो डिफरेंस? हाँ, नो डिफरेंस। इवन स्लच फायरिंग भी हमने की अभी रिसेंटली, जो रेलीजा बोर्ड से मिला था उसमें भी हमें कोई ऐसा ऑपरेशनल इशू, फायरिंग क्यों ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं परसेंटेज बहुत कम है, 5% 10% ब्लेंडिंग बहुत कम है, उसमें बोला ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, कोई डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं किया। दैट कैन बी बस हमारा थोड़ा एफिशिएंसी लॉस जरूर हो रहा है, क्योंकि हम लोग मिलियन टेम्परेचर कम मेंटेन कर रहे हैं, तो एपीएच का फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा हल्का एफिशिएंसी लॉस ड्यू टू ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, नॉट बिकॉज ऑफ बायोमास, नॉट बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉर co-firing the biomass. Both type pellets are same as per. Yes.
Thank you very much, team NTPC Dadri. Friend, I think for any further query, we may connect one-to-one because for the benefit of the entire audience, probably we have to move forward. Thank you very much. So, thanks team Dadri. I will request Sudeep Nasser to please do the honor for felicitation of both the presenters. Mr. Vivek Singhal and Mr. Bharat, please. Meantime, I request our team from Biofuel to please be ready for making the presentation. Mr. Tushar. Thank you, sir. Well, our next presentation addresses one of the very important aspects of this entire biofuel value chain, that is supply management. Supply chain management, because that is one area which creates the linkages between the farmer and the pellet manufacturer, then between pellet manufacturer and the power plant for the purpose of co-firing of biomass. So we have with us Steve from Biofuel Circle. Mr. Tushar will be making the presentation. Good evening. My name is Tushar. I represent Biofuel Circle. We are an online marketplace for the supply chain of biomass for the biofuel. As we discussed during the day multiple times, that this is a fairly complex supply chain, and this is a fairly unorganized supply chain. A large chunk of this is unorganized. It's our attempt to bring some sort of a formalization to this supply chain and try and see that this whole sector grows with that. So that is our attempt. So I will quickly, so some of the statistics and facts I think we have discussed during the day multiple times. So I will skip them because by now I think we all know very well the extent of challenge that we have and the opportunity that we are looking at. The only thing that I would possibly like to highlight here is a typical scenario that exists in the rural landscape, which is the average land holding of a farmer in India, which is around 2 acres per head, which essentially makes the farmer a very small landholder, and hence the agricultural residue which comes out of the farm is also significantly small, and that is one of the key reasons for the challenge that we face. Because the farmer is small and because his land holding is small, the resources available at the hand of the farmer are also limited. And because of that, the farmers do not have the wherewithal to collect the agricultural residue effectively and supply it to those. One sincere request to all these team guests to please pay attention, because it's a very important topic going to be discussed out. So please, no crosstalks, and please pay full attention to the presenter. I'll try and speed up, sir. So because of this, the farmers have limited resources to collect the waste and supply to those people who either process this or industries who consume this. However, in a scenario where a farmer is able to effectively do this,
We estimate that a farmer's income can be, a farmer's income can be increased by around 8 to 12,000 rupees, which should be, at the current estimate should be around 10% increase. And I think that's a strong enough reason for us to try and see if we can find a solution to this, this scenario. So this is what we saw during the day, during multiple presentations, the in situ and the ex situ treatment and the challenges. So I will not delve much on this except for the key challenges that we see and we've identified. So these are, one is collection mechanism. The second is the transport and logistics available in the rural landscape. And third is market access. So even if there is a farmer, or there are a couple of farmers who have the ability to collect and who possibly also have the ability to transport this, access to the market where they can effectively sell, because one key thing that we need to remember is that the farmer has a very limited window for clearing this waste before he moves on to the next sowing, and in that limited window, if he has access to the market, then he will be able to sell this effectively. So that's one of the things that we need to also look at. There is intent and there is sufficient demonstration of intent in terms of now making this happen by way of policy intervention, by way of even spelling out, as we've been discussing, co-firing in thermal power plants. So there is enough opportunity for people to now see that the burning of the agricultural residue can be reduced or can be eliminated completely. It might take a little while, but there are enough incentives and there are enough policy initiatives available for making that happen. Some of the applications which we see are possible if the agricultural residue is collected and disposed effectively. One is solid biofuels, which is briquettes, pellets. Second is the compressed biogas, which we've been speaking about. Liquid biofuels, 2G ethanol. In the afternoon we just saw that the first 2G ethanol power plant, the refinery, is going live sometime next month or a month after that. Apart from that, biofertilizers, which are also sort of byproducts out of the compressed biogas plants which are coming in. And apart from that, regular biofertilizers and enriched fodder, so which is called silage. So these are a couple of opportunities, or these are a couple of applications that we see that are possible if the agricultural residue is collected and effectively distributed. Obviously, the distribution will have to be based on which is economically most suited and feasible for the participants to get into. This, as we discussed earlier, is something which can significantly enhance the rural economy. This has the possibility of creating a social, environmental and economical impact in the rural landscape. And I think that's a very, very strong motivation for us to try and solve this problem. Our estimate is that a village with around 1,500 acres of land can generate about 75 lakhs of economic activity every year, which is something which should be significant for that landscape. This also gives us an opportunity to circularize the economy, and that is something which should be the ultimate goal for this sector to look at. Creating a circular economy in the rural landscape is something which is in everybody's interest. So, having said this and having looked at the challenges and having now seen the opportunities, what is it that we are trying to do? So, as I said, we are a marketplace. We are the first first marketplace in India, which is a bioenergy marketplace. We have the ability to discover, deal, transact, schedule, deliver, and invoice everything end to end, all the way up to payment and even trade finance. So this is our attempt to essentially enable the journey of agricultural residue from farm to the industry where it is consumed as fuel. All of it at one place, and it's a very complex landscape because the language that a farmer speaks is very different than a language what
and industry will speak. So to bring them at one platform where they can transact with each other, they can deal with each other, they can fulfill each other's needs is something which we are attempting to do. We are also bringing in the element of finance here, so we are also tying up with some NBFCs and banks to see that invoice financing and other financing options are available on the platform, because the flow of transaction is completely visible and transparent on the platform, and that should become one of the major motivators for finance companies and banks to participate here. Our approach is, what we discussed earlier is sort of a cluster-based approach. We call this local markets. A typical local market of about 150 to 200 kilometers of radius with one or two large anchor customers. So say a power plant can be one large anchor biomass customer here. Smaller consumers around that, in that circle, around that anchor customer can bring in additional liquidity to the platform. And then a bunch of processors who supply to these customers, and a large number of farmers, farmer collectives, aggregators, rural enterprises who feed in the biomass to these processors who process and provide. So that's the kind of approach that we look at, and that's what we are trying to implement. We are trying to create around 50 interconnected local markets across the country over the next 2 years' time. What we believe here is, and we've discussed this earlier also, that FPOs or farmer collectives will play an important role here. And what we believe is the farmer collectives have 3 possible opportunities by which they can very easily participate in this. The first and foremost is aggregation of biomass. So, FPOs can deploy resources which they have and get into a mechanism for aggregation of biomass which can be sold. See, the challenge here is people know how to do it. The challenge is, since the number of farmers is very large, the number of transactions that one has to do is very large, and that's where a technology platform like mine can come in handy, because here it becomes very easy. At the click of a button, you can you can complete a transaction, and if it means that the FPO has to deal with 500 farmers or 1,000 farmers, you can do that very easily with the variety of options that a technology platform like ours can provide. So the first option that we see, which FPOs and farmer collectives can get into, is aggregation of biomass. The second option that we see is storages. So we've discussed the seasonality of the biomass, because this is available for a very short period. This is not available around the year, so clearly there is need for storing this, so that this can be provided to the processors, the pellet makers, briquette makers, or the other applications that we looked at. This can be provided to them around the year. So for that, storages, and for an FPO, this is easy. Some land which is not utilized, or which is not tillable at this juncture, if some kind of a weatherproofing structure is created, some kind of fire safety is provided, then this can become a storage entity. And the third one is the FPOs themselves becoming briquette and pellet makers. There are finance schemes available. There are incentives available for FPOs to then participate here, set up their own aggregation mechanism, have their own storage, and make briquettes and pellets. And earlier we saw I think Prasad make a presentation about how FPOs are already doing this. So we believe that this is one of the ways of scaling up significantly, so that more supplies can come in. So these are 3 models that we are looking at and we are actively working. So the natural question then is that what is it that we are doing? Or is this something which is being demonstrated? I'm actually happy that someone before me actually demonstrated this, that they are doing this. However, we've also been working on this. We've just started work on this. We are working along with a foundation called BIF, and we have, this project has been funded by GIZ, which is a partner of MNRE in this. So we are attempting to establish 20 FPOs. So these FPOs are BIF FPOs. BIF has promoted them. We are trying to convert this into enterprises which will deal into agricultural waste,
20 such FPOs are being currently nurtured. We are training them. We are enabling them to participate in this using either of the three mechanisms or three models, either aggregation or storage or briquette making. And we are hoping that this season onwards we will start demonstrating, and these FPOs will start aggregating and supplying biomass to the industries that need that. We did a small pilot to test out our hypothesis. So in a remote area ahead of Nagpur, in a place called Katol, we got one of the FPOs to participate here. Their farmers traded on our platform with the FPO where they supplied shredded biomass. The equipment was provided by the FPO on rent, but they could aggregate cotton waste which was shredded, collected and delivered to briquette makers in that area. So this is something which we've been doing, and this is something which we believe is the way forward. So thank you very much. Thank you. I'm open to questions. So these 20 FPOs in which area are you nurturing? Sir, currently we are focusing on Maharashtra. So these are some districts of Amravati, Nagpur, Yavatmal. We're looking at Pune, Ahmednagar, and Nandurbar and Nashik. So these are the districts where these FPOs exist. Your platform connects the farmers, aggregators, and the briquette manufacturers. Farmers to the FPOs, FPOs to the processors, and processors to the industries. Thank you very much. Thank you, Mr. Tushar, for giving this wonderful presentation and detailing out all the possible work area where you engage as a supply chain manager. Well, I'll require your presence for a moment for the felicitation, please, on stage. May I request Sri Sudeep sir for doing the felicitation for Mr. Tushar for this wonderful presentation and his participation in the workshop. Thank you so much, sir. Well, my sincere request to all esteemed guests to please provide your feedback in the format which has been provided to you in your registration kit, because it's a very valuable input for us for taking things forward in the right direction with the right intent. You can leave your feedback form while leaving this place at the registration counter itself, or our volunteers will collect it from you directly. Secondly, tea will be served shortly in the hall itself, so I think we can continue with the remaining two presentations to utilize the time in a better manner. Now we are moving forward with one of the other important pillar of this entire value chain of biomass, that is the pallet manufacturing group. So now I invite team from Satyajit Agro for presenting upon the topic of pallet manufacturing technologies and challenges. Team Satyajit. Thank you, sir. NTPC के हमारे मेंबर डायरेक्टर साहब सुदीप नाथ साहब, हरियाणा के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, पंजाब सरकार के ऑफिसर्स, जेल कोर्स और अदर स्टॉक। हम सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हमने स्टार्ट किया है अभी 2 साल से मशीन बनाने का, और पहले 20 साल से मैं ब्रिकेट और पैलेट बनाता था। ब्रिकेट और पैलेट का हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस। मेरा परिचय दे दूँ आपको तो मैं मुकेश पटेल,
संजय बायोफ्यूल हमारा जयपुर का प्लांट है पैलेट मैन्युफैक्चरिंग का। अभी हमारा राजकोट में सतीश रिन्यूएबल इंजीनियरिंग मशीन बनाने का प्लांट है, उसमें हम मशीन बनाते हैं। मशीन हमने इसलिए बनाना चालू किया क्योंकि देश को जरूरत थी, एनटीपीसी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट लिया कि भाई पैलेट को, बायोमास को पैलेट बना के पावर प्लांट में जलाया जाए। जो एक्सेस बायोमास था हमारे देश में उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए उसके लिए इंस्टीट्यूट लिया और बायोमास को जलवाने के लिए उन्होंने पहले एडवाइजरी जारी की, उसके बाद में मैंडेटरी किया। मैंडेटरी के बाद में अभी ये सब चालू हुआ है, इसके लिए इसका इंस्टीट्यूट लेकर हमने मशीन बनाया। ये हमारी जो ये मशीन है सत्यजीत की, इसकी खासियत सर ये है कि सबसे चीपेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में पैलेट मैन्युफैक्चरिंग कर देती है। हम धीरे धीरे इसको समझेंगे सर कि हरियाणा पंजाब में ये हमने सुबह से लेकर अभी तक हम समझ ही रहे सारा, ये मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। यहाँ पर पेडी स्टोव, पराली की समस्या है, पराली जलती है, एक्सेस है, सब कुछ हमने देख लिया सुबह से। हम समझेंगे पैलेट क्यों, क्योंकि मैंने अनुभव से ये अभी पाया 2017 से लेकर अभी तक की यात्रा, सबको ये क्वेश्चन होता है ब्रिकेट और पैलेट में पैलेट। तो हमने बहुत सारा एनटीपीसी को भी कहा था 2016-17 में जब इन्होंने ट्रायल किया कि पैलेट नहीं ब्रिकेट ले लो, लेकिन ब्रिकेट भी चलाया, पैलेट भी चलाया। उसके बाद में उन्होंने पता किया कि ब्रिकेट से पैलेट सही है पहले पावर प्लांट के लिए और अदर कोई भी एप्लीकेशन से उसके लिए। मैं मोटा मोटी आपको बताऊं कि पैलेट वाई पैलेट, मैं काफी सारे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर मुझे भी कहते हैं, लेकिन वैसे मुझे जिसको बताना था वो ज़्यादातर वैसे चले गए हैं कि पैलेट जो प्लांट लगाने वाले थे वो वास्तव में उनको समझना चाहिए था कि पैलेट सिर्फ पावर प्लांट के लिए भी नहीं, जो इंडस्ट्रीज है उनको भी हम ब्रिकेट की जगह पैलेट अगर देते हैं तो एक तो पैलेट बनाते हैं तो सिद्धांत ये लागू होता है कि उसको हमें बायोमास को ग्राइंड करना पड़ता है। अब ग्राइंड करते हैं तो उस ग्राइंडर को टिकाने के लिए मुझे उसको मटेरियल क्लीन करना पड़ेगा, ये आवश्यक है, नहीं तो मेरा ग्राइंडर ही नहीं टिकेगा। ये एनटीपीसी ने ये जब जलवाया तब पाया, क्योंकि ब्रिकेट में जैसा भी बायोमास आता है ऐसा ही सीधा ब्रिकेट बन जाता है। उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर हमारे जो एरिया में जो भी पड़ा है ना वो सब उसमें जाता है और सब आके बॉयलर में जाता है। वो जलता तो है नहीं, एस के रूप में वापस आपको मिल जाता है, तो पता चलता है बॉयलर भी नहीं चौकअप आता है, सारा सब कुछ समस्या होती थी। उसकी वजह से एनटीपीसी ने ये पाया कि भाई हमारे कहने से ब्रिकेट मैन्युफैक्चरर कभी मटेरियल को क्लीन नहीं करेंगे। अगर उनको ये कहेंगे भैया आप ब्रिकेट की जगह पैलेट बना के ले आओ, तो पैलेट बनाना है तो मुझे मटेरियल को ग्राइंड करना ही पड़ेगा। ग्राइंड करना है तो ग्राइंडर को मुझे टिकाना पड़ेगा, ग्राइंडर टिकाएंगे तब कि जब उसमें से मिट्टी, कंकड़, पत्थर, लोहे के टुकड़े कुछ भी हटाएंगे तब जाके ग्राइंडर चल पाएगा, नहीं तो ग्राइंडर नहीं चल पाएगा। उससे दो चीजें मिलती है, एक तो मटेरियल क्लीन भी हो जाता है, दूसरा मटेरियल बारीक हो जाता है। बारीक थोड़ा सिद्धांत मेरे से ज्यादा आप सब समझते हो, आप क्या जिनको है जितना बारीक पार्टिकल होगा उतना उसको सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा तो कंबशन अच्छा होगा, कंबशन अच्छा होगा तो एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी और पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये इसकी वजह से पैलेट ब्रिकेट नहीं लेकिन पैलेट, क्योंकि ब्रिकेट है वो तो सीधा बायोमास ही मिलता है, सिर्फ हम कंप्रेस करके देते हैं। इसमें एक फॉर्म बन जाता है, ऑटो फीडिंग भी हो सकता है, ब्रिकेट से ऑटो फीडिंग भी नहीं हो सकता, इसलिए ये पैलेट है। ऐसे ही इंडस्ट्रीज में भी, कोई भी इंडस्ट्रीज में ऑटो फीडिंग ब्रिकेट से संभव नहीं है और वहां पर भी यही एफिशिएंसी का प्रॉब्लम आता है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आता है। इसलिए अब हमारा फ्यूल पैलेट ही होगा, पैलेट ही होने वाला है। ये हमें देख के आप सिर्फ पैलेट के पावर प्लांट के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज में पैलेट की इतनी डिमांड है। मैं आपको बताऊं, मैं 20 साल से कार्य कर रहा हूं, पावर प्लांट तो अब चला रही, मैं इंडस्ट्रीज को पहले से देता और बहुत सारे हैं। जैसे अभी मैं बताऊं 3 से 3500 इधर उधर 3000 से 3500 यूनिट चलते हैं ब्रिकेट और पैलेट के भारत में ज्यादातर। ये मोटा मोटी आइडिया है 4000 भी हो सकता है। ये सब पावर प्लांट नहीं आए तो उसके पहले से चल रहे, पावर प्लांट की डिमांड है भाई। फिर भी
इंडस्ट्रीज अभी भी, अब तो क्या है कि पहले तो हमें ये भी समस्या थी, आपको इसके लिए भी ये पैलेट प्लांट लगाना चाहिए, सिर्फ ये नहीं। अभी तो खैर पावर प्लांट की डिमांड है ही, अब डिमांड में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ये सोचो पावर प्लांट नहीं है तो दूसरे कौन। इसलिए मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि इंडस्ट्रीज में पहले हमें समस्या आती थी, कोयले के साथ में कंपैरिजन करते थे, कोयले के रेट से आपका तो महंगा है, कोयला तो सस्ता है। आज तो ये प्रश्न भी नहीं, आज तो कोयले से भी, कोयला तो बहुत हाई हो गया है, कोयले से सस्ता है पैलेट। इसीलिए इंडस्ट्रीज में भी इतनी डिमांड है। फिर सर ने बताया था कि हमारे एनसीआर में भी है। अब एनसीआर जैसे हो गया है कि कोयला बैंड हो गया, सॉलिड फ्यूल सारे बैंड हो गए, ऐसे एक और एग्जांपल बता दूं कि एनसीआर जैसे 106 देश में 106 सेवरली इंडस्ट्रियल एरिया है जो हाई पॉल्यूटेड है। वो सारे इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पता हो तो जब एनजीटी ने एनसीआर में ये बैन लगाया था, तब हमारे देश में बुद्धिजीवी बहुत हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि क्या दिल्ली में ही इंसान रहते हैं, क्या देश में नहीं रहते हैं क्या, तो सब जगह पे बैन लगाना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे मुझे लग रहा है जहां तक कि धीरे धीरे करेंगे, सारे देश में जहां भी सेवरली हाई पॉल्यूटेड एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर सब जगह पे सॉलिड फ्यूल धीरे धीरे बंद होने वाला है, गैस पे आएंगे और बायोफ्यूल पे आएंगे। इसलिए बायोफ्यूल अब यूज का हमने सुबह से लेकर अभी तक हम समझ रहे हैं, बायोफ्यूल का यूज का या तो डिमांड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। अब बात जो आती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो जब डिमांड है, आप लोग बनाने वाले हैं, देश में बायोमास भी खूब है, तो मिलता क्यों नहीं? सवाल यही है ना, मैं उसका उत्तर देने के लिए अब यहाँ पर आया। मिलता इसीलिए नहीं है, भरोसा। दूसरा कि उनको कैसे किया जाए उनका पता नहीं। अब भरोसा क्या नहीं है तो कि भाई लेंगे, कब लेंगे, कितना लेंगे, ले रहे हैं। हमारे जो मित्र है 2-3 मुझे भी बताते थे कि वे टेंडर निकले जा रहे हैं और किसी को अवार्ड होता है, किसी को नहीं होता है, क्या रेट में होता है, कैसे क्या। वो जो कड़ी है ना, उसका कम से कम समाधान या तो उसके मन में नहीं होता है। बाकी तो यहाँ पर एनटीपीसी के जितने भी यहाँ मिशन बायोमास खोल दिया है, इतना सब कुछ आपको समझा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जहां तक कोई ना कोई ऐसी कड़ी है जो उनके और आपके बीच में आ रही है, जो आपके दिल में दिमाग में नहीं उतर, वो वास्तव में ये है कि आपको मशीनरी, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस समस्या वहां पर आपकी कड़ी छूट रही है और फाइनेंस की छूट रही है सबसे बड़ी। क्योंकि हम कहते हैं कि इतने का मशीन आता है, इतने का प्लांट लगा लीजिए, प्लांट लगाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है, इसको नहीं पता है, जैसे सर ने बताया था और यहाँ पर भी एसबीआई ने ये कहा था उसके लिए फाइनेंस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी कड़ी वो है, वो किसी को भी दिखाई नहीं देती कि जो साल भर का रॉ मटेरियल का जो फाइनेंस नहीं मिलता है, या तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, अगर फाइनेंस मिलता है तो वो सिक्योरिटी मांगते हैं कि साल भर की सिक्योरिटी का कहां से लाएंगे, या तो सिक्योरिटी दीजिए। गेप वहां पर है उनका। जब तक सर सॉल्यूशन, रमेश सर मैं आपको निवेदन करूंगा कि जब तक ये साल भर का स्टॉक का सॉल्यूशन नहीं होगा ना, तब तक ये समस्या वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। उसके लिए सरकार कोई भी सोचे, क्योंकि 50 लाख करोड़ रुपए कोई भी लगा लेगा, प्लांट लगा लेगा, साल भर का मटेरियल जो इकट्ठा करना है ना, उसका कोई तोड़ अभी तक नहीं निकला है और वो नहीं निकल पा रहा है जब तक इनको सबको जो एक भरोसा नहीं आ रहा है कि प्लांट लगा के हम करेंगे, क्योंकि मटेरियल तो स्टॉक नहीं हो सकता है, उसके लिए फाइनेंस नहीं मिल रहा है। समस्या वहां। अब मैं आगे आपको बताऊं कि ये सब वाई पैलेट ये सब हमने समझ लिया। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वो भी हमने सुबह से लेकर अभी तक सारा जान लिया। मैं आपको पैलेट का ये पूरा, अच्छा अभी तक हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो थी सेमी ऑटोमेटिक, या तो ऑटोमेटिक भी नहीं थी। अभी हमने क्या किया, मैं जो बनाता था उसके एक्सपीरियंस से मैंने फुली ऑटोमेटिक प्लांट बना दिया है। जैसे ट्रैक्टर लोडर भी होता है, ये जैसी भी है, मटेरियल अनलोड करता है और वहां से लेके पूरा यहाँ ढेर हो जाता है, तब तक का पूरा लाइन हमने फुली ऑटोमेटिक बना दिया है। अब यहाँ से वापस ये लोडर उठा के ट्रक में डाल देगा और ट्रक सीधा पावर प्लांट पे चला जाएगा, वहां तक फुली ऑटोमेटिक है। अब यहाँ पर एक सिर्फ लेबर, एक मशीन ऑपरेटर और एक ट्रैक्टर ऑपरेटर,
2 ऑपरेटर और 1 लेबर की आवश्यकता पड़ती है। लेबर इसलिए कि क्योंकि स्टोन सेपरेटर होता है, स्टोन सेपरेट हो जाता है, सफाई रखे या मशीन में ध्यान रखे, उसके लिए 1 ही लेबर की आवश्यकता है, 2 ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। बाकी सब फुली ऑटोमेटिक ये सारा पैलेट बन जाता है। इस तरह की कोई सिस्टम हमें बनानी है। ये वो था प्रेस मशीन, ये है रिंग डाई मशीन। रिंग डाई मशीन में 6 से 8 mm पैलेट हम बना सकते हैं, उसमें 12 से लेके 22 mm तक बना सकते हैं। दोनों का कंप्रेस रेशियो में फर्क है। और दूसरा हमने उसमें और इसमें डिफरेंस ये किया है, उसमें जैसे ये पैलेट प्लांट है, ये लो प्रोडक्शन कॉस्ट पे काम करता है, क्योंकि हम साइज बड़ी करते हैं, 12 से लेके 22 mm बनाते हैं तो कंप्रेस रेशियो कम देना होता है, तो ये 1000 से 1500 रुपये पर टन में बन जाता है। और इसमें कंप्रेस रेशियो ज्यादा होता है तो ये 1500 से 2000 रुपये पर टन में प्रोडक्शन कॉस्ट में पैलेट बनता है। ये भी फुली ऑटोमेटिक है। यहाँ से पैलेट अपने रॉ मटेरियल डालते हैं और यहाँ पर बैगिंग हो जाता है वहां तक, क्योंकि ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज में जो छोटी साइज चलती है, पतली साइज चलती है, इंडस्ट्रीज में एफडीसी बॉयलर में चलती है, इसलिए पैकिंग में भी मांगते हैं। तो पूरा पैकिंग मशीन भी दिया हुआ है, जिसको आवश्यकता नहीं हो वहां से जो कूलर है, जैसे फीडिंग कन्वेयर है, फिर पैलेट मशीन है, फिर ट्रैवलिंग कन्वेयर बेल्ट हो गया, और बीच में एक कूलर है। कूलर से नीचे स्क्रीन है, वहां से सीधा बैग भी भर सकते हैं अगर पैकिंग नहीं करना। अब हमें पैलेट प्लांट लगाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है? मिनिमम 1 एकड़ जगह की आवश्यकता होती है, पैलेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन और पानी की, क्योंकि डाई में कूलर के लिए पानी देना होता है। इलेक्ट्रिसिटी, एक फुली ऑटोमेटिक लाइन बताया मैंने, उसमें 200 HP कनेक्शन होता है, 200 HP की जरूरत पड़ती है। और रॉ मटेरियल, अब एक वेबरेज, क्योंकि ये रूरल एरिया का बिजनेस है, रूरल एरिया में वेबरेज नहीं होता है, तो वेबरेज भी अपना हो जाए तो हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। फिर शेड, 20 TPD का एक प्लांट या तो 25 से 30, जो मैंने एक मशीन बताया वो 25 से 30 बनाते हैं। मोस्टली सब कहते हैं कि भाई 20 TPD हो, तो 20 TPD का टेंडर निकलता है मिनिमम, तो उसको 20 TPD माने, तो उसमें 25 बाई या तो 50 बाई 200 में 2 मशीन लग जाए, 25 बाई 200 हो तो 5000 स्क्वायर फीट में 1 मशीन लग जाए। ऐसे ये शेड बना के 50 TPD में 10,000 और 20 TPD में 5,000, इसमें शायद गलती कर दी, 20 TPD का है 10,000। और अदर रिक्वायरमेंट जैसे लेबर क्वार्टर हो गया, गार्ड लेबर में गार्ड रूम हो गया, इस तरह से सब करके ये प्लांट हम लगा सकते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट हो गया। अभी हमारे नॉर्थ इंडिया में जैसे ड्रायर की जरूरत पड़ती है या तो पेडी स्ट्रॉ है, उसमें शेडर की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं शेडर से। सबसे आगे शेडर है, वहाँ से ग्राइंडर है, ग्राइंडर के बाद में ड्रायर है, और फिर पैलेट मशीन है और कूलर है। इस तरह से ये भी पूरी ऑटोमेटिक लाइन हो गई। और सेकेंडली वो रिंग डाई मशीन थी, ये भी प्रेस डाई है, और इसमें भी शेडिंग होगी। फिर फुली ऑटोमेटिक, ये भी पैलेट लाइन आपने पहले देख ली। अब ये मशीनरी की सारी आपको मैं सिस्टम बता दूं। ये शेडर है, जैसे पैलेट पेडी स्ट्रॉ है, पेडी स्ट्रॉ को शेडिंग करके और फिर फीडिंग किया जाता है। ये ड्रायर है, ड्राई करके, ड्रायर भी 2 प्रकार के आते हैं। जैसे मॉइस्चर हाई होता है तो वो ड्रम ड्रायर आपने पहले देख लिया, ये ड्रम ड्रायर है। हाई मॉइस्चर में ड्रम ड्रायर आवश्यकता होती है, और कम अगर मॉइस्चर है 30% से कम तो ये फ्लैश ड्रायर यूज होता है। ये ऑटोमेटिक फीडिंग यूनिट है, जो यहाँ पर लेबर की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक फीडिंग हो जाता है। ग्राइंडर है, जो पैलेट बनाने के लिए सबसे बारीक ग्राइंड करना होता है, हाई एफिशिएंसी ये ग्राइंडर है, जो NTPC पहले सबसे पहले जो टेंडर निकाली थी उसमें 75% 1 mm और 100% 3 mm में निकल गया। इस टाइप का हमने ये ग्राइंडर बनाया हुआ है। तो जितना बारीक ग्राइंड हमें करना होता है तो भी हो जाता है। 3 mm की स्क्रीन में ये ग्राइंड कर देता है, पर आवर 2 टन से लेके 5 टन की कैपेसिटी होती है। ये प्रेस डाई पैलेटिंग मशीन हो गया, ये रिंग डाई पैलेटिंग मशीन हो गया, अलग अलग कैपेसिटी का है ये। और ये फुलिंग कन्वेयर हो गई। ये हमारा पूरा वर्कशॉप है, और स्टार्टिंग से लेके हमारा ये पूरा इन हाउस प्रोडक्शन है। मैं जो इंडस्ट्रीज की बात करता था कि हम इंडस्ट्रीज में पहले देते थे, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें
ये इंडस्ट्रीज को हम देते थे। उसमें ये इंडस्ट्रीज को इसलिए देते थे जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, कलर, केमिकल्स और फूड। ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्ट में इफेक्ट आता था कोयले से, उसकी वजह से जैसे फूड इंडस्ट्रीज है, केमिकल्स है, फार्मा है, ये बायोमास है वो नेचुरल, रिन्यूएबल कहते हैं, लेकिन मैं उससे भी एक वर्ड आगे यूज करता हूं, ये ऑर्गेनिक फ्यूल है। हम ऑर्गेनिक फूड की तो बात करते हैं, मैं इसको ऑर्गेनिक फ्यूल की बात करता हूं। इसकी ये इसलिए बात करता हूं कि ये फूड इंडस्ट्रीज में 100% आज पैलेट ही चलती है, क्योंकि कोयला जलाते हैं तो उसके पार्टिकल पूरी फैक्ट्री में जाता है, उससे उसमें इफेक्ट जाती है, वो लैब में पता भी चल जाता है। इसकी वजह से फूड इंडस्ट्री सारी जैसे केमिकल, फार्मा सब बायोमास पैलेट ही चलाते हैं, इसलिए ये इंडस्ट्रीज में पहले से ही चल रहा है। और इस तरह से हम पूरा प्लांट कर सकते हैं मशीनरी का। आगे शेडर हो गया, ड्रायर हो गया, फिर ग्राइंडर और 2 मशीन 50 TPD का प्लांट, ये पूरा शेड है 200 बाय 50 का। इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। अब एक छोटा सा वीडियो वैसे सबने बाहर देखा था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं जिससे सभी को आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से ये बिना शेडर का है। बस इसके आगे नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर हम शेडर लगा दें तो शेडर से पूरा फिर फुली ऑटोमेटिक ये प्लांट चल जाता है, जैसे हमने पहले बाहर देखा भी होगा। जिसको भी लगाना हो, मैं ये सबको सलाह दूंगा कि एक मशीन न लगाएं, 2 मशीन का 50 TPD का पर डे का प्लांट लगाए। तो जैसे एक मशीन चलती हो और एक मशीन मेंटेनेंस में हो तो प्लांट कंटिन्यू रहे और व्यक्ति काम करते रहे। एक मशीन होगी, एक मशीन से फिर अगर मेंटेनेंस का आ गई तो सारा जो है हमारा प्लांट रुक जाता है, और हमने जिसको वायदा किया है गाड़ी लोड करनी है तो वो रुक जाता है पूरा। 2 होगा तो कंटिन्यूसली हमारा काम चलता है। तो उसमें कमर्शियल भी वायबिलिटी आती है, क्योंकि हम सारा सब कुछ लेके चलते हैं। 2 मशीन में भी हमारे मेन पावर इतने लगते हैं, 3 व्यक्ति, 2 ऑपरेटर और 1 लेबर पे 2 मशीन से चल जाता है, क्योंकि दोनों को वो हैंडल कर लेता है। ये पूरा ही फुली ऑटोमेटिक पैलेट आपके सामने है। ये इस तरह से ये यहाँ पर डाई होती है। ये डाई फिर समय पे जब घिस जाती है तब चेंज हो जाती है, और ये सबसे चीपेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में ये पैलेट तैयार हो जाता है। अब सुबह से लेकर अभी तक सबने समझा जाना, तो मुझे नहीं लगता है कि पैलेट बनाने में, पैलेट की जरूरत में या तो पैलेट का प्लांट लगाने में किसी को कोई समस्या हो। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, समझना हो, पूछना हो तो वेलकम। जी सर। I have one question. We have experience of we have this. जी सर, हिंदी में। ब्रेकिंग मशीन लगी है हमारे वहाँ पे। जी। और पैडी स्ट्रॉ का आई डोंट नो यू हैव एनी एक्सपीरियंस, आप मस्टर्ड से शायद करते हैं। जी। जब उसे ग्राइंडिंग करते हैं देयर इज लॉट ऑफ डस्ट अराउंड। ऑल्सो मैंने एक प्लांट देखा है जो पंजाब में लगा है जिसमें बायोगैस बनाते हैं, बट उसमें भी पहले ग्राइंड करते हैं। एंड दिस होल फैक्ट्री जहाँ पे ये हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रहा है, आले दुआले सारी डस्ट फैल जाती है। सो व्हाट अबाउट द वर्कर्स हेल्थ हु आर वर्किंग? डस्ट कलेक्टर लगा लीजिए। डस्ट कलेक्टर लगा हुआ है, डिस्पाइट दैट यू कांट स्टैंड देयर इफ यू गो। सही कह रहे हो आप। देखो, हम ज्यादातर हम क्या है कि साइड की गली ज्यादा ढूंढते हैं। डस्ट कलेक्टर में भी क्या है कि बार बार चौकअप हो जाता है, थैली जम जाती है, कोई लेबर साफ ही नहीं करता है। आपका बिल्कुल सही जायज क्वेश्चन है, और मुझे तो क्या लॉट ऑफ अनुभव हुए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में विजिट किया है, मशीन भी बनाते सब कुछ है। सीधा साधा सही जुगाड़ू काम ये है कि एक आप डस्ट का कमरा बना लीजिए, उसमें जो कंतान आता है आपको पता हो तो बोरी का, उसकी दीवारें बना दीजिए साइडों में, बीच बीच में भी, और हवा उसमें छोड़ दीजिए। बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, कभी समस्या नहीं, क्योंकि जो बोरी लगा देते हैं ना वो ऐसे झूलती हैं
डस्ट उसमें कलेक्ट हो जाती है और अपने आप जड़ भी जाती है और हम उसको कलेक्ट भी कर लेते हैं। कमरे में ही उस हवा को छोड़ दीजिए, जिससे क्या होगा पता है, डस्ट कलेक्टर से आपका जो ग्राइंडर का एफिशिएंसी है ना वो कम हो जाएगा। ग्राइंडर आपकी एफिशिएंसी जो 2 टन देता होगा ना, वो अगर आप जिसे डस्ट कलेक्टर लगाएंगे 1.5 टन, क्योंकि जैसे हम मास्क पहनते थे तो सांस लेने में दिक्कत आती थी ना, वो वाला सिस्टम ही उसमें होता है। इसीलिए हवा अगर कमरे में खोल देंगे, डस्ट का कमरा बना दीजिए और उसमें कलेक्ट हो जाएगी और एयर निकल भी जाएगी, सबसे बेटर यूज है। अगर आपको किसी को समझना है तो, और हाँ दूसरा वीडियो देखने के बाद में बताना था, भूल गया, सॉरी। आपको जिस किसी को भी देखना हो, प्लांट विजिट करना हो, मैं आपको बताऊं कि हम पहले तो देखने नहीं देते थे किसी को, लेकिन जब से एनटीपीसी से हमारा नाता जुड़ा है तब से मैं सभी को विजिट करवाता हूँ। हर हफ्ते 2 से 4 लोग विजिट करने आते हैं मेरे प्लांट में। कभी भी आप फोन करके आ जाइए, मेरा प्लांट विजिट करिए, समझिए, जानिए, उसके बाद में आप प्लानिंग करिए और प्लांट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर में मेरा प्लांट है, नियरेस्ट में पास में ही है। जी सर। सर आपने बताया कि 1.5 रुपए किलो में 1500 रुपए टन में बिल्कुल प्रोडक्शन हो जाता है। बिल्कुल 1.5 रुपए किलो है उसका, 1500 रुपए टन का है जी। मस्टर्ड के साथ है ना सर? मस्टर्ड बिल्कुल। और धान के पुआल के कोई उसमें 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि एक ऑपरेशन ज्यादा लगता है और उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी, प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम है। हाँ, तो फिर प्रोडक्शन भी कम होगा। इसीलिए 2000 रुपए उसका मान लीजिए। आपका कोई तजुर्बा है? हाँ बिल्कुल, मैंने गाड़ी मंगा के बनवाया था, कम से कम 2 से 3 गाड़ियां मंगवाई थी मैंने हरियाणा से, और बनाया था, बन गया था, चल गया था। लेकिन ये हम जो ये मार्केटिंग देखते हैं ये सब होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, 30 से 40 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा हद मार के 40 किलोमीटर से ज्यादा लूज मटेरियल वहन पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह इसीलिए मैं सर कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से मंगा के फिर वहां पर ज्यादा नहीं बना सकता था। ट्रायल के लिए 2-4 गाड़ी मंगाई थी। 2-4 गाड़ी मतलब आपने 40-50 टन माल बिल्कुल लगाया था, बिल्कुल, है ना? और जो 20 टन पर डे वाली है वो कितना रह गया था उसका कैपेसिटी? वो तो उतना ही देता है, वो नहीं कम हुआ? नहीं ठीक है। हाँ ठीक है, 1-2% जैसे सर कह रहे थे ग्राइंड करते हैं, वो जब ग्राइंड करते हैं तो उसमें जो अगर उठ जाता है तो वो कम होता है, बाकी नहीं होता। लेकिन फिर भी वो बता दो, ये अनऑफिशियली वैसे क्या है कि ये सर के सामने नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है, इसलिए मैं कहता हूँ। और मुझे थोड़ा सा क्या है कि स्पष्ट बताना अच्छा लगता है। मैंने 20 साल के तजुर्बे में, एक मिनट पूरा, हाँ जी बताइए सर, बताइए। 1-2% तो हम माप ही नहीं पाते हैं जी, तो कोई बात जी। तो मैं आपको बताऊं, मुझे आज तक 1 भी % की छिजत नहीं लगी। क्यों? क्योंकि लोडर है ना, उसमें हाथ नहीं होते हैं और आंख नहीं होती है, वो जमीन में से उठाता है थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। इसकी वजह से जो छिजत लगती है ना वो पूर्ति हो जाती है उससे, इसलिए छिजत कभी नहीं लगती, चिंता मत करो। हाँ, मॉइस्चर वाला माल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कितना मॉइस्चर होना चाहिए? बिलो 10%। बिलो 10% से आराम से कलर बन जाती, चाहे कोई सा भी मशीन। तो पुआल में आपके 10% से कम था मॉइस्चर? बिलो 10% मशीन के लिए होना चाहिए। आप 50% लो, लेकिन मशीन में जब डाल रहे तब बिलो 10% होना चाहिए। जिस पुआल से आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 10% से कम था मॉइस्चर? होना चाहिए। नहीं किया था ना आपने? बोला हाँ बिल्कुल, वो भी बता देता हूँ। जब मैं किसान का बेटा, जब फसल आती है ना तो पकती है तभी फसल किसान काटता है, और पकती तभी है जब सूखती है। फसल सूखी ही होती है। लेकिन पराली के साथ में, जैसे सर ने अभी कहा कि 15 साल से क्या हो गया है, हमारे पास पहले हाथ से काटते थे ना, वो चला गया, मशीन आ गई, हार्वेस्टर आ गया ना, तब से जो ऊपर का तो हिस्सा सूख जाता है वो सूखा ही होता है, वो काट देता है, धान ले लेते हैं। लेकिन जो जमीन के साथ में जो इतनी ऊपर से काटते हैं ना, जो पौधा जुड़ा हुआ है ना, वो गीला होता है। अब हमारे रीपर या तो दूसरे जो साधन है उसको काट के ले आते हैं ना, तो तुरंत, हमें तो क्या चाहिए, त्वरित चाहिए, तुरंत चाहिए, इसलिए वो गीला आता है। बाकी अदरवाइज वो गीला नहीं होता है। दूसरा, गीला होता है तो भी ये 2 महीना जो फसल जब आती है ना, उसी समय पे गीला होता है, 2-4 दिन, हफ्ता भर होता है तो वो भी सूख जाता है, साल भर वो गीला नहीं रहता। समझ रहे आप? पराली कभी साल भर गीली नहीं रहती है, वो तो 2 महीने जब फसल आती है तभी गीली रहती है।
तो वो तो कोई भी फसल जो आती है तब थोड़ी सी मॉइस्चर होता ही है उसमें। जी सर। 20 टन पर डे, तो एक दिन में कितने घंटे? मोटा मोटी 18 से 20 घंटा ही हम ऑपरेशन ले पाते हैं। 24 घंटे में 18 से 20 घंटा ऑपरेशन नहीं आ पाता। आपने जो लिखा 20 टन पर डे और 10,000 स्क्वायर फीट का शेड लिखा। जी सर, 20 टन पर डे के बाद में क्या बताया? पर डे पे 10,000 स्क्वायर फीट का शेड लिखा आपने। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ थोड़ी गलती हो गई थी इनसे। एक मशीन के लिए 200 बाई 25 का ही चाहिए, मतलब 5000 स्क्वायर फीट चाहिए। 2 मशीन में 10,000 10,000 में 2 का काम चल जाएगा आराम से। ये जो आपने वीडियो है ये सरसों का गुना है। ये सरसों का है। गुना है। यस यस। हाँ 10,000 में रेशो थोड़ी बहुत कम ज्यादा डेप्थ और लेंथ और वो हाँ थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन फिर भी 10,000 में स्क्वायर फीट में आराम से शेडर वाला भी प्लांट लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं। एक क्वांटल से कितना पैलेट बनता है? कितनी? जी सर, एक क्वांटल से कितनी से? उतना ही जितना आप डालेंगे, चीजत नहीं आती सर। अगर मॉइस्चर है तो चीजत आएगी। दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट में दिखाया है कितने का कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितनी होती है जो आपने प्रोजेक्ट दिखाया है? जी, इसकी अप्रॉक्सीमेटली कितनी कॉस्ट पड़ेगी? मशीन है कॉस्ट में सबके सामने, तो वो आप जब भी कोई बात नहीं बैठेंगे टेबल से सब बताइए ना। मोटा मोटी फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है तो 45 से 50 लाख का, क्योंकि उसमें सेंसर सिस्टम भी आती है, मोटरें भी कैसे क्या लेते हैं उस हिसाब से 45 से मोटा मोटी बता रहा हूँ, 45 से 50 लाख का ये फुल्ली ऑटोमेटिक बनता है। बाकी मशीन तो 20 लाख की है जो पैलेट मशीन है। एक बात ये बताओ सर, आप लूज प्राणी लेते हैं कि बेल्ट से लेते हैं? जी सर, जो आप माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। कोई बात नहीं, माइक मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, पूरा माइक। आप लेते हैं कि बेल्ट लेते हैं? सर मेरे उधर पराली नहीं है। हाँ। हमारे उधर सरसों है, चने का है, कॉटन है, वो सब है। कॉटन होता है तो हमें शेडर एक लगाना पड़ता है। कॉटन गीला भी आता है। हम कॉटन के साथ में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसे पराली के साथ में भी कर सकते हैं। कॉटन हमारे ज्यादातर हफ्ते भर में सूख जाता है। 3 दिन तो किसानों के खेत में 3 से 4 दिन रहता है तो 50% सूख जाता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर आता है तो हम 3 दिन का रेशियो से चलते हैं। यहाँ गिर गया 3-4 दिन हो गया तो उसको फिर उठा लो, अगला आएगा वो 3-4 दिन पड़ा रहेगा। ऐसे सन ड्राइव हो जाता है, उसके बाद में हम स्टॉक में लगाते हैं। ये हमने क्या सालों के तजुर्बे से किया है। वही लेते हैं सारे के, उसको काट कर लेते हैं। वही मैंने आपको कहा ना, शेडर हम करते हैं, एक ऑपरेशन ज्यादा लगता है शेडर। बिल्कुल जी, ऐसा बता रहे मुकेश जी। ये आपके पैलेटिंग मशीन जो है जी, तो क्या गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही है? बहुत बढ़िया सर। उसके बाद मेरा सवाल है, पहले आप इसके बारे में बताओ पहले। जी, अभी मेरी पैलेट की मशीन नहीं, किसी की मशीन में अभी इस प्लांट में कोई सब्सिडी नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की अपना जो इंडस्ट्रियल की कोई भी सब्सिडी वो सब देती है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको पता नहीं है। एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सब्सिडी के लिस्ट में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंदर इस मशीन को डरा हुआ। सब्सिडी ऑलरेडी है, पर नो मैन्युफैक्चरर हैज गॉट देयर मशीन टेस्टेड। वी आर द टेस्टिंग अथॉरिटी कि आप लोग मशीन हमसे टेस्ट करवाओ, सर्टिफिकेशन करवाओ। सर्टिफिकेशन होने के बाद ये हरियाणा गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, ये 2 लोग हैं यहाँ उपलब्ध। ये इसके बाद टेस्टेड होने के बाद इस मशीन को लिस्ट में डालेंगे। देन दी एंटरप्रेन्योर है, फार्मर है, कोई भी इस मशीन को सब्सिडी पे ले सकता है। बहुत बढ़िया सर। तो आप सेंटर से हैं, स्टेट से? सेंटर से। सेंटर से, बहुत बढ़िया सर। मैं आपका कांटेक्ट करूंगा और मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, ऐसे सर से भी रिक्वेस्ट है कि हमारा, और मैंने लिख के भी दिया है सनाब साहब को, कि हमारा जो बिजनेस है ये पैलेट मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग, ये कैटेगराइज नहीं, हम कोई कैटेगरी में नहीं आते। मतलब हमारा माई बाप कोई नहीं है, तो आप प्लीज हमारा माई बाप कोई बनाइए कि हमारा ये डिपार्टमेंट है। हाँ, वहां से हमें कुछ मिले। अभी बैंक जो है हमें ये कहती है, बिल्कुल, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा जरूर सर। जो ये आपने बताया कि माई बाप नहीं है, हम 3 साल से, अभी लास्ट मंथ में एडवर्टाइजमेंट की गई है और स्वयं स्कीम सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, वो बकायदा ड्रायर और पैलेट मेकिंग मशीन में 8 और
4 लाख रुपए की सब्सिडी है, उसमें बकायदा फिगर दी गई थी और 23 एप्लीकेशन आई भी है। और जो बाहर सर जो दीपिका बोल रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास है, आप अभी तक राइट डेट पे मिले कि सच एंड सच मिनिस्टर ने उसका इनॉग्रेशन किया है, सेफ्टी फीचर्स तो नहीं देखे। पहला क्वेश्चन यही है कि आपके जो सेफ्टी फीचर्स से किसी भी टेस्टेड इंस्टीट्यूट है जो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BIS स्टैंडर्ड्स, वो मीट करती है कि नहीं करती है। जैसे आपने बताया कि रेट कुछ और है, क्वालिटीज अप्रूव्ड है, सेफ्टी फीचर्स एंड अदर फीचर्स, ड्रायर की साइज का हर मैन्युफैक्चरर नेक्स्ट डे उसको चेंज कर देता है, नहीं मैंने नया मॉडिफिकेशन कर दिया। तो सबसे पहले आप टेस्टेड कराइए। और इसका जो MRP का क्वेश्चन था, ताकि उसकी फिजिबिलिटी और उसकी एफिशिएंसी कितनी है वो गवर्नमेंट को अप्रूव करे। जैसे आप कह देते हैं, कोई आता है मेरी तो 10 kpd है, कोई कह देता है 5 kpd है। जो पहले SBI के बैंक में बताया था, सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, उसी चीज का 50 लाख रुपए है, उसी चीज का DPR 6 करोड़। यही एक जो संशय और डाउट है, इसको आप रेगुलराइज कीजिए। और मेरे आपसे 2 क्वेश्चन ये है, जो आपने कहा 50 TPD का, मैं इसमें पिछले 3 साल से कंटिन्यू टच में हूँ। और जो प्रिंसिपल्स के हैं, इवन कंपोस्ट का है, इवन 2-3 इंजीनियर्स है जो लगे हुए थे, और हमने मिक्सिंग भी की है। जो ड्रायर की मेन समस्या आती है, जब हम एक फाइन ट्यूनिंग में जाते हैं तो आग लगने का बड़ा हो जाता है, मॉइस्चर का, वो जो प्रैक्टिकल में जब लार्ज स्केल में करते हैं, उसके बारे में आपका क्या सक्सेस रेट है? सर कोई समस्या नहीं है, ये सर्टिफाइड करवाएंगे ना? हाँ बिल्कुल सही। ये मेरी गाड़ी कहती है कि अब मैं सीधा सबका कांटेक्ट करूंगा। ये कल आप उनसे सर्टिफिकेशन की दिलवाइए, एक बड़ी रिपोर्ट होती है, वो एक पार्ट्स की आपकी फील्ड एफिशिएंसी देंगे, उसके बाद लैब एफिशिएंसी देंगे, उसके बाद आप सब्सिडी में तो एलिजिबल, आप एप्लीकेशन मांग रहे हैं, हर बार कोई आ ही नहीं रहा सब्सिडी। आ तो रहे, दे नहीं पा रहे, पैरामीटर टेस्टेड है नहीं तो दे कैनॉट गिव सब्सिडी। बिल्कुल, ऑल मैन्युफैक्चरर्स आर सेल्फ डिक्लेयर्ड थिंग। थैंक यू सर, लेकिन ये बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया और हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे और हम जरूर चाहेंगे कि होना चाहिए। जबकि कितना बड़ा हास्यास्पद क्वेश्चन है, 3000 यूनिट आपने बताया ऑल इंडिया में। हाँ बिल्कुल, मैं सभी जगह पर्सनल उसमें जाके आया हूँ फील्ड में, जो गुजरात की है, यहाँ भी जो 3000 तो सर 3000 यूनिट लगी हुई। 3000 तो मेरी नॉलेज में, बाकी ज्यादा ही है। अब सरप्राइज बटे, एक भी टेस्टेड नहीं है। और सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, कोई टेस्टेड नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं। इसीलिए तो मुझे पता है सर, टेस्टिंग करा के होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम कराएंगे जरूर कराएंगे। इस माध्यम से तो हो गया। बिल्कुल। तो आप उसकी एक तो जो कॉस्ट है, ताकि हम DPR में डालने के लिए टेंटेटिव जो कॉस्ट होती है MRP एक यूनिट की, आपने कहा कि 2 यूनिट 50 TPD। उसके बाद क्या है कि इसमें जो सेट आ गया, एक DPR के भी बताइए ना, क्या एक अपनी मशीन की, इसीलिए वो सक्सेस नहीं हो रही। आप कह देते हैं कि 50 लाख है, जब वो जाता है तो उस मशीनरी की, शेड की और उसको ओवरऑल मेंटेनेंस की। सर वो तो प्लांट का हो गया, वो उसको शेड कितने का बनाएगा वो मेरा विषय नहीं होता है। आपको एक टेंटेटिव आइडिया तो भी 200 kV का वो चाहिए। हाँ, तो उसमें एक टेंटेटिव रख तो है ना आपका, जब आप एक तरफ कह रहे हैं 20 इयर्स एक्सपीरियंस, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आपके से फीडबैक लेंगे 20 जगह से। तो अभी आपको बता दूं कि कितने का प्लांट लगेगा, कितना क्या चाहिए, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन बात ये है कि मशीन मैन्युफैक्चरर एज ए शेड का कोई कोटेशन नहीं देगा। एक काम करते हैं, आप ना पहले टेस्टिंग करा देते हैं। टेस्टिंग कराने में वन इज आपके कोई इक्विपमेंट को सर्टिफाई करेगा, एंड इफ एनी मॉडिफिकेशन इज डन, दे विल टेल यू मैं ये मॉडिफिकेशन है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा साथ में बताया। प्लस आप अपना वेरिएशन सर, यू कैन ऑलवेज से ये ऐसे मोटर लगेगा तो ये कॉस्ट होगा, ये ऐसे मोटर लगेगा तो ये कॉस्ट होगा। ऐसा होता है ना मोबाइल में, फोन्स पे फीचर्स के हिसाब से रेट होता है, दैट यू कैन ऑलवेज डिक्लेयर अपफ्रंट ओनली। थैंक यू सर। और हाँ जी, आइए माइक ले लीजिए। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लास्ट क्वेश्चन है जो पिकअप करेंगे, बिकॉज वी हैव पॉजिटिव वर्ड्स। सर मैं लास्ट 3 ईयर से मैं डीसी डोमेन में काम कर रहा हूं। आई एम मेकिंग बायोमास पैलेट्स फ्रॉम 100% पैडी स्ट्रॉ। मैं कोशिश करता हूं 100% हो, बट थोड़ा बहुत डोमेन के कारण मुझे अगर रिक्वायरमेंट होती है तो 30% से कभी सोल्डर से कोई और मटेरियल यूज कर लेता हूं। बट आपने जो मॉइस्चर वाला कांसेप्ट बताया है,
इन सीजन जो पैडी स्ट्रॉ मिलती है उसका मॉइस्चर रिमूव करना आसान है, बट आज की प्रॉब्लम है, अभी मेरे प्लांट में एट प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रही है कि पैडी स्ट्रॉ ऊपर से गीली हो गई है, नीचे से सूखी है, और मैं ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है कि मैंने फीड रेट के अकॉर्डिंग लास्ट तक जैसे आपने चैनल बताया था सेम उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है जिस पैडी स्ट्रॉ के पास मॉइस्चर है, टेंपरेचर अगर कम रखते हैं वो मॉइस्चर ऐसा कैसा आगे ड्रायर से बाहर निकल जाता है, टेंपरेचर ज्यादा रखते हैं तो पैडी स्ट्रॉ जो सूखी है नीचे का पार्ट जो सूखा रहेगा वो भी बर्न हो जाता है, तो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो सारे फेल हो जाते हैं। मैंने इसका प्रॉपर मिक्सिंग करके भी देख लिया है, पैडी स्ट्रॉ में जहां पे मॉइस्चर रिटेन होता है वो पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाता। अगर हम फास्ट प्रोडक्शन चाहते हैं, कमर्शियल स्केल पे जाएंगे तो या तो पैडी स्ट्रॉ बर्न होती है या मॉइस्चर के साथ आते हैं। बहुत ये आपने क्वेश्चन आपके लिए पूछा, लेकिन ये सबके लिए जानकारी मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। आप ये गिल्ली कर रहे हो ना, उसके साथ साथ में आपका नुकसान खुद कर रहे हो, पता है कैसे? बारिश के कारण गीली हो रही है। वही कह रहा हूँ सर। अभी पता है हम जो ब्रिकेट बनाते थे ना पहले, वो सिनेरियो भी चेंज हो गया, इसलिए मैंने सर को बोला था, सर को सामान्य लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एनटीपीसी ने हमारे बिजनेस की चोटी पकड़ी है, पता है कैसे? उन्होंने अभी तक हमारे ये 40 साल से बना रहे हैं हम लोग ब्रिकेट, ये फ्यूल ब्रिकेट बना रहे हैं, लेकिन किसी ने जीसीबी पे रेट आज तक नहीं किए थे। अब जो अच्छा है जिसके पास उसको पुरस्कार मिल रहा है, जिसके पास घटिया है उसको दंडित हो रहा है, मतलब जीसीबी पे रेट हो गया तो उसको काट के भी पैसा मिल रहा है। अब जो साहब कह रहे हैं वो खुले में कर रहे हैं। आपको पता है आपकी जीसीबी जब सीजन होता है तब 3500 जीसीबी होती है पराली पे, कोई ये कहते हैं 3000 तो गलत बात है, 3500 जीसीबी होती है। जैसे जैसे वो खुले में पड़ा रहता है, धूप खाता है, छांव खाता है, बारिश खाता है, ऐसे ऐसे डिक्रीज हो जाती है और लास्ट में जाके बरसात के बाद में 3000 जीसीबी हो जाती है। वो आप नुकसान कर रहे हो 500 जीसीबी का, उसको कवर्ड करें तो ये समस्या समाधान हो जाए। इसलिए ये फ्यूल है, हमारा पैसा है, इसको कवर्ड करके रखिए तिरपाल से। कवर करके भी ट्राई किया था, जितना पैडी स्ट्रॉ के पहले से मॉइस्चर है वो मॉइस्चर भी उसके सरफेस पे आ जाता है, ऊपर हमने प्लास्टिक से कवर किया था, ऊपर की सरफेस में मॉइस्चर है। बिल्कुल सही कह रहे हो, गीला कभी भी कवर्ड नहीं होता, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। उसको नहीं हंसने की बात नहीं है सर, क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अगर अंदर आपका मॉइस्चर है तो अंदर के अंदर जल जाएगा, जैसे अपने सर्दियों में हम देखते हैं कूड़े कचरे का ढेर होता है, उसमें से भाप निकलती है, देखते हैं ना, वो क्या है अंदर गीला है, वो ऐसे कैसे जलता है। अब साथ साथ में एक और बात बता दूं, बहुत अच्छी है ये, बातों बातों में क्या है कि एक अच्छी जानकारी बहुत इसलिए बताना जरूरी है। जीपीसीबी गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन साहब के सामने मैंने बात कही थी, उन्होंने फिर कहा था, मैं जल्दी थोड़ा बताता हूँ कि ये बात बहुत अच्छी है, क्या आप हमारे हर महीने की 2 तारीख को मीटिंग होती है सभी आरओ की, उसके सामने बात कहेंगे कि आएंगे क्या? तो मेरा प्रेजेंटेशन देख के उसको अच्छा लगा था, ये 2015-16 की बात कर रहा हूँ। फिर मैं गया, एक आरओ साहब ने मुझे क्वेश्चन किया था कि कोयले में पोल्यूशन होता है आप कहते हो, तो क्या ये बायोमास पैलेट या ब्रिकेट जलती है तो पोल्यूशन नहीं होता है? बहुत अच्छा सवाल था, मैं बहुत सही है। मेरे साथ में क्या है कि पीएचडी किए हुए थे बायोमास में, वो आए थे, मैं को सर पहले ये आंसर देंगे उसके बाद में मैं देसी आंसर दूंगा। तो उन्होंने आंसर दिया, उसका मोटा मोटी लास्ट उत्तर आपको दे देता हूं कि केमिकल कंपोजिशन कोई इसमें, क्योंकि ये सारस्वत है, जब मनुष्य ने सबसे पहले किसी में आग लगाई होगी तो ये भूसे में लगाई होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा ना तब भी इस भूसा बचेगा, इसमें हम आग लगाएंगे, इसलिए सारस्वत चीज है। तो ये इसमें केमिकल कंपोजिशन कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं होता है। तो कोयले में 100% होती है तो इसमें 17% ही पोल्यूशन होता है, इतना डिफरेंस है, वो मोटा मोटी उन्होंने बताया। फिर मैंने देसी आंसर दिया कि सर मैंने 8वीं कक्षा में एक विज्ञान में पाठ पढ़ा था, लेसन पढ़ा था कि कोई भी चीज का, वस्तु का नाश नहीं होता है, रूपांतरण होता है। तो अब जो बायोमास हम जलाते नहीं है वो पड़ा वहां पर सड़ रहा है, गल रहा है, और जो वातावरण में एमिशन है वो तो वहां भी पड़ा ही फैला रहा है, क्योंकि चीज नाशवंत नहीं है, वो सड़ रहा है, गल रहा है। हम सर्दी में देखते हैं कि उसमें से भाप निकलती है और एमिशन वातावरण में जाता है, तो वहां पड़ा भी वो पोल्यूशन फैलाता है। तो क्यों ना हम उसको उठा के पैलेट बना के और बॉयलर को दे दे, तो कोयले का पोल्यूशन 100% बच जाएगा। समझ रहे हो, पड़ा वहां भी तो कर रहा है, यहाँ करेगा, कोयले का तो 100% बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है हमारा ये एनर्जी है। अब हमें हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर सभी शायद है, कितने चले गए मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है मेरा निवेदन है सबको और सरकार को और हम सभी को, हमें उस समाज का निर्माण करना पड़ेगा
कि हम इसको कचरा न माने, ये पैसा है, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, 10 रुपए की नोट पड़ी होगी ना, तो एक बार तो उसको उठाने का मन करेगा। तो हमें 2 किलो कचरा पड़ा है ना, तो 10 रुपए का नोट है, हमें उसको उठा के और बॉयलर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये समाज को हमें निर्माण करना, मेरा ये कहना है। जी, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, मॉइस्चर के लिए जो बताया, सीजन में एक बार आप इकट्ठा करेंगे जी, ढेर लगाएंगे उसका, मॉइस्चर बीच में रह गया, सन ड्राइंग के लिए आप बोल रहे हो सन ड्राइंग मत करो, जीसीबी का लॉस होगा, पन्नी डाल दो, पन्नी डालने से भी उस पे लॉस हो रहा है, तिरपाल से कवर कर दिया तो भी लॉस हो रहा है। तो आपका इलाज ये की है, आप ड्रायर लगा, ड्रायर लगाने के बाद में भी ड्रायर जो होता है नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है, एक जगह ज्यादा मॉइस्चर एक जगह कम मॉइस्चर है, तो जलने में उसमें समस्या आती है। ये बात आपकी गलत है, ड्रायर लगाओगे तो ड्रायर तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं? मैंने फ्लैश ड्रायर और रोटरी ड्रायर दोनों में ट्राई करके देख लिया है, दोनों में आग लग रही है। आपकी देखो समस्या ये है कि सरफेस वाला जो आप कह रहे हो, सरफेस वाला मेरा गीला है, नीचे वाला मेरा सूखा है, तो सरफेस वाला क्यों गीला हो रहा है ना, वो आपको देखना, समझ रहे हो? सरफेस वाला गीला क्यों कर रहे हो? हम तो, मैं कह रहा हूँ, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ, मेरा कभी गीला नहीं होता, सरफेस वाला भी नहीं होता है। हाँ, नीचे में अगर मेरा कभी देखो बरसात बारिश हो जाती है, तब ढेर सूख गीला हो जाता है, उस समय पे हम ढक देते हैं, तो ये समस्या पूरे ढेर में आती है, सिर्फ ऊपर नहीं आती, पूरे ढेर में गीला हो। जीसीबी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग के तुरंत बाद में जो हम जीसीबी चेक करवाते हैं, और एक्चुअली कौन साइड जो जीसीबी चेक होती है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 1-to-1 क्वेश्चन हम बाद में आप एक काम करना, मेरा नंबर ले लेना, फिर सही करें, वो आपका समाधान कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वीर जी, आपकी स्पष्ट वादिता अनुभव मैं समझता हूँ कि इसमें सभी लोग बहुत लाभान्वित हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सर से कि काइंडली आएँ और मुकेश जी को फेलिसिटेट करें। Thank you, sir. Now with this we have reached to the last technical presentation of today's workshop, which is titled as Sustainable Management of Crop Residue Solution, and it will be given up by the team from New Holland CNH Industrial. May I request the team from New Holland to please start their presentation. हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो मेरा नाम लोकेश कुमार है और मैं न्यू हॉलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हम लोग जो आज बात करेंगे बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो ये पूरी प्रोसेस के सबसे पहला टॉपिक है। सबसे पहले अगर वो मटेरियल खेत से किसी पैलेटिंग प्लांट तक आएगा नहीं तो वो एनटीपीसी तक पहुंचेगा नहीं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स। सो जो मेरा मेन स्ट्रेस है दैट इज द कलेक्शन पार्ट। या फार्म से कलेक्ट कैसे करेंगे, पैलेटिंग प्लांट तक कैसे लेके जाएंगे। तो एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कंपनी के बारे में। बेसिकली द कंपनी नेम इज CNH केस न्यू हॉलैंड, और हम लोग न्यू हॉलैंड ब्रांड से इंडिया में वर्क कर रहे हैं। हमारे ट्रैक्टर्स और मशीनरीज आती हैं। आउट ऑफ 66 प्लांट्स हमारे 3 प्लांट्स इंडिया में हैं जो ट्रैक्टर और इक्विपमेंट्स कंबाइंड और ट्रेलर्स बनाते हैं इंडिया में। तो ये पूरा एक पोर्टफोलियो है स्टार्टिंग फ्रॉम टिलेज टू पोस्ट हार्वेस्ट। तो हमारा जो आज का कंसर्न है वो दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट, जिसमें डिफरेंट टाइप के बेलर्स डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटीज एंड देयर एफिशिएंसीज वो हम लोग उस परफॉर्मेंस के ऊपर उसको इंडियन मार्केट में देते हैं। तो ये एक टोटल प्रोसेस है जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहा था। सबसे पहले आता है कलेक्शन, देन बायोमास प्रोसेसिंग एंड देन सप्लाई टू द OMCs या और जो प्लेयर्स रहेंगे, जो प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे मार्केट में। तो हमारा जो पार्ट है दैट इज द कलेक्शन पार्ट। हम लोग वो है जो मशीनरीज और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, एग्रीगेटर्स को, जो उन मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं फार्म में। हम लोग बात कर रहे हैं 250 मिलियन टन इन इंडिया, 25 मिलियन टन की बात हम लोग कर रहे हैं। पर वो इतना क्वांटम है कि हम उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करके लेके जाएंगे लूज फॉर्म में और बहुत सारे डिस्टेंसेस पे। तो उसके लिए हमें इसको डेंसिफाई करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बेल, सो दैट हम उसको इजीली हैंडल कर सकें, इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट कर सकें, और तीसरा कम स्पेस में उसको स्टैक कर सके फॉर द पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर, जैसे कि बात हो रही है। तो वो लूज से ज्यादा एडवांटेज है इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। तो ये ओवरव्यू है। 750 मिलियन टन आर देयर, उसमें से जो 250 है दैट इज द सरप्लस, जो
जिसको किसी भी तरीके से हम लोग स्पॉइलेज में जाता है, बर्निंग में जाता है, जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा किसी भी हाउस होल्ड में। प्रॉब्लम्स वी नो व्हाई इट इज बर्न्ड। सबसे पहले इंटरक्रॉपिंग पीरियड बहुत लेस है पैडी स्ट्रॉ का, इसलिए आज हम लोग सभी इकट्ठे हुए कि पैडी स्ट्रॉ का सोल्यूशन ढूंढना है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। सेकंड इज लिमिटेड यूज ऑफ कमर्शियल, जैसे अभी एनटीपीसी आया है, सतत प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो भी इनिशिएट ले रहे हैं कि हम इसको प्रोक्योर करेंगे बायोमास को। तो पहले वो चीजें नहीं थी, तो इसके कारण इसका एक रीजन है कि उसको आग क्यों लग रही है। थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पंजाब में जाएंगे जहां पे लोगों को बायोमास कलेक्शन के बारे में पता है, बट जैसे ही दूसरी 3-4 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करेंगे, फार्मर्स को बेलर्स के बारे में या टेक्नोलॉजी के इवन इन सीटू के बारे में भी बहुत सारे फार्मर्स को नहीं पता है। तो अवेयरनेस भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो गवर्नमेंट को और जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसको बताने के लिए, फार्मर्स को बताने के लिए हमें इसको कैसे, हम उसको बोल देते हैं आग नहीं लगानी है, पर कैसे नहीं लगानी है उसको सोल्यूशन भी देने पड़ेंगे। तो दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस। अगर आप टॉप पे देखेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो बहुत सालों से चलता है, दैट इज कंबाइन हार्वेस्टर, देन एक स्लैशर मशीन होती है, वो उसको स्लैशिंग करती है, रूट से काटती है। देन देखिए इस मशीन का यूज होगा ही होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम अगर अपने खेत को साफ करना है फार्मर को, तो वो स्लैशर यूज करेगा। स्लैशिंग करके उसको 1 से 2 दिन वो सुखाएगा एयर ड्राइंग करके। ग्रीन स्टबल होता है, उसको आग भी नहीं लगेगी, तो 2 दिन उसको एयर ड्राइंग करेगा, 3 से 4 दिन उसको वो आग लगा देगा। बट हम लोग कह रहे हैं कि आप स्लैशर का प्रोसेस सेम रखिए, 2 मशीन नई इंट्रोड्यूस करिए बीच में। फर्स्ट इज रेकिंग। रेकिंग मींस लाइनिंग ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू। सभी मटेरियल को इकट्ठा कीजिए, लाइन में रखिए और उस लाइन के ऊपर आप बेलर को चलाइए और इन द फॉर्म्स ऑफ बेल उसको कॉम्पैक्ट कर लीजिए, जिससे आपके 2 फायदे हैं। फर्स्ट इज जो इन्वायरमेंट को बेनिफिट है, एंड सेकेंड इज जो फार्मर को बेनिफिट है, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं उसकी सेकेंडरी इनकम जनरेशन के लिए, एक नया बिजनेस और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम इसको रन किया जा सकता है बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में। बिकॉज एक बेलर, अगर छोटा बेलर जो चलता है, वो तकरीबन 20 से 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है इन द सीजन। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज वेरी ह्यूज। तो दिस इज अ टोटल रेंज। अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम 20 kg, 300 kg, 600 kg एंड 500 kg बिग स्केयर, तो ये बहुत बड़ी रेंज है डिपेंडिंग अपॉन फार्म कंडीशंस, कि फार्म आपके पास कितने बड़े हैं, आपके लोकल एरिया में आप कौन सी मशीन चला पा रहे हैं। और ये ऐसी मशीनें सारी की सारी इंडिया में उपलब्ध हैं और इंडिया में ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। तो सभी फैमिलीज की हमने मशीन जो इंडियन की सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर सकती है। इवन रोड पे ट्रांसपोर्टेशन को भी नजर में रखा गया है कि हर मशीन रोड पे भी चल पाए, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है रोड्स की चौड़ाई की, विड्थ की भी 8 फीट से ज्यादा चौड़ी रोड गांव में नहीं मिलती है। तो और इसी हिसाब से 2 तरीके के रेट्स हैं। तो मैं जल्दी आपको ओवरव्यू देता हूं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं विद वीडियोस के साथ, ताकि आपको पता लगता रहे कि हम लोग उसको किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है हिस्ट्री ऑफ द बेलर्स। लाइक इट स्टार्टेड इन 1937। पहला ट्रैक्टर से चलने वाला बेलर था, वो स्टार्टिंग इन्वेंट किया गया पेंसिल्वेनिया, न्यू हॉलैंड ने, पेंसिल्वेनिया यूएसए में करा, जो ट्रैक्टर से चल रहा था। और ये जर्नी चलते चलते आज बहुत डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज, इवन सेंसर्स, वेट, इवन मॉइस्चर भी आपको बेल का उसी टाइम ऑटोमेटिकली स्क्रीन में दिखाएगा। और ऐसा बेल इंडिया में चल रहा है, आपको स्क्रीन भी इंस्टेंटेनियसली स्क्रीन पे दिखेगी कि कितनी मॉइस्चर का बेल, ताकि अगर आपको लगे कि ज्यादा मॉइस्चर है, बेलर को आप रोक दो या खेत चेंज कर लो। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी भी हम प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी क्रॉप। 40 डेज है पैडी सीजन के, 365 पूरे साल के, तो 325 दिन वो फिर भी फ्री रहेगी। हम लोग बोल रहे हैं आप उसको डिफरेंट क्रॉप रेसिड्यूज पे चलाइए, बिकॉज जो प्रॉब्लम पैडी स्ट्रॉ में है वो प्रॉब्लम केन ट्रैश में भी है, व्हीट स्ट्रॉ में भी एमपी में आग लगती है। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट आग हर जगह पे लगती है, क्रॉप्स डिफरेंट होती जाती हैं, जो उनकी यूटिलाइजेशन का नहीं है उसको आग लग रही है। बट सभी बायोमास का अपना अपना एक सीवी है जिसको हम एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। ये व्हीट स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ, केन ट्रैश, मस्टर्ड, ये हरियाणा में हमारा एक ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया था विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। हमने उसको स्टार्ट किया, मस्टर्ड क्रॉप भी हमने इंट्रोड्यूस करी है लास्ट ईयर। कॉटन स्टिक्स इन गुजरात एंड इन महाराष्ट्र, ये भी हम लोग चला रहे हैं। देन कॉर्न स्टोवर पे आप अभी भी दुआबा रीजन जो पंजाब का है वहां पे चलते हुए आपको बेलर्स दिख जाएंगे। तो मतलब अगर हमें टोटलिटी देखें तो हमारे पास वर्किंग के लिए टोटल 200 डेज प्लस हैं।
और जिससे आपका ROI और फार्मर का कलेक्शन का एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ेगा और हमें सारा साल मटेरियल मिलता रहेगा। और इससे एक ये फायदा भी रहेगा कि जो हमारे पास एक प्रेशर है कि हमें 40 डेज के अंदर 365 डेज का मटेरियल इकट्ठा करना है, वो भी आपका डिवाइडेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर आप डिफरेंट क्रॉप रेजिड्यूज के ऊपर काम करेंगे। तो देयर इज अ सॉल्यूशन ऑल्सो, तो सेम मशीन कैन वर्क। तो दिस इज द टोटल क्रॉप रेजिड्यू एप्लीकेशन इन इंडिया। डिफरेंट टाइप्स का हमारे पास सेक्टर्स है जहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जा रहा है और डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप रेजिड्यूज हैं जो वर्क किए जा रहे हैं। Now we'll come to the process. What is the process? तो it has 4 steps. सबसे पहला स्टेप तो रहेगा फार्मर अपना कंबाइन हार्वेस्टर से खेत को कटवा देगा, ग्रेन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और स्ट्रॉ को खेत में छोड़ देगा और वहीं से हमारा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहला काम मूविंग या जिसको हम स्लैशिंग बोल देते हैं, स्लैशिंग ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू फ्रॉम द ग्राउंड, बिकॉज हमें पूरा खेत को साफ करना है क्योंकि थोड़ा सा भी अगर छूट जाता है तो फार्मर उसको आग लगा देगा। सेकेंड, रेकिंग, लाइनिंग ऑफ दैट मटेरियल इनटू वन लाइन, ताकि हम लोग अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। 4 लाइनों को मिला के एक लाइन में डाल दें ताकि बेलर उस पर चलता रहे और हमें 4 चक्कर ना लगाने पड़े और हमारी एफिशिएंसी अगर हम 1 घंटे में 1 एकड़ करते तो 3 एकड़ कर पाए। तो कैपेसिटी को कैसे एनहांस किया जाए। देन बेलिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, स्क्वायर बेल्स, राउंड बेल्स, बिग स्क्वायर बेलर्स, वो डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर या एग्रीगेटर के ऊपर। देन लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 4 स्टेप में सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम एक एक करके भी बात करेंगे। बहुत बेसिक मशीन, पंजाब हरियाणा में बहुत, वेस्टर्न यूपी में और सम पार्ट ऑफ राजस्थान इसको बहुत नॉर्मली लोग यूज करते हैं। जो भी पैडी ग्रोइंग बेल्ट है, ये इसको कटर बोल देते हैं, रीपर बोल देते हैं, स्लैशर बोल देते हैं, हम इसको रोटरी स्लैशर बोलते हैं। तो 5 फीट से 7 फीट तक आपको ये विड्थ, वर्किंग विड्थ की डायमेंशन में मिलता है। 40 to 50 हॉर्स पावर में इसको चला सकते हो और ये आपका जो वर्किंग कैपेसिटी है इसकी 1 से 2 एकड़, 1.5 एकड़, 2.5 एकड़ डिपेंडिंग ऑन इस वर्किंग विड्थ, वो उसकी हार्वेस्ट कर सकता है। हम इसकी वीडियो में देखते हैं कैसे चलता है। सर बेसिकली प्रोडक्ट बारे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही कॉम्पोजिशन है कि पूरा स्टेप क्या चलेगा। अगर आप बोले मैं जल्दी से स्किप कर देता हूँ तो कोई इशू नहीं है। एक सवाल है आपसे, स्लैशर 1 एकड़ क्लियर करने में जो ट्रैक्टर लगेगा 40 to 50 हॉर्स पावर का, ये कितना डीजल खाएगा 1 एकड़ को क्लियर करने में? मैं आपको 1 घंटे का बताता हूँ, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। उसके साथ तकरीबन 4 से 4.5 लीटर 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर खाएगा। 1 घंटे में तकरीबन 2 एकड़ के करीब वो कर देगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.25 से 2.5 लीटर की कंजम्पशन रहेगी। सेकेंड स्टेप इज रेकिंग। तो रेकिंग बेसिकली दिस इज द मेन थिंग कि रेकिंग क्यों यूज की जाती है। नो रेकिंग वर्सेस रेकिंग। अगर हम लोग रेक नहीं यूज करेंगे, सिंपल बेलिंग यूज करेंगे तो आपको खेत का हर एक इंच को क्लियर कवर करना पड़ेगा ताकि आप सारा मटेरियल कवर कर पाए। बट विद द हेल्प ऑफ रेक आपकी मूवमेंट 1/3 हो जाएगी, मूवमेंट कम रहेगी, कैपेसिटी ऑफ द बेलर विल इंक्रीज और उसको फीडिंग के लिए ज्यादा मटेरियल मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। 12 फीट एक साइड से और 12 फीट दूसरी साइड से ये मर्ज करके 24 फीट को 6 फीट के अंदर लेके आता है। 4 फीट चौड़ी लाइन होती है और बेलर की जो वर्किंग विड्थ होती है वो तकरीबन 2 मीटर के करीब होती है। तो उस 4 फीट के अंदर जो विड्थ की लाइन को उसके अंदर लेके आना है। ये एक नया तरीके का रेक है जो हम लोग लेके आए हैं। इसकी वर्किंग विड्थ है 30 फीट। जो बड़े बेलर्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में वो उसके लिए, इसको हम रोलावार रेक बोलते हैं। ये एक बार में सेंटर लाइन करता है और ये 30 फीट को क्लियर करता है। अगर मैं इसकी आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक बेलर से आप छोटे वाले बेलर 20 किलो वाले 4 बेलर को चला सकते हो। आपको सिर्फ एक रेक चलानी है। इसकी कैपेसिटी पर डे 10 आवर्स में ऑलमोस्ट 100 एकर्स है। 90 to 100 एकर्स ये टच करता है। तो इसकी वर्किंग कैपेसिटी इज वेरी ह्यूज। ट्रैक्टर हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट इज 60 to 75 बिकॉज इट डजंट रन ऑन द PTO, इट रन्स ऑन द हाइड्रोलिक पंप। तो जो हाइड्रोलिक पंप रिक्वायरमेंट है दैट इज 54 LPM। उतने पंप आपको हाइड्रोलिक पंप चाहिए उसको। देन थर्ड स्टेप इज बेलिंग। So this type of baler will bale 20 to 30 kg, different types of crops. आप कोई भी क्रॉप्स के ऊपर इसको आप बेलिंग कर सकते हैं। से पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, मेज स्टोवर, केन ट्रैश एंड मस्टर्ड, इवन कॉटन स्टिक्स। तो ये पूरा प्रोसेस है। पहले कंबाइन, स्लैशर, रेकिंग के बाद आप उसको बेलर।
इस फॉर्म की ये चौरस बेलें बना देता है। अगर मैं आपको बताऊं पंजाब हरियाणा में तकरीबन 2 से 2.5 टन का यील्ड होता है स्ट्रॉ का, तो थंब रूल हम लोग यूज करते हैं 1.25 टाइम्स, जितना आपका ग्रेन निकलेगा उतना 1.25 टाइम्स उतना स्ट्रॉ निकलेगा पैडी का। तो ये हम लोग इस थंब रूल के ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं और जो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। तो देखेंगे कि ये 1 एकड़ में तकरीबन 100 बेल्स के करीब बना देता है। और देन आप उसको मैन्युअली उठा के ट्रॉली के अंदर ऐसे इस तरीके से लोड कर देते हैं और एक ट्रॉली के करीब अंदर जो नॉर्मल ट्रॉली 16 फीट की रहती है उसमें 60 टन के करीब मटेरियल आ जाता है, 2.5 एकड़ की पराली। देन सेकंड इज द फिक्स चेंबर बेलर। ये कुछ इस तरीके से बेलर है जो बहुत वाइडली नोन नहीं है, बट इंडिया में पंजाब और हरियाणा में स्पेशली चलते हैं। बाकी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए बहुत नई टेक्नोलॉजीज हैं। इसमें आपकी जो डायमेंशन है बेसिकली द डायामीटर एंड द विड्थ ऑफ द बेल इट्स फिक्स्ड। तो आपका जो मटेरियल आएगा वो एक ही साइज का आएगा और आपका जो वेट आएगा वो भी ऑलमोस्ट सेम रेंज का आएगा। वो वेरी करेगा 250 से 300 किलो के बीच में। प्रोसेस सेम रहेगा, स्लैशर, रेकिंग एंड देन बेलिंग। बस इसके अंदर आपको ये मिलेगा कि आपकी कैपेसिटी विल एनहांस। जो छोटा बेलर रहेगा वो आपका 4 से 5 टन करेगा, 6 से तकरीबन 8 टन की कैपेसिटी है इस बेलर की करने की फील्ड में। और इसका एडवांटेज ये है कि इसकी हैंडलिंग इज मैकेनिकल और जो आपके छोटे स्केल बेलर का बेल्स 100 बेल्स पर एकड़ आता है, इसकी वो हार्डली 8 to 9 या 10 बेल्स पर एकड़ आएगा। सो ये आपका एडवांटेज है कि नंबर ऑफ बेल्स विल बी लेस। तो इस तरीके की सेल्फ लोडिंग ट्रॉलीज भी इंडिया में और पंजाब हरियाणा में वर्क कर रही है, जिसमें आपको इवन ग्रैबर्स की जरूरत भी नहीं है। ये खुद ब खुद बेल्स को उठाएंगी, 15 से लेकर चलेंगे। Then the other type of round baler is the variable chamber। आप देख रहे हैं पिक्चर में, आप इसका डायमीटर को चेंजेस लगा सकते हैं। मतलब अगर आपका पावर प्लांट या कोई ट्रॉली छोटी है तो आपका बेल के साइज को डायल को छोटा कर सकते हैं, डायल को बड़ा कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। द मल्टीपल ऑफ 10 पॉइंट्स 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर टू फिर 180। तो इससे आपका वेट का वेरिएशन आ जाएगा। इसमें आपका स्लैशर और रेक सेम रहेगा बट मल्टीपल्स होते जाएंगे। जैसे इस मशीन के लिए आपको 2 से 2.5 स्लैशर और 2 से 2.5 रेक्स लगते रहेंगे, बिकॉज इसकी कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी इज वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली 10 टन पर आवर की इसकी कैपेसिटी है। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ानी पड़ जाएंगी जो इसके सामने इसको चलेंगी। अब बेल हैंडलिंग का जो मेन है कि आप इसके बड़ी मशीन को हैंडल कैसे करेंगे, तो उसकी हैंडलिंग के सॉल्यूशन भी काफी हैं। सबसे पहले आपका बहुत नॉर्मल फोक टाइप सिस्टम है, नीडल टाइप। आप नीडल यूज करके उसको पेनिट्रेट करके आप उसको स्टैकिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। सेकंड इज द ग्रैबर। आप ग्रैबर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका फील्ड में भी एज वेल एज आपके स्टॉक यार्ड के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एक ही मशीन, एक ही तरीके की आपको 2 मशीन रखनी पड़ेगी ताकि आप उसकी स्टैकिंग कर पाए। एंड थर्ड इज दिस बेल सेल्फ लोडिंग ट्रॉली। तो इस तरीके की ट्रॉली है जो एक बार में तकरीबन 15 बेल्स 1 गो में ले जाती है, उसको जाके वहां पे अनलोड करके, मतलब इसका आपका ये कि आपको नंबर ऑफ ट्रॉलीज लेनी कम पड़ेंगी। अगर आप 5 to 10 किलोमीटर रेडियस में काम करेंगे, मल्टीपल राउंड्स ये लगा सकती है। देन बिग बेलर, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेलर है और ये सबसे बड़ी ज्यादा कैपेसिटी का कंटिन्यूस बेलर है जो अभी इंडिया में हम लोग दे रहे हैं। तकरीबन 3 बेलर और इस साल 15 बेलर और आ रहे हैं। और ये इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर सेंसर्स हैं, आपको बेल वेट इंस्टेंट मिलेगा, कौन सी बेल का कितना वेट था, कितना मॉइस्चर था, आपको हर एक रीडिंग उसकी साथ साथ में मिलती रहेगी। तो आप इसको पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे हम इसके लिए रिकमेंड करते हैं कि आप डोंट यूज द स्मॉल वन, छोटा रेक, हम लोग उसको बड़े रेक के लिए रिकमेंड करते हैं। तो जो रोला बार रेक जो हमने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करा है, तो इस तरीके का है, तकरीबन 120 से 140 हॉर्स पावर ट्रैक्टर का इसको इस्तेमाल लगता है और ये एक दिन में 100 एकर्स तक बेलिंग कर सकता है, जो इसका कैपेसिटी है बेलिंग करने की, इन 10 to 12 आवर्स ओनली।
बेल हैंडलिंग फॉर दीज टाइप ऑफ बेलर्स। तो इसमें भी बिग बेल हैंडलिंग ट्रॉलीज हैं जो लोकली डेवलप हो चुकी हैं। तो ये एक बार में ये भी 14 बेल्स हैंडल कर लेती है। तो तकरीबन इस तरीके की सेल्फ लोडिंग ट्रॉलीज है जिसमें आपको ग्रैबर की जरूरत नहीं है, और ये इसको स्टैक भी कर देती हैं, लोडिंग एज वेल एज स्टैकिंग। देन बेल ग्रैबर जो बहुत नॉर्मल एप्लीकेशन है जिसमें नॉर्मली हर फार्मर यूज करता है उसको, जो भी बिग बेलिंग या राउंड बेलिंग करता है। तो ये फोर्थ मेथड है जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट वन है जो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पॉपुलर है इन द फार्मर्स, वो सबसे ऊपर वाला है बिकॉज इसका जो मशीन का केपेक्स है वो सबसे कम है। ट्रैक्टर हॉर्स पावर वो है जो फार्मर्स के पास ऑलरेडी घर पे है, दे डोंट हैव टू बाय न्यू ट्रैक्टर। और तीसरा गवर्नमेंट का सब्सिडी है। उसके बाद राउंड बेलर्स हैं जिसकी आपको मैकेनिकल हैंडलिंग करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली केपेक्स विल बी मोर, आपको लोडर्स और ग्रैबर्स लेने पड़ेंगे, बट द कैपेसिटी विल बी आल्सो मोर देन द बिग बेलर्स। तो यहाँ पे हमारे 4 स्टेप खत्म होते हैं। हम लोग जो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं बेसिकली कंसल्टेंसी पार्ट विद द टेक्नोलॉजी, विद द एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स 20 years in India, 80 years वर्ल्ड वाइड, प्लस इसमें एक एड ऑन फीचर है कि राइट नाउ बेलर के ऊपर जो समस्या है वो फाइनेंसिंग की है। जैसे पैलेटिंग प्लांट्स में फाइनेंसिंग का इशू है, बेलर्स के अंदर भी है, बिकॉज बेलर नॉन रजिस्टर्ड आइटम्स होती हैं, इसके अंदर इंजन नहीं होते, ये ट्रैक्टर्स के साथ चलती हैं, ये प्राइम मूवर के साथ चलती हैं। तो कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक इसको फंडिंग नहीं करता है अनटिल अनलेस उसका कोई ऑलरेडी केस, हिस्टोरिकल केस हो, या उसका ऑलरेडी कस्टमर चल रहा हो, या उसकी कोई ऑलरेडी किसान केसीसी चल रहा हो, या थर्ड केस जो नेशनलाइज्ड बैंक करते हैं दैट इज द मॉर्गेज। और फार्मर मॉर्गेज के बिना काम करवाना चाहता है तो इसमें हमारी एक और फैसिलिटी है दैट इज सीएनएच कैपिटल। हमारा एक और ब्रांड है जो स्पेशली ऐसी आइटम्स के ऊपर फंडिंग करवाता है, एक एनबीएफसी है जो उसके ऊपर फंडिंग करती है। तो फार्मर्स को इस चीज में भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि हम अगर फाइनेंसिंग, पर ये बहुत लिमिटेड है बिकॉज जब तक नेशनलाइज्ड बैंक्स नहीं आएंगे तो अवेयरनेस इसका बढ़ेगा नहीं और हम नंबर ऑफ फार्मर्स को टैप नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारे केसेस अभी हम लोग 2-3 साल से हरियाणा में और पंजाब में तकरीबन 200 से 250 केसेस कर चुके हैं। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ दैट। और इसी को हम लोग दिखा के नेशनल बैंक को भी बोलना चाहते हैं कि आप लोग इसी को ही एक तरीके का लाइन को देखते हुए आप इसी के ऊपर भी करेंगे तो और फार्मर्स को हेल्प मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ बेलर इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन इंडिया बिकॉज ये सबसे ज्यादा चल रहा है। तकरीबन 2000 से करीब बेलर ऑलरेडी इंडिया में चल रहे हैं। वर्ल्ड वाइड 10 लाख से ऊपर बेलर ऑलरेडी चल रहे हैं और सबसे इजी, और ये छोटे खेतों के लिए, और कह सकते हैं कि जो मिड साइज और जो इकोनॉमिकल जो फार्मिंग करना चाहते हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन हम लोग छोटे बेलर को रिकमेंड करते हैं। तो हाउ कैन वी कैन मेक अ डिफरेंस? जो सस्टेनेबल मॉडल है, व्हाट इज द सस्टेनेबल मॉडल? Starting from sowing of paddy crop or it can be any other crop, harvesting, collection, straw banks, collection, storage to last mile transportation to the power plant, to the thermal power plant. अब इसमें आप उसके different types of fuels देख सकते हैं। आप solid, liquid, gas 3 फॉर्म्स में हम उसका एनर्जी बना सकते हैं। अगर वही एनर्जी को हम लोग यूज करें, अगेन रिवर्स उसी एनर्जी को हम लोग ट्रैक्टर्स में यूज करें ताकि वो कलेक्शन, तो एक साइकिल किस तरीके से बन जाएगा जिसमें हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। इस तरीके का सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और सीएनजी ट्रैक्टर्स और इसके ऊपर भी हमारा ऑलरेडी वर्किंग चल रही है ताकि हम इस साइकिल को कंप्लीट कर पाए। इन दी एंड थैंक यू। और आपका किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा तो आई एम देयर, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। या प्लीज सर। सॉरी, अप्रोक्सीमेटली सर इसमें आपका अगर मैं आपको 11 लीटर सर तकरीबन लगता है पूरे घंटे का पूरे ऑपरेशन में। ये मैं ट्रांसपोर्टेशन का ऐड नहीं कर रहा हूँ। रीजन बाय ट्रांसपोर्टेशन जो सबसे ज्यादा मॉडल चलता है वो छोटे वाला बेलर जो 20 किलो वाला चलता है, उसके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन का एक सेपरेट नेटवर्क है जिसमें एग्रीगेटर्स के लिए एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। आउटसोर्स सर्विसेज है। बहुत कम फार्मर्स है जो खुद यूज करते हैं, खुद अपने ट्रॉलीज और ट्रैक्टर से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो 11 लीटर तकरीबन होता है और तकरीबन 6 से 7 टन आप पैडी की
बेलिंग कर सकते हैं। तो क्या एलसीडी आनी चाहिए? आपका जो स्लैशर है वो स्लैशर कितना माने डेप्थ में कट लेता है, उसका बाद कितना रहेगा? सर एक्चुअली स्लैशर को आप सर बिल्कुल ग्राउंड लेवल के साथ लेके चला सकते हैं, बट हमारा जो रिकमेंडेशन है दैट इज अब 2 इंच से 3 इंच ऊपर चलाएं। इसके रीजंस 2 हैं। पहला रीजन ये है कि आपका जो मिट्टी है वो मिट्टी आना नहीं चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम थोड़ा जो कंडीशन होता है वो वेट होता है, और मिट्टी एक्चुअली पॉड के साथ और स्टेम्स के साथ चिपकी होती है। वी डोंट वांट कि वो नीचे वाली मिट्टी हो, जब वो नीचे जाएगा उसके जड़ को उखाड़ेगा तो मिट्टी और ऊपर आ जाएगी, और वो मिट्टी अगेन जब चाहे वो फॉडर में जाए और चाहे वो किसी प्लांट में जाए वो हार्म करेगी, पशु को भी वो हार्म करेगी और प्लांट को भी वो हार्म करेगी। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं वो। और दूसरा ये है कि कुछ मटेरियल खेत में भी रहना चाहिए, क्योंकि उतना तो वो डिकम्पोज हो ही जाएगा। तो 2 से 3 इंच जो उसका जड़ है और जो ऊपर का स्टॉक है वो रहना चाहिए। वो रहेगा, जमीन को उपकार होगा, लेकिन उसमें जलाने का कोई जरूरत नहीं है। यस, उसमें सर उसमें क्या है वो इजीली मैनेज हो जाएगा, चाहे वो उसको अगली क्रॉप के लिए प्रिपेयर जब वो करेगा तो उसको भी इतना बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगा। अच्छा, तो किसी का भी क्वेश्चन होगा तो सर आई एम देयर, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। लोकेश। Thank you very much, Mr. Lokesh. Please be here for a moment. I request Deep sir to please. Thank you, sir. May I now request Session Chair Shri R.K. Agrawal, Sir, Director Technical CAQM, to please come over the dais and say a few words and some of the entire set of technical discussion that just took place post-lunch. Shri R.K. Agrawal, sir. Thank you. As I was given the responsibility for chair the session, so very nice. So, this was a very good session. There was 6 presentations were there, and by the way, as per schedule, there was some mix-up. So, keeping in view the requirement of this session were inadvertently some this were disturbed, and as per the requirement कि पहले finance की जरूरत होती है, तो first presentation was from Varda Capital, who has given very good presentation on market analysis and forecast, financial projections and PO by Mr. Prashant, and then by SBI, State Bank of India, who has very well given the presentation, giving all aspect how to apply for the loan, etc. What are the requirements, how to complete the documents, the minimum requirement of documents, and what is the timeline for, etc. So they have covered very well, and it was given by Mr. Pradeep. So finance portion was taken, and then came the technical aspect. So third presentation was biomass profiling experience by NTPC Dadri team by Mr. Vivek Singhal and Varun, who has very well taken up the session and throughout how the technical trial were done and through the pilot project, and then finally the co-firing started in 2018 in 210 megawatt capacity, and then finally in 2020 500 megawatt capacity. And the questions raised by the other GenCos were very well answered, though there will be some more questions, so it can be taken up later on with the NTPC team. And the fourth presentation was supply chain management capacity creation for the supply chain in bioenergy sector by Mr. Tushar from biofuel sector. He has also elaborated in detail. And then fifth was the pellet manufacturing technology by Satyajit Agro, Mr. Mukesh Patel,
who has given very well presentation, and the machines, and from Haryana, our agriculture, farmer welfare, he has given him some guidance also to have the machine tested and listed in the government so that it can get the subsidies also. And similar, I think the Holland also, if they don't have listed their machines, they can also take up that. And this last session was this by Holland Tractors, Mr. Lokesh, Sustainable Management of Crop Rescue Solutions, and so many machines of slasher, baler and wrecker they have described, and with different capacity and different loading and unloading trolleys also. So I think everybody should avail this opportunity, because this is not only used in thermal power plant, but in other industries also. As in the morning session, the Chairman CAQM has already elaborated in his detailed dialogue. So with this, I thank NTPC team for organizing, on behalf of CAQM, organizing such a wonderful workshop here, and expect that everybody will come ahead, and the air pollution from this stubble burning, basically from Haryana and Punjab, will be this time in the next coming months of September to December, we will have some better air quality in NCR. With this, I thank all of the participants from all fields. Thank you. Thank you so much, sir, for very precisely summing up the technical discussion, and thanks for your kind words for acknowledging all the efforts for making this workshop happen. May I request again Shri Sudeep sir to please do the honor for felicitation of our session chair, Shri Untitled sir. Thank you, sir. So, ladies and gentlemen, with this we have come to the end of today's workshop. It was so heartwarming to see such a wonderful response from all the participant sides. We had seen a lot of detailed discussion about different aspects, different groups of stakeholders. A lot of information was shared. I'm sure each one of us has been its own takeaways from the entire deliberation of the day, and we also take for granted that you have submitted your feedback, because it's very valuable for us for getting your inputs on different aspects of this workshop, as well as for future such endeavor, because it's only your feedback which will help us to understand what went good and what is the scope of improvement for the future such sessions. With this, we formally close today's workshop. I sincerely once again thanks from the core of our heart to all the seniors, all esteemed delegates, all our guests from different group of stakeholders from the entire value chain of biomass. And while giving all of your requests, please join for the high tea which has been arranged in lobby adjoining to the hall. Thank you very much. Have a good day. May I request for a quick group photograph so that we may capture this moment, to cherish for long times to come. Probably it won't take much time. Can we quickly assemble around the stage so that we may capture this moment in the presence of all the esteemed guests, please? All of us, please join on stage for a group photograph, please. I think we can assemble and arrange in 2 rows so that everybody can be accommodated. Yeah, I think one group may just stand on the closer to the stage, and the second group may come just back. आप
फोटोग्राफर ब्रदर से रिक्वेस्ट है कि इंश्योर कर लीजिएगा सब लोग फ्रेम में आ जाएं, कोई उसमें कटे नहीं। आगे बैठने से काम होगा। मनोज जी यहाँ पे लाइट होगा, लाइट्स हाँ थोड़ा फास्ट कर। I request Shri P.S. Rao sir to please join for the group photograph, sir. Thank you very much. Have a good day, sir. कर दिए बंद।